कोई विकेट आउट नहीं हुआ। 2 बॉलर्स निकल बॉलिंग की, आमिर यामीन और मोहम्मद अली। और आज इन पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से ये आगाज करेंगे पहले दिन के जो सेशन है उसका। और ओवरऑल जो मैच है, जैसे हमने बात की कि बड़े ज़बरदस्त मराइल में आ चुका है। 188 रन बनाए थे सिंध ने, जिसमें आमिर यामीन ने 5 आउट किए 54 रन के एवज। उसके बाद रिप्लाई किया सेंट्रल पंजाब ने 305 रन, 4 विकेट लिए अबरार अहमद ने, और आमिर यामीन ने बैट से भी कारकर्दगी दिखाई। सिंध इस वक्त है 1 रन पे, 1.3 ओवर, 116 रन पीछे है। अबरार अहमद टॉप विकेट टेकर, सीजन उनका बड़ा बेहतरीन जा रहा है, बड़े एक्यूरेट। और जो दोनों इनिंग्स अगर हम बात करें, अगर पिंडी की स्पेशली बात करें, तो यहाँ पर उनका जो जलवा है, ये जादू है, वो सर चढ़कर बोल रहा है। उन्होंने आउट किया लेग बिफोर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो एक्यूरेसी थी यहाँ पर अबरार की, कि उन्होंने देखा कि बैटर के फुटवर्क कैसे हैं, कहाँ वो खड़ा है, किस अंदाज से वो खेल रहा है, वहाँ उन्होंने बॉलिंग करवाई और उन्हें रिप्लाई मिला अच्छी बॉलिंग का, और विकेट हासिल करते चले गए। तो उसके साथ साथ सिंध जो ओवरऑल अगर हम देखें, जो सरफेस है, जो पिच है, उससे बड़ी मदद मिली अबरार को। और यकीनी तौर पर आगे जाके भी आज चूँकि तीसरा दिन है, क्या कुछ होगा, क्या कुछ उनके दिमाग में उन्होंने बात की, आइए आपको दिखाते हैं। And with me, I've got the man of yesterday's moment, I would say, and he's been the man for his team Sindh in this Quaid-e-Azam trophy so far quite a few times, Abrar Ahmed. Abrar, मैं आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले तो जो आपकी फॉर्म रह चुकी है इस Quaid-e-Azam ट्रॉफी में सो फार, हमें पता है कि आपने इस बार भी पहली इनिंग्स में अपनी टीम के लिए 4 विकेट्स लिए हैं और पिछले मैच में भी आपने 4 विकेट्स ली थी, तो आप अपने फॉर्म के बारे में सो फार क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। इसके पीछे बहुत सी मेहनत है, क्योंकि लास्ट पिछले 2-3 मंथ तो मैं एनसीए में था ना, तो कैंप ही कैंप हो रहे थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और वहाँ लंबी बॉलिंग करते रहे, तो वही बॉलिंग आके यहाँ अप्लाई की, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। वेरी नाइस। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपकी वैरायटी जो आपकी बॉलिंग में है उसके बारे में। तो हमने देखा है कि आपकी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो आपने किस चीज़ों पे काम किया अपनी बॉलिंग में? जैसे आपने अभी बोला कि आपने काफ़ी मेहनत की है। देखिए, आपको बॉल के साथ थोड़ा खेलना पड़ता है, सीम से करने पड़ते हैं, कुछ विकेट इस तरह होते हैं जिधर पैड से बॉल करनी पड़ती है। तो पहले मैं सबसे पहले ये करता हूँ, पिच को रीड करता हूँ कि यार इधर सीम से अच्छा हो रहा है या पैड से अच्छा हो रहा है, या इधर लेग स्पिन अच्छी हो रही है, फ्लिपर अच्छा हो रहा है, जो भी अच्छा होता है तो मैं उस बॉल को ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। नाइस। अच्छा, और जो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी इस वक्त जो आपकी टीम है वो डिफिसिट में है बाय 116 रन्स, और अभी आप इस वक्त अपनी टीम को कहाँ देखते हुए जा रहे हैं? इतना कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह हम पॉजिटिव इंटेंट से जाएंगे। अगर हो सकता है कि अगर हम थोड़ा अच्छा खेल लें तो 200 तक अगर हमें लीड भी मिलती है, टारगेट वगैरह हम 200 सवा 200 तक देते, तो इंशाल्लाह हम जीतने पे जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा एटीट्यूड है। एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, बेस्ट ऑफ लक एंड वेल बॉल्ड अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अबरार बात कर रहे थे जिन्होंने 4 मरतबा 5 और 1 मरतबा 10 विकेटें हासिल कर रखी हैं। 32 विकेटों के साथ इस वक्त टॉप पे है एज अ बॉलर इस Quaid-e-Azam ट्रॉफी में। और पिच आज कैसा खेलेगा, तीसरा दिन है, शाह फैसल हमें बताएंगे। Yesterday, just before lunch, we had a spell where the ball was jagging around so much, and it wasn't even the new ball. Probably the seam was hit quite often, but probably the ball was hitting a few cracks that have started to develop on this pitch. Just find out what was happening. Good length, right here and a few there. And you can see the balls have been hitting those cracks. That's why it was seaming around quite a lot, and batting was difficult at that time. All in all, once again, the pitch played really beautifully, and it did give everybody a chance. If you have the skills and the discipline, you can do well even on this day 3 pitch, whether you're a bowler or a batter. वेल, आइडियल कंडीशंस इस वक्त रावलपिंडी में क्रिकेट खेलने के लिए, और मौसम जब साजगार हो
तो तमाम तर लवाजमात पूरे हों, बॉलर्स, बैटर्स और अंपायर्स। बड़ा अहम रोल होता है अंपायर्स का, और अब तक दोनों अंपायर्स ने बड़ी अच्छी अंपायरिंग की और ओवरऑल भी यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है रावलपिंडी में वो बेहतर है। और आज तीसरा दिन है, यकीनी तौर पर जैसे फैसल अभी बता रहे थे कि पिच जो है वो बैटिंग के लिए अच्छा होगा, और अभी तक अच्छा खेला भी है इस सरफेस ने। और जो बैटर्स है दोनों वो भी रिप्लाई करेंगे सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स का। और इस वक्त गुफ्तो शनीद है कि अर्लियर ऑन जो पहला सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा बॉलर्स के लिए। बॉल अभी नया है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, किस अंदाज से, और कौन सी लाइन हमने रखनी है, यकीनी तौर पर बातचीत हो रही होगी। दूसरी जानिब आसिफ याकूब इस वक्त ऑल सेट हैं प्ले की कॉल करने के लिए। उनके साथ हैं इमरान जावेद। बड़े अच्छे डिसीजंस दोनों अंपायर्स के। क्रेडिट गोज टू द, यहाँ पर भी सिलेक्शन है अंपायर्स की, और क्रेडिट गोज टू पीसीबी। और यहाँ पर सेंट्रल पंजाब यकीनी तौर पर इसी सोच बचार में अजहर अली, उनके साथ साथ जो दोनों बैटर्स हैं साइम अयूब और उमैर बिन यूसुफ, दोनों अच्छी फॉर्म में हैं। एक के पास 3 सेंचुरीज हैं, दूसरे के पास 95 हाईएस्ट है सीजन का। तो इन दोनों के पास एबिलिटी है कि अच्छी शुरुआत दे सकें, क्योंकि कल का जो आखिरी दिन का सेशन था हल्का सा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था कि कहीं ना कहीं कोई अगर एक आध विकेट निकल गया तो प्रेशर आएगा, लेकिन दोनों ने अच्छा टाइम गुजारा। और अब इस वक्त बारी है जो पहली इनिंग थी सिंध की, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका खुमियाजा जो है वो यहाँ पर पे किया जाए, या फिर उसका जो रिकवरी वर्क है वो यहाँ पर किया जाए इस इनिंग में। तो दोनों बैटर्स देखना होगा कैसे बैट करेंगे। अजहर अली टेस्ट क्रिकेटर, क्योंकि उनकी टीम भी अच्छा रिप्लाई करने में कामयाब हुई। और अब बारी है बॉलर्स की कि किस तरीके से वो बॉल करवाएंगे। उमैर बिन यूसुफ अभी तक ऑफ द मार्क नहीं हुए, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं, 3 सेंचुरीज इस सीज़न में। और पिंडी में ऐसा लगता है कि जैसे जो सबसे इनका फेवरेट वेन्यू है जहाँ पर उन्होंने अच्छे रन स्कोर किए। आगाज़ चाहिए उनको उस पर कैपिटलाइज, और उसके बाद एक और मुस्तनद ओपनिंग बैटर साइम अयूब 1 रन पे इन्होंने भी 95 रन बना रखे इस सीज़न में। अनलकी रहे कि 100 नहीं कर पाए, लेकिन इनका कैलिबर भी ऐसा है कि आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अर्लियर ऑन ये बेहतर करें। मोहम्मद अली सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ सीजन, अब तक 3 बॉलिंग कल कराई थी, बैड लाइट की वजह से शो कॉल ऑफ हुआ, और अभी इनके पास ये मौका है कि उस विकेट टेकिंग एबिलिटी को अप्लाई करें। 3 स्लिप में, एक गली है, पॉइंट कवर्स, उसके साथ मिड ऑन, मिड विकेट और डीप फाइन लेग। अंपायर इस वक्त प्ले की कॉल देने को है, और आज के दिन का पहला बॉल प्ले। और आते साथ ही एज हुआ, बॉल निकल गया थर्ड मैन की जानिब। रन्स होंगे 4। किस्मत है मेहरबान उमैर बिन यूसुफ। और मेरे साथ इस वक्त कॉम बॉक्स में है कि आसिफ, वेलकम, गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर नाजरीन। और ये तीसरा दिन है सिंध वर्सेस सेंट्रल पंजाब, और पहली ही गेंद पर रन्स मिले। यहाँ पर अच्छी गेंद थी, अच्छी लेंथ के ऊपर थी, एज हुआ और कैरी नहीं हुआ। स्लिप, थर्ड स्लिप, इनफैक्ट फोर्थ स्लिप में ये गेंद गई, और ये 4 रन्स मिले। तो सिंध के लिए अच्छा आगाज। एग्जैक्टली मोहम्मद साद यकीनी तौर पर इसी कोशिश में होंगे कि उनके बॉलर्स अर्लियर ऑन उन्हें ब्रेक थ्रू दिलवा पाए। बेहतर है ऑफ स्टंप पे मोहम्मद अली ने अपनी लाइन को रखा, और जैसे हम पहले भी बता चुके कि अली इस वक्त सेकंड विकेट हाईएस्ट विकेट टेकर है। और इससे पहले जो यहाँ पर मुल्तान में इनफैक्ट ये मैच खेला उन्होंने पहली इनिंग में 6, दूसरी में 5 विकेटें हासिल की। तो जो कॉन्फिडेंस है बैक कर रहा है इस वक्त अली को आसिफ। जी हाँ, और जिस तरह हम देख रहे थे कि शाह फैसल बता रहे थे पिच रिपोर्ट में कि पिच में क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, खासतौर पर गुड लेंथ का जो एरिया है दोनों एंड से। ये बड़ा यूज़फुल होगा फास्ट बॉलर्स के लिए अगर फास्ट बॉलर से मदद लेना चाहेंगे। अच्छा छोड़ा, और मोहम्मद अली एक्यूरेट इनफ। जैसे हम बात कर रहे थे कि इससे पहले जो पिंडी में मैच खेला इन्होंने पहली इनिंग में 3 विकेटें हासिल की बलूचिस्तान के खिलाफ। सिंध के खिलाफ रावलपिंडी में इन्होंने
पहली इनिंग में 4 विकेटें हासिल की। तो जो इसके अलावा जो क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी है, ये बाकी आपको अहवाल बताते चलें कि मुल्तान और एबटाबाद में क्या पोजीशन है। मुल्तान में बलूचिस्तान ने 487 रन पे 7 पे डिक्लेयर की। हसीबुल्ला ने सेंचुरी स्कोर की। रिप्लाई में 52 पे 4 है इस वक्त केपी। 435 रन ट्रेल है, बहुत मुश्किलात का शिकार है। और एटीएफ सदर्न पंजाब वर्सेस नॉर्दर्न एबटाबाद में 566, एक और मैसिव स्कोर जिसमें 117 उमर सिद्दीक के। और यहां पर भी नॉर्दर्न मुश्किलात का शिकार है, 472 रन पीछे है, 4 विकेटें आउट है। आमिर यामीन पहली इनिंग में उन्होंने अच्छी बॉलिंग करवाई। बॉल उनका हिल रहा था, बैटर्स के लिए जवाब देना बहुत मुश्किल था। अभी भी आगाज उन्होंने कुछ ऐसा ही किया और ये अच्छी चीज है आमिर यामीन की कि जो अर्लियर ऑन बॉल को अच्छा कंट्रोल किया। 62 मैचेस में 9 मरतबा 5+ उनके पास ये विकेट्स हैं, टोटल 168। और आमिर यामीन ने जिस तरह से बॉलिंग में परफॉर्म किया, फिर बैटिंग की शानदार 50 स्कोर की, कॉन्फिडेंस इनका इस वक्त हाईएस्ट का होगा और ये कॉन्फिडेंस इनको इस मैच में, इस इनिंग में बहुत मदद दे सकता है। ये 3 स्लिप्स के साथ आए हैं, एक गली है और इस दफा इसको बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेट ड्राइव किया है। यहां पर दानियाल फील्डर थे, फंबल हुआ और तीसरा रन ले लिया। यहां पर तेजी से अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, फील्डर की सुस्ती का फायदा उठाया। दानियाल थोड़े से ऑफ कलर नजर आए और उसका भरपूर फायदा उठाया। जी हाँ, कनेक्शन बेहतर था कि थोड़ा सा आगे बॉल रखा और अच्छा बैलेंस। हाँ, एल्बो हल्का सा पुश किया। आमिर यामीन जैसा कि वो ऑफ साइड पे टारगेट कर रहे थे। अच्छा ताकुब साद का, लेकिन दूसरी जानिब से अहमद दानियाल आए, उन्होंने बॉल को रोका लेकिन थोड़ा सा बैलेंस बरकरार नहीं रख पाए। 3 रन मिले। दोनों बैटर्स इस वक्त बल्ले का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता से कैपिटलाइज करेंगे क्योंकि कनेक्शन इस वक्त बेहतर है। आमिर यामीन जैसे हम बात की कि पहली इनिंग, इससे पिछली इनिंग में उन्होंने बेहतर बॉलिंग करवाई। अगर हम पिंडी की बात करें तो जो बलूचिस्तान के खिलाफ मैच था उसमें आमिर यामीन ने सिर्फ 1 विकेट हासिल किया था पहली इनिंग में, स्ट्रगल किया। आबिद अली, फ़हीम अशरफ अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं और अब्दुल्ला शफीक भी उनके साथ सेंटर में मौजूद। इस वक्त गुफ्तो शनीद हो रही है, ये बेहतर है। पहले भी बात की हमने कि स्लिप कॉर्डन, विकेट कीपर एक दूसरे से बातचीत करते रहे, लाइव रहता है। इजाज, पहले 1 घंटे का खेल जो है उसमें देखना है कि सेंट्रल पंजाब किस तरह से अटैक करती है, विकेट हासिल करती है। दूसरी जानिब सिंध के दोनों बैटर्स को बहुत ही मुस्तनद बैटिंग करनी होगी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि जिस तरह से पहले इनिंग्स में सिंध ने गलतियां की उसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। पहले दोनों मैचेस पिछले जीत सकते हैं। जी हाँ, बीइंग अ कैप्टन साद की भी यही कोशिश है, जैसे आपने कहा कि बॉलर्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करे। अर्लियर ऑन पेसर्स को आप देखेंगे आगे रख रहे हैं बॉल को, ये बेहतर है इस वक्त क्योंकि बॉल थोड़ा सा अगर आगे पिच करेंगे तो माइट भी कहीं ना कहीं कोई इस वक्त हिंट ऑफ स्विंग या मूवमेंट मिले बॉल में। बिल्कुल ठीक स्ट्रेटजी है। उमर बिन यूसुफ जो है बॉल को चेस करने जाते हैं, ड्राइव करने के लिए जाते हैं। 3 स्लिप्स भी प्लेस की हैं और साथ बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आए हैं। अगर इसी को एग्जीक्यूट करते हैं और जिस तरह से आमिर ने स्टार्ट किया है अभी तक तो राइट ऑन द मनी, बड़ा परफेक्ट स्टार्ट है। गली, पॉइंट, कवर्स, शॉर्ट मिड विकेट, ये फील्डिंग ली है उमर बिन यूसुफ के अगेंस्ट। वेट की कॉल और बेहतर है डॉट बॉल। 3 ओवर गए, सेंट्रल पंजाब 8 बगैर किसी नुकसान के। और बात की जाए जब ये इस पहले दिन का आगाज़ हुआ था तो सिंध मुश्किलात में थी। 188 रन बना सकी कर्टसी आमिर यामीन की शानदार बॉलिंग
और फिर कर्टसी आमिर यामीन की शानदार बैटिंग, सेंट्रल पंजाब ज़बरदस्त पोजीशन में आ गई और लीड ले ली। तो इस वक्त अभी भी 109 रन की दूरी पर है सिंध की टीम। कॉन्फिडेंट, सॉलिड, क्योंकि जैसे ही बल्ले के दरमियान बॉल लगता है, जो नॉइस है वो बैटर को बताता है कि आप अच्छा मिडल कर रहे हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होता है। साइम अयूब, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि रावलपिंडी में इससे पहले बलोचिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग में 30, दूसरी में 48 नॉट आउट गए। लेकिन मोहम्मद अली 21 विकेट के साथ इस वक्त दूसरे नंबर पे हैं चार्ट में, बीइंग अ पेसर। और स्पिनर अबरार अहमद टॉप पे हैं, क्योंकि इस वक्त मौसम जो है वो थोड़ा सा सर्द हो रहा है इस इलाके में, रावलपिंडी में, तो पेसर्स के लिए ज़्यादा हेल्प है। कल भी हमने देखा जो पहली इनिंग थी कि जो आमिर यामीन थे उन्होंने अच्छी बॉलिंग करवाई। ऑफ टारगेट। जब आप मौसम की बात कर रहे हैं तो इस वक्त रावलपिंडी में दर्जा हरारत 29 है और सूरज जो है वो भरपूर चमक के साथ मौजूद है। और यहाँ पर जो फास्ट बॉलर्स की आप बात कर रहे हैं, जब तक फास्ट बॉलर्स लाइन और लेंथ को कंट्रोल में रखेंगे, जिस तरह से हमने देखा था कि आसिफ याकूब एक ज़बरदस्त अंपायर हैं और अब तक बड़ी ज़बरदस्त अंपायरिंग की है इस मैच में, और उनके साथी हैं इमरान जो इस वक्त किसी सोच में मसरूफ़ हैं। सरप्राइज हैंग किया बल्ले को, मोहम्मद अली का अच्छा बॉल पड़कर हल्का सा हिंट आया कि शायद बाहर को निकल रहा है। कमिट कर चुके थे फ्रंट फुट पे। जी हाँ, बहुत ही अच्छी लाइन, और ये वो लाइन है जिसमें शाह फैसल ने पिच रिपोर्ट में बताया कि यहाँ पर जो क्रैक्स हैं ये फास्ट बॉलर्स को बड़ी मदद देंगे। और देखें बहुत ही शानदार डिलीवरी, चौथे स्टंप को टारगेट किया, और उमर बिन यूसुफ जो है वो इस दफ़ा लकी रहे। सो जो जिस कंसिस्टेंसी से उमर ने बॉलिंग की थी, हमने देखा था कि लाइन और लेंथ को काबू में रखा था। फास्ट बॉलर्स को उसी स्पिरिट को जो है वो जारी रखना होगा। इस दफ़ा इसको मिड विकेट की जानिब खेल दिया है, रन्स मिल जाएंगे। जी हाँ, और जैसे आसिफ आप बात करें पिच की, देखिए कितना अच्छा कनेक्ट किया, लेकिन पेसर्स के लिए यहाँ पर बहुत कुछ मौजूद है। और ये सरफेस का हिस्सा काफ़ी ड्राई है, और उसके साथ साथ जो गुड लेंथ का एरिया या फिर जो बैक ऑफ लेंथ का एरिया है वो देखें आप, हल्के फुल्के क्रैक्स जनरेट हो रहे हैं। गो के घास मौजूद है, लेकिन फिर भी आप क्लियरली इम्पैक्ट देख सकते हैं उन क्रैक्स का। और वहीं पर हिट करेगा जब सीम, तो ये देखिए ये जो मार्क्स हैं बॉल के अभी भी हैं, तो एक्यूरेट होना पड़ेगा बॉलर्स को इन क्रैक्स को यूटिलाइज करके बैटर को सरप्राइज पैकेज देने के लिए। इस दफा बॉल निकला थर्ड मैन की जानिब, वेट की कॉल है और यस नो मिस फील्डिंग की वजह से उन्हें एक रन फालतू मिला। ये तैयब ताहिर वहाँ पर फील्डर थे, और पहले एक दानियाल की तरफ से फंबल देखने को मिला, फिर इधर ताहिर की तरफ से। सो ये पहला सेशन है और अभी तो तीसरे ओवर का खेल है। फील्डर्स को लाइन बहुत अच्छी है की, इसी लाइन और लेंथ को काबू में रखना होगा। ये तैयब ज़रूर भागे थे यहाँ पर, इसको रोका, स्लिप हुए, और इस असना में 2 रन्स मिले। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अच्छा छोड़ा, इसके साथ मोहम्मद अली के ओवर का हुआ इख्तिताम। 4 ओवर गए 13 बगैर किसी नुकसान के। बहुत बड़ी जिम्मेदारी कंधों पे फवाद और साद के, क्योंकि जो बैटिंग है इस वक्त, गो के नज़र तो यही आ रहा है कि इतनी मुश्किल नहीं है इस वक्त, लेकिन फिर भी वक्त बताएगा हमें इस पहले सेशन के खेल के बाद कि ये मैच किस तरफ बढ़ेगा। उतनी परेशान कौन सूरत हाल नहीं है सिंध के लिए जो कि पहली इनिंग में थी। क्योंकि आमिर यामीन ने उस वक्त तबाहकुन बॉलिंग करवाई। साइम अयूब अब पूरा वक्त ले रहे हैं,
और मेरे ख्याल से कि इनका जो फुटवर्क है, ये जो इनकी हेड पोजीशन है, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, वो भी सख्त पॉजिटिव है। साइम अयूब जो पहली इनिंग में एक ऐसा शॉट खेलते हुए आउट हुए जिस पर उनको खुद भी वो नादिम होंगे बाद में। अब वो गलती नहीं करनी होगी और जितना इनके पास टैलेंट है उसको एग्जीक्यूट करना होगा। दूसरी जानिब ये एज और गए, गलती कर गए इस बार, और आमिर यामीन ने अपनी फॉर्म को बरकरार रखा। और लगता है ये वही एरिया है जहां पर असीम ने हिट किया, सरप्राइज किया साइम को, और स्लिप में आसान, बहुत आसान कैच। साइम अयूब 5 रन पे थे, अच्छा जा रहे थे, लेकिन यहां पर सरप्राइज हुए। बहुत ही शानदार बॉल, एकदम एक्स्ट्रा बाउंस शॉट पिच, गुड लेंथ एरिया से, और साइम अयूब बिल्कुल क्लूलेस रहे और स्लिप में एक शानदार कैच फहीम अशरफ का। सो ये वो लाइन और लेंथ है आमिर यामीन की जिसके ऊपर उन्होंने साइम को एक दफ़ा फिर डग आउट में भेज दिया। 5 रन बनाने के बाद साइम अयूब आउट हुए। इस तरह पहली विकेट गिरी है सिंध की 13 पर 1। साद खान नए आने वाले बैटर, पहली इनिंग में 29, और इस वक्त वो आ चुके हैं क्रीज में जब आमिर यामीन अच्छी स्ट्रेटजी के साथ बॉलिंग करवा रहे हैं। गो के लग यही रहा था कि आसान होगा। 24 मैचेस में 1375 रन, 3 सेंचुरीज हैं इनके पास, अच्छे कैलिबर के बैटर हैं और एक्सपेक्टेड है कि इस पिच को ये बेहतर खेलें। इनकी एवरेज बहुत शानदार है एजाज, 40 की औसत से जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं तो आप एक अच्छे फॉर्म में नज़र आते हैं। और ये स्लिप में फहीम अशरफ ने एक शानदार कैच लिया। इनके साथ अब्दुल्ला शफीक, आबिद अली, और तीनों मुस्तनद फील्डर हैं स्लिप में। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। वेल इस वक्त आमिर यामीन विकेट के बाद ऐसा जैसे एनर्जी या जान आ गई उनमें। बहुत ही शानदार गेंद की थी साइम अयूब की अगर बात की जाए, और देखें इन कंडीशंस का भरपूर फ़ायदा उठाया, राइजिंग डिलीवरी, गुड लेंथ से, और ये वो एरिया है। और जो हम बात कर रहे थे पिच में जो क्रैक्स हैं वो फास्ट बॉलर्स को मदद देंगे। एक क्विक कैच लिया फहीम अशरफ ने। सो बहुत ही शानदार आगाज़ किया है इस दिन का आमिर यामीन ने। तीनों फील्डर्स तैयार खड़े हैं किसी भी वक्त जिस तरह की बॉलिंग हो रही है। अब इस वक्त जिस तरह साथ जब ड्रेसिंग रूम में थे हम इनको देख रहे थे और आप बात कर रहे थे कि इनके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आयद होगी। अब जिस पोजीशन पर ये आए हैं, इनकी 300 ऑलरेडी कर चुके हैं अपने फर्स्ट क्लास करियर में, 40 की औसत है। सो मेरा ख्याल ये है कि आज इनको एक और लंबी इनिंग्स खेलनी है अपनी टीम को बचाने के लिए। जी हाँ, लेकिन इस वक्त आमिर यामीन को अच्छे मशवरे मिल रहे हैं और ऑलरेडी वो अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर जो सरप्राइजिंग फैक्टर या एलिमेंट है क्रैक्स, वहाँ पर हिट करके सीम को, बैटर को जाए वो सरप्राइज करें। वेल साद ऑलरेडी पिंडी के वेन्यू पे कोई इतने रन स्कोर नहीं किए इन्होंने। अच्छी लाइन, बहुत ज़बरदस्त लाइन, बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा, और राउंड द स्टंप्स आने का जो फैसला किया है बहुत ही ज़बरदस्त। आमिर यामीन एक बहुत अच्छे मोमेंटम में, सो ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त। वेल अनप्लेबल है इस वक्त क्योंकि जो ऑफ स्टंप की लाइन है, देखिए सीम को पकड़ा और कोशिश उनकी यही है कि कहीं ना कहीं सीम को हिट करें। अवे स्विंग, हल्का सा बाहर बॉल निकाल रहे हैं। इस दफा टारगेट से चूके।
बहुत अच्छी कीपिंग, अच्छा टेक। इसके साथ ओवर का हुआ इख्तिताम, 5 ओवर गए, 13 पे 1। आमिर यामीन का अच्छा ओवर, अच्छी लाइन, एक्यूरेट इनफ। देखिए ऑफ स्टंप से बाहर पहला बॉल निकाला, उसके बाद फिर उन्होंने वही लाइन रखी, सरप्राइज किया, हिट किया सीम को, रेसिंग डिलीवरी। उसके बाद वही लाइन जो ऑफ स्टंप के बाहर है, बैटर को सरप्राइज करते रहे, टेस्ट करते रहे, और कोई जवाब नहीं था। एक विकेट भी लिया, उसके साथ आखिरी बॉल थोड़ा सा ऑफ टारगेट हुए। बल मोहम्मद अली भी इसी कोशिश में है कि बॉल को आगे रखें, लेकिन उमैर बिन यूसुफ का जो फ्रंट फुट है वो इस वक्त बेहतर आया, बॉल के ऊपर अच्छा इस वक्त उनकी जो आई है। इस वक्त जैसे हम पहले बात कर रहे थे पेस की, तो यकीनी तौर पर साद अपने दोनों पेसर से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे कि जिस अंदाज से उन्होंने आगाज़ किया, एक विकेट निकाली पहले ही सेशन में, और अब भी जो आमिर यामीन है थोड़ा सा टेस्टिंग बॉलर होंगे इन दोनों बैटर्स के लिए। इजाज़ अच्छी चीज़ दोनों फास्ट बॉलर्स की कि वो इस कंडीशंस का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, और लाइन जो ये है ये की है कि अगर आपने आउटसाइड द ऑफ स्टंप चौथे स्टंप को टारगेट किया और बैटर को मजबूर किया कि वो खेलने के लिए जाएं, और कोई ना कोई एक ऐसी डिलीवरी जो कि आपको सरप्राइज कर दे, राइजिंग डिलीवरी हो जो क्रैक्स को हिट करे, जिस तरह आमिर यामीन ने एक ज़बरदस्त डिलीवरी की और विकेट हासिल की। ये देखिए उन्हीं उस क्रैक्स को टारगेट किया, और देखिए इतना ज़बरदस्त बाउंस था कि साइम अयूब बिल्कुल इसको खेल नहीं पाए। बहुत शानदार बॉलिंग। एग्जैक्टली, अनप्लेबल, कोई आंसर नहीं था। लेकिन इस वक्त मोहम्मद अली, उनकी हमने जो अभी तक 3-4 बॉलें देखी वो ऑफ स्टंप से गो के बाहर थी, लेकिन इतनी थ्रेटनिंग नहीं है। इजाज़ आज से अगर आप 7-8 साल पहले की बात करें, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जब क्वाइड-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस होते थे, वो टेलीवाइज इस तरह नहीं होते थे। तो जब भी मैं ये मैचेस यहाँ देखने आता था तो फास्ट बॉलर्स का एक राज होता था यहाँ पर, और फास्ट बॉलर आप बात करें सदफ की, आप बात करें पहले यासिर अराफात की, सोहेल, तो ज़बरदस्त फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती थी। आज एक दफ़ा फिर हम वो यहाँ पर देख रहे हैं, सेम कंडीशंस और फास्ट बॉलर्स का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए। अच्छा बॉल, और ये भी बैकअप लाइन जब पिच हुआ, अच्छा सीम को हिट किया, और क्योंकि वॉचफुल देखा इसको उमैर बिन यूसुफ ने, लेकिन थोड़ा सा थ्रेटनिंग ज़रूर है। बहुत ही अच्छी डिलीवरी, और इसी का जिक्र कर रहा था मैं। मुझे याद है ZTBL का मैच था, और मोहम्मद खलील साबिक टेस्ट क्रिकेटर यहाँ पर बॉलिंग कर रहे थे। 5 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए थे, और तमाम खिलाड़ी उन्होंने स्लिप में कैच करवाए। सो आज सिंध का जो आगाज़ है, सॉरी सेंट्रल पंजाब का, राइट ऑन द मनी, ज़बरदस्त बॉलिंग। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जो सेंट्रल पंजाब के बॉलर हैं, जब से उन्होंने आगाज़ किया, राइट ऑन मनी, और यकीनी तौर पर कैप्टन के लिए एक शगुन होता है कि जब उसके स्पेयर हेड जो है वो आगाज़ अच्छा लेकर दें। एक विकेट निकाल दी उन्होंने पहले ही घंटे में, और अब भी प्रेशर है क्योंकि मुसलसल इस वक्त सिंध जो है वो इस सोच में होगा कि हम ऑलरेडी 104 रन अभी भी पीछे हैं, उसको पहले कवर अप करना है, उसके बाद फिर लीड देनी है। सोच बचार, बॉडी लैंग्वेज बहुत सी कहानियां और किस्से बताती है। एक दफ़ा फिर बहुत अच्छा ओवर अली का, और 6 ओवर्स के अख्ताम पर सिंध ने 13 रन बनाए हैं एक खिलाड़ी के नुकसान पर। ऑन साइड पे
क्योंकि पिच ज़रूर था लेकिन ख़तरनाक नहीं। मतलब अभी तक आज से हमने जितने भी बॉल देखे हैं आमिर यामीन के या मोहम्मद अली के, तो बैकअप लेंथ जो है वो ज़्यादा है, जहाँ पे वो टारगेट कर रहे हैं उन एरियाज़ को कि बैटर को सरप्राइज फैक्टर दें और सेटल ना होने दें। क्योंकि जब बॉल एकदम से आपके ऊपर चढ़कर आता है तो बैटर के दिमाग में कहीं ना कहीं बैकअप माइंड ये चीज़ रहती है कि नेक्स्ट बॉल क्या होगा, वो फैक्टर जो है वो उसको सेटल डाउन नहीं होने देता। एक दफ़ा फिर आउटसाइड द ऑफ स्टंप और आप देख सकते हैं कि दोनों जानिब गेम की मूवमेंट हमें नज़र आ रही है, इन स्विंग भी आउट स्विंग भी। इस दफ़ा हल्का सा गेंद बाहर निकला और यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, रियल टेस्ट है दोनों बैटर्स का। और यहाँ पर जो भी बैटर परफॉर्म करेगा वो जाहिर है कि उसकी एक क्लास होगी और वो इस बात की गुमाजी करेगा कि उसके पास टैलेंट है, वो बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि फास्ट बॉलर्स इस वक्त दोनों जानिब से अटैक कर रहे हैं और शानदार बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। ऑफ स्टंप से बाहर। अभी तक जो बॉल है वो बाहर निकाल रहे हैं आमिर, और देखना होगा कि वो कौन सी बॉल होगी जो कि उसी एरिया पे जो हमने बात की पहले, क्रैक्स पे या गुड लेंथ पे एकदम से सरप्राइजिंग whip अप होगा। और अभी तक ये एक किस्म का सेटअप है बैटर के लिए, क्योंकि उमर अच्छे बैटर हैं, ऑलरेडी 3 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं और अमंग द रन्स हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा बॉल पड़ जाए बैटर को, साइम भी बेहतर थे। सिंध को अब मज़ीद 103 रन्स दरकार हैं इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए, और उसका क्रेडिट भी जाता है आमिर की एक धुआंधार 50 पर। आगे रखा और क्योंकि शॉट में गए लेकिन मिस फील्डिंग। अच्छे फील्डर हैं लेकिन ये बॉल शायद थोड़ा सा तेज जाकर लगा या अनइवन बाउंस रहा, जिसकी वजह से बॉल उनके हाथ में नहीं गया। जी हाँ, इसको सीधे बल्ले से खेला था और आसानी से गेंद रोक सकते थे, हल्का सा बाउंस हुआ और तैयब ताहिर इसको कंसंट्रेट नहीं कर पाए। अमूमी तौर पर इनकी तरफ से अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती है। ये जो 102 रन्स की लीड है, एजाज में बात कर रहा था, ये कल जो 8वीं और 9वीं विकेट की शराकत हुई शान और अली में, 245 पर 8वीं विकेट गिरी, फिर 300 पूरे 300 रन्स पर 9वीं विकेट गिरी। इससे बहुत मदद मिली सिंध को। ओह, लकी रहे यहाँ पर कि बॉल हवा में नहीं उठा। छोड़ने गए थे लेकिन स्लिप में तमाम फील्डर रेडी हैं। एक और बहुत ही अच्छी गेंद इस दफा ये अजहर अली, ये देखिए पढ़ने के बाद हल्का सा बाहर निकली और साथ इसको लेफ्ट करने गए, थोड़ा सा बहुत अच्छी गेंद, बहुत लेट लेफ्ट करने गए जिसकी वजह से बॉल इनसाइड एज हुआ। लकी रहे साथ। दानियाल भी इंतजार में है कि उनकी जो आर्म है वो किस वक्त जलवा दिखाए, कब मैजिक दिखाएं। ड्राइव किया, अच्छा ओवर आमिर का। और इस वक्त सिंध के तमाम ही फील्डर्स एक दूसरे को बकअप करते हुए, उनके विकेट कीपर भी, यहाँ पर शाउट्स की आवाज़ आ रही है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि आते साथ ही अटैक कर दिया, विकेट हासिल की और अब इस मोमेंटम को जारी रखना चाहते हैं। ये विकेट कीपर अलीशान कल शानदार 50 स्कोर की थी। और अटैकिंग फील्डिंग, अब चौथी स्लिप भी है और गली, 2 गली इनफैक्ट। अच्छा बॉल था लेकिन डॉट हुआ, इसके साथ 15 रन पे 1, 7 ओवर्स के बाद। सर्दियों की आमद, खूबसूरत और प्लेजेंट मॉर्निंग, क्योंकि हवा नहीं चल रही, आप देख सकते हैं कि पत्ते नहीं हिल रहे
और अपने पत्ते खेलने होंगे सिंध को भी, क्योंकि उनके लिए इस वक्त फिलहाल प्रेजेंट नहीं है कोई भी बैटर डबल फिगर्स में नहीं है, क्योंकि अर्ली ईयर है, आगाज़ है, इसको कैपिटलाइज करना है। लेकिन अच्छी बॉलिंग है इस वक्त सेंट्रल पंजाब की। उसके बाद फराज, फवाद आलम, सरफराज अहमद, बहुत कुछ आना बाकी है। मोहम्मद उमर भी हल्की फुल्की आज भी कहीं ना कहीं को फायरी एक्शन कर पाए। फ़हीम अशरफ को लेकर आए हैं, तब्दीली है बॉलिंग में। 64 मैचेस में 155 विकेट्स। लेग साइड पे आते ही एक सिंगल दिया। इंटरेस्टिंग होगा फ़हीम अशरफ के अटैक को देखना, क्योंकि अब तक जिस तरह से अली और आमिर यामीन राइट ऑन द मनी टारगेट पर रहे हैं और बैटर्स को डिस्टर्ब किया है। फ़हीम अशरफ अगर फ़हीम अशरफ जो कि ऑलरेडी टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छे परफॉर्म कर चुके हैं और हमेशा से पाकिस्तान काफ़ी एक लंबे अरसे से हमने देखा है कि मिडल ऑर्डर में और फिर एक ऑलराउंडर पाकिस्तान को दरकार है। अगर फ़हीम अशरफ यहाँ ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, अपनी जगह बना सकते हैं। या इंपॉर्टेंट सीरीज़ है फ़हीम के लिए, इसमें कोई शक नहीं। दूसरे रन के लिए भी वापस हुए, अच्छी कॉलिंग। और फ़हीम की जो आप बात कर रहे हैं, इससे पहले इन्होंने जो मैच है मुल्तान में खेला, क्योंकि अभी सख्त आसान, बहुत आसान फ्लिक किया, हल्का सा कलाइयों का इस्तेमाल, और देखिए पहला रन कितनी तेज़ी से लिया, पलटे उसी लाइन में, कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया, क्योंकि उन्हें डेंजर एंड पे पहुंचना था। साद इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है अभी तक फिलहाल रावलपिंडी में, कोई बड़ा रन स्कोर नहीं कर पाए रावलपिंडी के इस वेन्यू पे, तो उनसे भी ड्यू है कि दरमियान में एक अच्छी इनिंग खेलें, इस लीड को जो है वो पहले उतारें, उसके बाद फिर शाइन करें, मज़ीद रन्स दें। जी हाँ, जिस तरह से यंगस्टर्स को मौका मिलता है परफॉर्म करने का, सब यहाँ पर साथ के पास भी एक अच्छा मौका है, एक अच्छी इनिंग्स बिल्ड करें, अपनी टीम को मुश्किलात से बचाएं, मुश्किलात से निकालें, फतह की जानिब लेकर जाएं और अपना लोहा मनवा दें। जी हाँ, लेकिन फिलहाल उन्हें सामना है फ़हीम अशरफ का। फ़हीम ने अब तक जो बॉलिंग करवाई है थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ है, आसान है इस वक्त बैटर के लिए उसको कोप करना, क्योंकि ऑफ साइड पे ऑन साइड पे दोनों तरफ हमने देखा कि साथ जो है वो आसानी के साथ उनको इस वक्त निगोशिएट कर रहे हैं। और जी हाँ, फ़हीम अशरफ इस दफ़ा भी इसको अच्छा खेला स्क्वायर लेग की जानिब, और फ़हीम अशरफ अभी तक जो चौथा स्टंप है ऑफ स्टंप उसको टारगेट नहीं कर पाए, जहां से आमिर यामीन और अली को मदद मिल रही है। देखिए कितना स्पेस था कि 2 रन आसानी के साथ बनाए। ये बेहतर है कि आप ऑफ स्टंप पे बॉल रखें, बजाय इसके कि आप ऑन साइड पे आसानी के साथ बैटर को रन देते चले जाएं। और विकेट कीपर ने भी अच्छा टेक किया, बॉल डिप कर रहा था ऑलमोस्ट पहली स्लिप के सामने। जी हाँ, बहुत अच्छा टेक विकेट कीपर की जानिब से। विकेट यहाँ पर गेंद पड़ने के बाद बाहर निकला, अच्छा स्विंग, और अलीशान अब मुस्तनद हो चुके हैं और मुस्तादी से विकेट कीपिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। कल बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त की थी। दोबारा से ऑन साइड पे, क्योंकि इस दफ़ा रन नहीं आया। डॉट बॉल, 8 ओवर गए, 20 1 के नुकसान पे।
Amir Yamin have been superb since morning. I think he's bowled according to the situation, with a plan, at the right areas, in the right line. And the wicket of Saim Ayub, I think that was huge in the context of the game early on. And what a wonderful delivery that was to get rid of a man in form. Let's have a look at it again. Straightened up, and that length, and that kicked on right at that length. Shah Faisal alongside me. A very good morning to him. Good morning, Ali. Good morning, all. Probably did hit one of those cracks that we were having a close look at in the morning. Really got big on Saim. And that's an absolute pearler. That angle in from Amir Yamin would always make the batter play at that line. But it just leaves him at the last minute. Superb. He's been unplayable since morning. Look at that. Straightened up just a little, just touch to beat Umair bin Yusuf. It's been some bowling since morning by these two. 20 for 1 at the moment. Sindh in a bit of bother after losing Saim Ayub. We were hoping that we might see some firmly driven, but straight to the fielder. You were talking about the pitch in the morning and the Saim Ayub dismissal. He was shaping up for that back foot punch. He covered the line. There was a little movement, but the bounce that really got him. Interesting to see if it hit one of those cracks. Probably did. Look at that, how steeply it rose on him. Couldn't control. Excellent catch for Fahim Ashraf as well. He's been the difference for Central Punjab in that slip cordon. Absolutely spot on. That's what we were talking about. That he's added that value in that slip cordon. Yeah, even the best of the best would have been difficult for him to manage. The delivery from that got rid of Saim Ayub. And a good catch. It's what, fourth catch of his game? Yeah, fourth catch for him. And especially earlier on in the day, the batters are not set. They're just starting off. It was really difficult delivery to cope. No shame in getting out to such deliveries. But yeah, credit to Amir Yamin. He's been absolutely sensational throughout the game with bat and ball. It's been a fantastic game for Amir Yamin. Got a fifer in the first inning, then a half century, a wonderful one, aggressive, and now early on wickets in the second inning. That's a good match. Interesting thought is that Amir Yamin has competed with Ahmad Butt and Fahim Ashraf for that all-rounder slot in the national team. Not necessarily in red ball format, but two of them are on show here. And Amir Yamin has clearly performed head and shoulders above Fahim Ashraf. It's 20 for 1. He's smiling, Abrar Ahmed, and why not? He's just been brilliant with the ball. But what about his batting, Shah Faisal? He'll be needed tomorrow, if not today. What are you expecting? Well, if it came down to him, we should just raise the white flag. Not before Sindh is leading by 200. Wonderful. Fahim Ashraf now probably realizing what the length is. Just took him 1 over. Found his radar, that length and the angle as well. And this is good to see. Amir Yamin sharing his experience and knowledge. Fahim has played more international cricket, but Amir Yamin is more experienced in terms of first-class cricket and in terms of his age.
Too full on this occasion. Probably that's not what he has suggested. Touch shorter would help. Yeah, it won't be long that we will see him in action. Mohammad Saad, we know that what he's capable of doing. Slip has come out, just the 2 slips. Almost falling for that trap. Mohammad Saad Khan. Lot is expected of him. This one, touch fuller. The line, the leg side-ish line. Fahim Ashraf won't mind this. We've seen Saad have a liking for that flick on the onside. It's a bit too early to do that on this pitch. But that field change, Sindh is under immense pressure. Just don't understand why the 3rd slip was taken out. You just don't like it. 2 slips. No, and it's been interesting. We had a little chat with the Sindh coach, Ghulam Ali, and the amount of movement, the seam movement there is. He was also of the opinion that if you're finding the edges regularly, more often than not, it will go to that 3rd slip because of the deviation. Although his own team didn't apply that formula and they paid a price for it, could do with another one. Edged. Oh, that's gone down. That is gone down. That is exactly what my friend Shah Faisal was suggesting. Just don't remove that 3rd slip. It would have been a simple one for them for the 3rd slip, but Abdullah Shafiq just could not quite hang on to it. That can be a costly miss. That's exactly the thing. You see, that angle will take the ball away from Abdullah Shafiq. At the end, he was reaching out for it, although a fielder of his stature should have taken it. But his both feet were up in the air when he got 2 hands to it. But 3rd slip would have gobbled it. Abdullah Shafiq diving to his left, not his natural side. Fahim Ashraf, very, very unlucky. Salute to you, Mr. Shah Faisal. You've been a good captain all sitting here in the commentary box. Spot on. Could easily have been a wicket maiden. 21 for 1. What a let-off. What a let-off. We've been talking about the importance of that 3rd slip. And it just went straight to the end. It would have been a regular catch for that 3rd slipper. Abdullah Shafiq made it tough for himself. Have a look at that. Fuller delivery. He just went for that drive. Well, he should have taken it. We might not be able to tell from this angle. Now, 3rd slip is there. Yeah, but the thing is, Fahim is also unlucky because we've seen Central Punjab drop so many catches. But Fahim Ashraf has made a difference. But on that occasion, he was the bowler himself. So he definitely could have helped himself there. Abdullah was always reaching out for that delivery. He must be thinking, Fahim Ashraf, why me? I take all the catches. Nobody takes on my bowling. He has every right to think like that. And that is what a good slipper make a difference to a team. Especially on a pitch like this. Well, he's keeping 3 slips for Amir Yamin because of his extra movement and accuracy also. But Rana Fahim Ashraf, yes, the point we were making, he's been a brilliant slipper. He's taken 4 catches, very smooth. Abid Ali also. Abdullah usually is a safe fielder in that area. But look at those fingers, they're all taped up. What do you think? Is it advisable to be standing in the slips when you've got fingers taped up? We know Mohammad Saad has had troubles
We've seen Tayyab Tahir have had trouble. Probably that's the only option left, but it was good to see a smile on the face of Fahim Ashraf. He really must have been gutted that catch was dropped, but he recovered very quickly. That's the character of the man. He's all into it. That is the kind of attitude you want to have. Love that from Fahim Ashraf. Yeah, they're enjoying their cricket, no doubt. There are a lot of international cricketers, almost all of them. A couple of international players to be, hopefully, in future. I talk about Qasim Akram, Muhammad Ali maybe. So they've got a team full of stars. Oh, that's handsome. That's nicely done. Square candidate for 4. If for once Amir Yamin providing him with that length, with the bounce in the pitch, these are the strokes you can execute here. And Saad was quick to pounce on it, just picked up the length nicely and rocking onto that back foot, back and across very, very nicely. No ball as well, pretty tight, but the stroke, all class from the little left-hander. He surely can bat, but he's just not transformed his talent into performances. This is a good time. Team in a bother, and if he can deliver here at this time, that will do wonders to his career. He's got the stage set. He's already got an opportunity also, a catch going down. So you've got to make the most use of it. Definitely. But Amir Yamin, that short of a length delivery, immediately back on track. That's the experience. And the more question you ask from that fuller length, or slightly back of a length, the more success you're going to get. He has been unplayable since morning. There is no doubt about that. Length, not right. Nicely pulled. That will run away for 4. Second boundary of the over coming to Mohammad Saad. That's beautifully played. Once again, that shorter length. Saad seems to be picking it quite nicely. Got into position nice and early. That roll of the wrist. Positive intent. Saad will play his strokes, but these are the right choice of strokes. The 2 boundaries in this over. That's good batting. Yeah, I'll agree with this approach. You just can't keep on hanging in there and lose your wicket. You got to search, keep on searching for the runs. The trail by 87 runs at the moment. $30 for 1. Remember in the last game, Shah Faisal? In fact, the game before that one against KP, Sindh against KP. KP were in a similar situation, but they were bowled out within that lead. Almost, 4 runs to get they had in the last inning, Sindh. They're in the same position. What would be the idea? What would be the thought from here on? How do they want to go about this chase of 87 runs first, then put on the lead, and then look to bowl the opponent out? There's one difference between the 2 games that you mentioned and Sindh team, because Sindh is coming off the back of 2 victories. So they will have a bit more positive intent about them. That means that they would look to wipe out this deficit as soon as they can for as little damage as they possibly can, and then build from there. But this first session is really crucial. Oh, he's played it straight to Fahim Ashraf. Again, similar sort of dismissal for Umar bin Yusuf. That's a big wicket for Central Punjab. Action replay of his dismissal from the first innings.
That firm push on the up. This is exactly we were talking in the last over. You got to pick and choose what strokes you can play on this pitch. Certainly not the one earlier in your innings. On the up drive, upish. Fahim has got a very, very safe pair of hands. Umar bin Yusuf departs for 10. Sindh 30 for 2. Faraz Alam. Faraz Ali. Fawad Alam is the next one to come. It's a good name, Faraz Alam. He's got a job to do though, because Sindh has lost their opener, Umar bin Yusuf, in exactly the same way as he lost his wicket in the first inning. How poor is that from Umar bin Yusuf? Make the same mistake twice. Fahim Ashraf deserved that wicket. Well, he could have had Saad as well. That one wicket will really boost his confidence. Faraz Ali, Sayyid Faraz Ali, average of 24 after 41 matches. A lot is expected of him. Those 200s, 850s. Really needs to come good for his side. The conditions are up against him. A very good bowling lineup and a very, very tricky pitch. And a bowling lineup who's on a high. Was taking 2 wickets this morning. Courtesy, some quality bowling by Amir Yamin. 3 slips and a gully to start off. That's a good start. Yeah, same mistake twice. What do you make of it? Wasn't there for the drive. His head is not over the ball. He's just playing out in front. Nothing going for that stroke in this kind of situation. Good sharp reflex catch though, because Umar did find the middle of the bat, but Fahim Ashraf really reacted well. This is his 5th catch of the match, making a telling contribution in the field. It was Amir Yamin in the first inning, similar sort of dismissal. It's Fahim Ashraf this time, losing his wickets to all-rounders. You got to learn. Playing the second inning, in fact the third of the game, it's an art. You just can't take it for granted. You got to pick and choose, as Shah Faisal said. You just cannot keep on hitting on the up on a pitch like this. You got to pay respect to the bowler also. If you don't, you go back. And of course, you watch others play and do well. In the previous over, we were praising Saad for those 2 boundaries and his positive intent. Yeah. But those are the kind of strokes you can execute on this pitch. That's the first innings. Look at the pitch, quite green on that day 1. And that is not the action replay. That is just now, just a while ago. Similar mistake. It's probably just inbuilt as an opener. Anything that is pitched up. Quite fuller. He went for that drive on the up. See, it can also happen is that he just got defeated with the length. Error of judgment in picking the length. That's an important part of the batting as well. 30 for 2. A bit of repair work going on. Amir Yamin has had a wonderful game. If Central Punjab goes on to win this one, he'll be the man. And the captain, we've seen him bowl with that relatively newish ball.
It won't be easy to play, I tell you. Not a bad move, especially against Saad and Faraz, who like to play their strokes, and that slower pace could really lure them into some expensive strokes. Yeah, you said it right. It's a good idea against somebody like Mohammad Saad, who's just looking to get going and get some runs, and he's lost his partner. I don't know. I wonder how much this will affect him, his batting, his style of play. It's again commentator's nightmare. Saad is bowling and Saad is batting. Saad, the batter, does well. Muhammad Ali bowled a good spell, but Saad gives them that luxury, 28 wickets. To just come in and try his luck for a couple of overs. If not, then you can always go back to your regular fast bowlers. He's been lucky most of the time. Whenever he's come to bowl, Mohammad Saad, he's got that habit of taking wickets because probably batters tend to take him easy, relax a bit. But you've got Muhammad Ali. That's straight down the track. Might not have the legs to go for a boundary. Ahmed Asif in for Amir Yamin. Couple of runs going to Saad Khan. There is Saad everywhere. Saad just cannot resist the temptation. Not in control. Just close the face on it a little bit. And the Iron Man gives the chase. They've got two regular bowlers still to bowl. Muhammad Ali did bowl a couple of overs in the morning session, the first 15 minutes. Ahmed Danial also. I think he'll be very handy on this third day pitch with his length and with his pace. Floater. Missed out on that, Saad. Actually, Danial wouldn't be a bad matchup for Faraz. 32 for 2. Trailing by 85 runs. They can be very long if you keep on losing wickets. It's good bowling. Really good bowling. This is pressure situation for these two young batters. I think it's a huge learning curve for these two, Faraz and Saad. We've been saying it all again and again. Got to be delivering. And he's not happy. He's definitely not happy. Right in front, there's something bothering them. Is it Yasir Hamid there? Is he bothering them? Because that's what we usually see. That's Kunumal. Is he the one who's bothering? The problem is, I think, downstairs, that man just poking from behind the side screen. Cover the ground staff. This is their vantage point behind the side screens, right underneath our commentary box. They do decide to have a little lane from time to time. Now Faraz is ready. Fahim found really good areas to Saad in the second over of his spell. He's got to be more consistent. We've also seen that Faraz also likes to go for that drive. Plays with slightly hard hands, especially early in his innings. It's firmly driven down the track.
Nicely timed. Ahmed Daniel does well also. Good teamwork. Tayyip Tahir with a direct throw. With a direct throw. No. Everything is good. It's cool. As Tayyip Tahir at his very best. He's known to do that from the deep, score direct hits. Good running though, these two are quite quick. Once again that drive with hard hands out in front for us. Fahim shouldn't mind that. Ahmed Daniel's pace and then the teamwork. Tayyip took aim, look at that, flat return, very close, but good technique there from Faraz. Yeah, you got to always be careful when it's this man throwing. Tayyip Tahir, he's got a very strong arm. We have seen that times and times again. Uh-oh. Sloppy. That's all I can say. Just thinking, what's the reason here at the Pindi Cricket Stadium that when the ball passes the stumps, it just wobbles in the air, and although Ali Shan lined it up, but at the last minute you'll see that that ball kept going away from him. That wobble at the last minute, still he should have got it. But what could be the reason, Ali? Why do we see this wobble here at Pindi Stadium? We don't see it in any other stadium in Pakistan. That's a shorter one. Well, a lot depends on which bowler is bowling. I think bowlers with more control, we've seen them get it right most of the time. And the conditions here in Rawalpindi, Yes. they do make a difference. It's an open ground. But yeah, I can't really be sure. It depends on the control of the bowler most of the time. We'll come back and find the reason for that wobble after the ball passes the wicket keeper. 36 for 2. साद अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे फार एंड से अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं और उनका सामना भी कर रहे हैं साद। तो साद वर्सेस साद 81 रन्स की दूरी पर है सिंध की टीम। अब तक अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है सिंध सेंट्रल पंजाब के तमाम ही फास्ट बॉलर्स ने और एक विकेट फ़हीम अशरफ और एक विकेट हासिल किया आमिर यामीन ने। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद। यासिर, आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया आसिफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बॉल पढ़कर अंदर आया सात का। सरप्राइज कर सकते हैं, हमने देखा है इन्हें पहले भी स्लो बॉल करते हैं लेकिन जगह पे करते हैं और थोड़ा बहुत हिलता भी है बॉल और इन पे रिलैक्स नहीं हो सकता बैट्समैन। ये वही ट्रिक है कि बैट्समैन रिलैक्स हो और कोई गलत शॉट खेले और आउट हो, जिस तरह हमने पहली इनिंग में देखा था इन्होंने आउट किया था साइम को। जी हाँ बिल्कुल। और आज भी साइम अयूब जो हैं वो एक ऐसी ख़तरनाक गेंद पर आउट हुए जिस पर आमिर यामीन एक ऐसी डिलीवरी जिसको खेलना अनप्लेबल था। साद विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं और इसके साथ ही ओवर का इख्तिताम हुआ। सिंध 36 पर 2।
और इस वक्त ड्रिंक्स ट्रॉली ग्राउंड में दाखिल हो चुकी है और सिंध के बैटर्स अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं और उमैर बिन यूसुफ और साइम अयूब जल्दी आउट हो गए। साद खान और फराज इस वक्त क्रीज पर हैं। बाद में फवाद आलम, सरफराज, इनका बहुत बड़ा रोल होगा। अभी 36 पर 2 है। पहली विकेट साइम अयूब, अनप्लेएबल डिलीवरी थी और ये सेम एज फर्स्ट इनिंग। उमैर बिन यूसुफ बिल्कुल रिपीट की उन्होंने ये अपनी विकेट। बॉलिंग कॉर्ड आमिर यामीन 6 ओवर 3 मेडन 1 विकेट। मोहम्मद अली 3 ओवर 10 रन, कोई विकेट नहीं। फ़हीम अशरफ ने 4 ओवर में 1 विकेट हासिल की 10 रन देके, और साद ने 2 ओवर में 2 रन दिए, कोई विकेट नहीं। जी हाँ, और अभी तक 81 रन दरकार हैं सिंध को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए। और ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया था कल जिस तरह से आमिर यामीन ने, और बॉलिंग भी ज़बरदस्त की थी। आज एक दफ़ा फिर आमिर अगर छा जाते हैं, लेकिन इस वक्त फ़हीम अशरफ जो हैं वो तैयार हैं अपना 5वां ओवर करने के लिए। उमैर बिन यूसुफ को कॉट एंड बोल्ड किया, ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा, एक अच्छा कैच लिया। और इनकी परफॉर्मेंस इस वक्त जो है वो बहुत क्रूशल हो सकती है, न सिर्फ सेंट्रल पंजाब के लिए बल्कि ये फ़हीम अशरफ अगर कम बैक करना चाहते हैं तो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पर देनी होगी। और इस बाउंसर के साथ इस ओवर का आगाज किया है। फराज ने इसको जाने दिया विकेट कीपर के स्टंप्स में। अच्छा छोड़ा फराज ने। वाटर के बाद पहला बॉल पीछे बैंक किया फ़हीम ने। अच्छी एफर्ट डिलीवरी थी फ़हीम की फर्स्ट अप, और अब यकीनन ये थोड़ा सा आगे लेके आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता लेंथ को आगे करेंगे। बहुत अच्छी लेंथ पर ये गेंद और तेजी के साथ एक रन हासिल किया। सॉफ्ट हैंड से इसको खेले थे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। यह लेंथ डिलीवरी थी, और अगर फील्ड को आप देखें तो 2 स्लिप्स भी हैं, गली है, पॉइंट है, और एक फील्डर जो है वो अपिच ड्राइव के लिए शॉट मिड ऑफ पे लिया हुआ है, बिल्कुल सामने। आइडिया यही है कि लेंथ से थोड़ी सी आगे की जाए बॉल,
which will be spot on. बॉल नीचे रहा थोड़ा, लेकिन अली शान की अच्छी कीपिंग. इस दफ़ा गेंद नीचे रहा था और वही मशरफ का इस गेंद ये नीचे रहा. देखिए इसको कट करना चाहते थे लेकिन जाहिर है अनइवन बाउंस था. और जिस तरह से हमने पिच में देखा था कि जो क्रैक्स हैं इस गेंद में हमें नजर आया कि गेंद पड़ने के बाद नीचे रहा. अली शान उसे कलेक्ट नहीं कर पाए थे. मुश्किल बॉल था, 2 टिप्पे लगे थे उसके. तो वेल बोल्ड और वेल लेफ्ट. साथ की आज जो मूवमेंट है वो ज़्यादा बेहतर है पहले इनिंग से. ज़्यादा मूव नहीं कर रहे, थोड़े स्टिल खेल रहे हैं. सरफराज इस वक्त परेशान ज़रूर हैं. जाहिर है कि अभी भी 80 रन की दूरी पर है सिंध की टीम इनिंग्स की शिकस्त से. और एक बेहतर रोल प्ले करना होगा सरफराज को भी. दूसरी जानिब साथ के लिए एक अच्छा चांस है, एक लंबी इनिंग्स खेलें. और एक दफ़ा फिर लाइन मिस कर गए. अली शान के ग्लव्स आज अच्छे लग रहे हैं. उनके बॉल आ रहा है हाथ में. कल की इनिंग्स देने कॉन्फिडेंस दिया होगा डेफिनेटली. कल 50 रन किए इन्होंने. शॉट मिड ऑफ पे कप्तान, कैचिंग पे एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर बॉल. इस ओवर में थोड़ा सा वेवर्ड रहे कई मशरफ. 37 पे 2. बॉलिंग में तब्दीली यहाँ पर की है कप्तान साद ने. मोहम्मद अली को अटैक के लिए लाए हैं. पहले स्पेल में 3 ओवर्स किए थे, 10 रन दिए. ओ बहुत ही अच्छी गेंद. इस दफा गेंद पड़ने के बाद हल्का सा अंदर आया. जी हाँ, ये है स्पॉट ऑन डिलीवरी. अगर हम बात करें स्पॉट ऑन क्या है और लेंथ डिलीवरी क्या, स्पॉट ऑन वो है जो आपने फील्ड के मुताबिक बॉल करना. दैट स्पॉट ऑन. अब यहाँ से अगर ये खेलने जाएंगे तो प्रॉब्लम है. और बहुत अच्छा छोड़ा. इस दफ़ा इसको पिछले कदम पर जाकर खेले और बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग की है अब तक अली ने. और आमिर यामीन दोनों ही ज़बरदस्त अटैक किया था. आमिर यामीन की बॉलिंग में आज फिर एक ज़बरदस्त स्विंग देखने को मिली. दोनों जानिब स्विंग कर रहे थे, विकेट के दोनों जानिब. ये ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है सेंट्रल पंजाब के पास. फास्ट बॉलिंग में आमिर यामीन, मोहम्मद अली, अहमद दानियाल भी हैं. वेल बोल्ड और ये अच्छा खेले फराज. जी यासिर, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि अहमद दानियाल एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि वो वार्म अप कर रहे हैं और इसका मतलब है कि
कैप्टन की जानिब से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि तैयार हो जाइए। पहली इनिंग्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी अहमद दानियाल ने, क्विक हैं। ओ एक और बहुत ही अच्छी गेंद, इस दफा गुड लेंथ से इसको उठाया अली ने। बहुत ही अच्छा लेफ्ट फराज का। ये होता है अनप्लेबल बॉल और इसको इस तरह छोड़ते हैं, बट ये थोड़ा सा पीछे था। अगर हम सायम के बॉल के साथ कंपेयर करें तो वो लेंथ से राइज हुआ था और ये थोड़ा सा पीछे पिच हुआ है ये बॉल, लेकिन अच्छा छोड़ा फराज ने। और बहुत अच्छी गेंद, लेकिन उसको उतने ही अच्छे अंदाज से खेल दिया कलाइयों की मदद से। फाइन लेग की जानिब एक रन हासिल किया। जी हाँ, सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट की हमेशा अच्छी स्ट्रेटजी होती है। अगर आप ऑन स्ट्राइक हों और फिर ऑफ स्ट्राइक हों, सिंगल से जो प्रेशर है वो रिलीज होता है। बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर अली ने अब बॉलिंग की है और ये उनका चौथा ओवर था। इसके साथ ही इस ओवर का इख्तिताम हुआ है। सिंध 38 for 2। बॉलिंग चेंज मीडिया सेंटर एंड से अहमद दानियाल आए हैं। अच्छा आगाज है और अहमद दानियाल शॉर्ट रन अप से बॉल करते हैं और अब तक फर्स्ट क्लास करियर में 4 मैचेस खेले हैं, 11 विकेट्स लिए। पहली इनिंग्स में बहुत अच्छी क्विक बॉलिंग देखने को मिली, लाइन और लेंथ बहुत अच्छी थी और बाउंसेस बहुत अच्छे किए थे। इसी स्टेडियम में दानियाल ने डेब्यू किया। यासिर बीइंग अ बैटर, आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी दोनों बैटर्स यहाँ पर हैं, ख़ासतौर पर साद यंगस्टर, अब ये इनिंग्स उनके लिए कितनी क्रूशियल हो सकती है, उनके करियर के लिए भी, कि जब टीम मुश्किल में है, बैटिंग कंडीशंस भी इतनी आसान नहीं है और यहाँ से एक अच्छी इनिंग्स खेलते हैं और फिर अपना लोहा मनवाते हैं। ऐसी इनिंग्स आपका डेफिनेटली आपके मोराल को, आपके कॉन्फिडेंस को अपलिफ्ट करती है और आपका ग्राफ को बढ़ाती है। टीम में जो ट्रस्ट लेवल है वो बढ़ता है, फिर रिलाई करना शुरू करते हैं आप पे। लेकिन लंबी इनिंग्स यहाँ से 100 होना चाहिए, क्योंकि हम अगर फवाद आलम की बात करें तो फवाद आलम ने अपना अगर इतना बड़ा नाम बनाया है तो वो इसी वजह से बनाया कि इस तरह की सिचुएशंस में उन्होंने हमेशा रन्स किए हैं मिडिल ऑर्डर में आके। अब तो खैर चले, उनका मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, जब वो सात की तरह जब शुरू में आए तो वो उन्होंने हमेशा रन्स किए हैं अपनी टीम। तो जो भी अगर आप अपना नाम बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरह की सिचुएशंस में रन करना आने चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से आपने सही बात की है, अच्छा मौका है इनके लिए मिडिल ऑर्डर में। कराची के हमेशा हमने बड़े रिलायबल प्लेयर्स देखे हैं फर्स्ट क्लास में। इससे पहले आसिफ मुश्तबा होते थे, उनकी 49 सेंचुरियाँ, ये उनके लिए आइडियल सिचुएशन होती थी।
30 पे 2 तो वो आके अपना 100 करते थे और टीम को 250 पौने 300 पे ले जाते थे। तो अगर यहाँ पे ये स्टैंड अप करेंगे तो इनकी टीम भी स्टैंड करेगी, वरना अभी भी सिंध की टीम ट्रेल कर रही है 78 रन से और उनकी टीम, इनकी इनिंग्स बहुत क्रूशल है। ओ क्विक डिलीवरी थी लेकिन डाउन द लेग साइड और इसका इस दफा यॉर्कर करने की कोशिश की थी और डाउन द लेग साइड, हाँ जी डाउन द लेग साइड और अली ने अच्छा कलेक्ट किया। इसके साथ ही ओवर का इख्तिताम हुआ 39 पर 2। एक दफ़ा फिर अच्छा आगाज़ अली की जानिब से और दूसरी जानिब फराज के ऊपर भी एक लंबी इनिंग्स ड्यू है कि वो एक ये अच्छा मौका भी है उनके पास। जी हाँ, फराज की अगर आप बात करें तो कासिम अकरम ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, 50 रन किए हैं और अभी वार्म अप हो रहे हैं तो शायद कोई एक आध 2 ओवर्स, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं तो इनसे करा सकते हैं। अच्छी बैटिंग फराज की। अगर फराज की इनिंग्स को देखा जाए, इस इनिंग को शॉर्ट इनिंग है, 21 बॉलें खेले लेकिन बॉल टू बॉल खेल रहे हैं, बाहर का बॉल छोड़ रहे हैं, बाउंसर को भी डक कर रहे हैं। 6 रन पे खड़े हैं अभी तक, लेकिन इनकी ये बहुत शॉर्ट इनिंग है। लेकिन तो इनका जो बेसिक्स हैं वो ठीक लग रहे हैं। अब इट्स मैटर ऑफ 1 इनिंग इनके लिए। इस दफा इसको खेल दिया फाइन लेग से और यहाँ पर मिसफील्ड हो गई। ओवर थ्रो के रन्स मिलेंगे। बैकअप जरूर किया था और ये इस तेज रन के साथ फील्डर पे प्रेशर आया और इस तरह ये 5 रन मिल गए। ये अच्छी रनिंग की, इन्होंने प्रेशर डाला फील्डर पे और उसके नतीजे में ओवर थ्रो के 5 रन मिल गए। क्योंकि देखें फील्डर भी रिलैक्स हुए थे और कासिम अकरम से मिस फील्डिंग हुई है। इनके बेस्ट फील्डर हैं, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन सेंट्रल पंजाब टीम। जिस तरह से हमने देखा कि सिंध के बैटर्स की एक अप्रोच रही है, शॉर्ट सिंगल्स बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं और ऐसा ही हुआ। 7 वहां पर फीडर थे थ्रो की, लेकिन कासिम अकरम उसको बैकअप ना कर पाए। ये कल अगर हम देखें लंच के बाद तो सेंट्रल पंजाब ने आके एक जान डाल दी थी गेम में, क्योंकि उन्होंने अपना माइंडसेट और अपनी अप्रोच को चेंज किया। और इसी तरह की इनिंग्स खेलनी पड़ेगी सिंध को भी। अगर ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे, बॉक डाउन हो जाएंगे, तो फिर इनके ऊपर सिचुएशन चढ़ती जाएगी। तो ये जो छोटे सिंगल्स हैं, थोड़ी सी प्रोएक्टिव अप्रोच और रन्सों के लिए देखें। 2 स्लिप्स, फहीम अशरफ पहली स्लिप में बहुत अच्छे फील्डर हैं, 3 कैचेस किए पहली इनिंग्स में और आज भी एक कैच लिया। और उनकी जो क्लैपिंग सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है सेंट्रल पंजाब का। और इसको स्टाइलिश अंदाज में खेला, स्ट्रेट टू दी मिड ऑफ। ओवर पिच डिलीवरी थी।
इसके साथ ही इस ओवर का इख्तिताम हुआ। सिंध 44 पर 2। कोकोबुरा के 3 बॉल पड़े और 2 जो हैं वो सिंथेटिक बॉल है जिनसे प्रैक्टिस होती है। लेफ्ट साइड पे ये तो 2 ज़्यादा लाल लग रहे हैं ये वाले बॉल। जी, ये जो आप सिंथेटिक बॉल हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं या सिर्फ इससे फिर कॉन्फिडेंस आता है कि जब आपको एक ये खौफ नहीं होता कि ट्रेनिंग सेशन में बॉल लग जाएगी। सो ये सिंथेटिक बॉल जो होते हैं ये कोई या सिर्फ ये फील्डिंग के लिए है या ख़ास किस्म की ट्रेनिंग के लिए है? ये बैटिंग नॉकिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये एक तो थोड़ा सा पढ़ के क्विक निकलता है, ठीक है, और वेट इसका वही होता है जो क्रिकेट बॉल है उस वाला प्रॉपर वेट होता है। और ये जब जहाँ पे भी लगता है तो यूँ फील होता है कि मिडल हुआ है, तो वो एक कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है ये। और इसकी लाइफ भी अच्छी होती है, लाइक ये पुराना हो के ख़राब नहीं होता, चलता रहता है, तो इट्स गुड फॉर प्रैक्टिस। सीमेंट पे बहुत तेज़ निकलता है। क्रीज का यूज़ किया इस बार, एंगल हासिल करना चाह रहे थे लेकिन अच्छी बैटिंग बिहाइंड द बॉल आके अहमद फराज अली। दानियाल ने फैसला किया है कि फराज को जो है वो राउंड द स्टंप्स लाया जाए और मीर हमजा, मोहम्मद उमर और अबरार इस वक्त नेल जॉनसन के साथ बैटिंग की कुछ टेक्निक्स डिस्कस हो रही होंगी मीर हमजा की जानिब से, जिस तरह से वो कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने गेंद उठा लिया। यासर, डिस्कशन जारी है। इसको फाइन लेग पर खेल दिया है, फील्डर मौजूद हैं, एक आसानी से 2 रन्स मिल जाएंगे। अली ने इस बॉल को कलेक्ट किया। जी हाँ, बड़े सॉफ्ट हैंड से खेल रहे हैं फराज, बिल्कुल बॉल को अपने पास आने दे रहे हैं। और लंच से पहले हाफ एन आवर का खेल है, शायद स्पिनर्स को ट्राई करें, इनके पास कासिम अकरम है, उनसे वो बॉल करवा सकते हैं। बट मोहम्मद अली ने भी अभी 2 ओवर्स ही किए हैं, ये दूसरा ओवर है अहमद दानियाल का, तो लेट्स सी। अच्छा बाउंसर, अच्छा छोड़ा फराज ने। बाउंसर ज़रूर कर रहे हैं लेकिन 3 स्लिप्स, एक गली के साथ और डीप स्क्वायर लेग में कोई फील्डर नहीं है। और फराज जो हैं वो इस वक्त अच्छी टच में नज़र आ रहे हैं और स्लिप में तीनों फील्डर्स तैयार खड़े हैं कि जब भी कोई गेंद आए, कैच आए, उसको थाम लें। और एक दफ़ा फिर इसको बैक फुट पे खेले और तेज़ी से रन हासिल किया। बहुत अच्छे इंटेंट दोनों बैटर्स का। एक बार फिर काफ़ी तेज़ थ्रो पॉइंट के फील्डर की, और जिसको बैकअप किया इस बार कर लिया साथ ने, लेकिन थ्रो में काफ़ी जान थी कासिम अकरम की। अगर साथ के रिएक्शन को हम देखें आफ्टर द थ्रो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यार मेरे ट्रायल ले रहे हो। जी हाँ, पहले जो थ्रो हुई थी जिस पर ओवर थ्रो के रन्स मिले थे वो साद ने थ्रो की थी और कासिम उसको बैकअप नहीं कर पाए थे, लेकिन इस दफ़ा साद ने अच्छा बैकअप किया। ओवर पेज डिलीवरी और पूरे एतमाद तरीके से साद इसको खेले। और कप्तान साद जो है वो जिस तरह बात कर रहे थे कि कासिम अकरम को यूज़ कर सकते हैं, ख़ुद भी साद ने बॉलिंग की, 2 ओवर्स किए। और क्या ऑप्शन हो सकता है लंच से पहले विकेट हासिल करने के लिए यासर? अभी तो फ़िलहाल ये आई गेस इन बॉलर्स के साथ ही जाएंगे 2 ओवर्स और उसके बाद शायद लंच से पहले 10 मिनट पहले हम देखें 1-2 ओवर शायद कासिम अकरम कर लें, क्योंकि अभी बॉलर्स फ्रेश हैं, बॉल ठीक कर रहे हैं, दोनों बैटर्स भी अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा एक मुकाबला हो रहा है बैटर बॉल का।
ओ बहुत ही शानदार गेंद इस दफा पड़ने के बाद तेजी से निकली और राइज किया। बहुत करीबी मामला हो सकता था। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा। बहुत अच्छी डिलीवरी, बीट हुआ और ये लकी रहे कि ये बॉल जो है बल्ले को नहीं लगी, पीछे पिच हुआ और पहले ही चले गए उसे खेलने, लेकिन नहीं बल्ला हटाया, अच्छा अच्छा हटाया। बहुत ही शानदार बॉलिंग अली की जानिब से। ये वो गेंद थी जो एक सरप्राइजिंग डिलीवरी फराज के लिए। और उसको बैकफुट पर पंच किया फराज ने। और एक रियल कॉन्टेस्ट है इस वक्त। आज तीसरे दिन का खेल है, पहला सेशन है। जिस तरह से पिच बिहेवियर है फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। क्रैक्स हैं या फराज काफ़ी फाइट कर रहे हैं, पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं खेल रहे, फाइट कर रहे हैं। लेट्स सी इनके फ्लो आ जाए बैटिंग में, 50 करें तो शायद, बट अभी तक काफ़ी फाइटिंग इनिंग्स है इनकी। सॉफ्ट हैंड से खेल रहे हैं, ये अच्छी बात है। अली ने भी राउंड द स्टंप्स बॉलिंग की है लेफ्ट हैंडर्स को। जिस तरह आमिर यामीन ने टारगेट किया साइम अयूब को, राइजिंग डिलीवरी की और विकेट हासिल की। जो हमने पिछली गेंद देखी थी अली की, ऑलमोस्ट उसी तरह का उसमें बाउंस था। गुड लेंथ पर पड़ने के बाद राइज हुई डिलीवरी और लेकिन फराज लकी रहे यासर। ये पार्टनरशिप बहुत क्रूशियल होगी सिंध के लिए और यकीनी तौर पर दोनों ही बैटर्स को अपनी इनिंग्स बिल्ड करनी है। और अगर दोनों ही बैटर्स 50 करते हैं तो फिर सिंध एक अच्छी पोजीशन में आ सकती है। अभी भी 69 रन दरकार हैं इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए। जी हाँ, वो इंटरेस्टिंगली साथ की बॉल पे एक चांस तो निकला था, पर काफ़ी वर्क हार्ड करना पड़ेगा इन दोनों बैटर्स को इस सिचुएशन से निकलने के लिए। अच्छा बॉल और एक बार फिर अच्छा खेले। जी हाँ, अब्दुल्ला शफीक एक कैच अगर ना गिराते तो वो इस वक्त 48 for 3 होता और प्रेशर मजीद सिंध पर होता। सीधा कैच अब्दुल्ला शफीक के लेफ्ट साइड पे था, एक स्टेप लेना था और लेकिन दोनों उन्होंने फ्लाइंग डाइव की। उस डाइव ने जो है उस कैच को ड्रॉप करवाया। इस डॉट डिलीवरी के साथ इस ओवर का इख्तिताम हुआ है। सिंध 48 पर 2। Sindh still trail by 69 runs. Not quite out the middle of the bat, in the air, away from Amir Yamin. Sindh trying desperately hard to come out of this deficit without much loss. Ahmad Daniel will always surprise you with his pace. Not much from this run-up, but a lot of shoulder. And it hit the splice. Could easily have gone to Amir Yamin. Plenty of variation in central Punjab.
fast bowling department. They have different types of seamers. Ahmed Danial is a skiddier, probably the quickest of them all. Good morning, Ali Yunus. Very good morning. Not so good morning for Sindh. Lost 2 wickets for 48 runs. Yeah, you were talking about the fast bowling option. I think he's been the most impressive alongside Muhammad Ali, both of them. And the variety you were talking about, they're just amazing. So much variety in that. Amir Yamin is a different lad. So is Fahim Ashraf. Squared Raven opened the face of the bat at the last minute. It went behind square. Daniel wouldn't mind that. 50's been brought up for Sindh. Yeah, wrong line, wrong length. That's what he's searching for. Mohammad Saad outside the off stump. A little in the air. Saad Khan. And the placement also. That's a really sharp bumper. Really climbed on Saad. The line was good, but in the end, it went too high, even too high for Ali Shan, given as wide. Yeah, good energy shown by Daniel. Although it went over the head of the wicketkeeper, but he wouldn't mind it. Look at that. Just that tennis ball bounce after pitching, just went on the rise over the head of the wicketkeeper. That shoulder that you were talking about. He really banged it into the surface and got plenty out of it. Nicely played. He really got behind it. Saad Khan looking increasingly confident. That's a good shot. That's a good punch off the back foot. This boy is talented. Look at that. That's punched square. Good placement also. The use of the pace, maybe? See how high he had to get up on his tiptoes to ride that bounce. He's very good in that area. He loves the on drive. This time with the full face of the bat. Normally he likes to give it a whip. Use the wrist. On that occasion he just went with the straight bat. Yeah, something like Simon Hugh. He plays similar sorts of shots to these deliveries. Full face of the bat towards onside. This can be a very, very important inning for his career, because he's struggled to get runs. He's got the stage set. I really want him to get a big one here. 2 slips and 2 gullies now. Yeah, he's shaping up really nicely. Just need to be a bit careful with his shot selection. 61 for 2. Muhammad Ali from the pavilion end. Stand and deliver. Save your legs. This is magnificent stroke. That is a shot and a half. Fantastic. All hands
Look at that. Just a little movement and then it's all hands. Good follow through also. Good placement also. He's definitely can bat. We can tell by the shot. Wonderful. See, the transfer of weight and the balance was so good. Like you said, not much foot movement, but just the transfer of weight and then the hands through the ball. It's so important, Faisal, for these two young batters to score runs. They've been struggling to get runs. Not just for Sindh side, I'm not particularly talking about this side, but overall, if you talk about for Pakistan side also, they both bat in middle order. They're hugely talented. They need to perform. They just need to transform that talent and skill into performances. This is a good opportunity. Saad Khan is on 25, Faraz is on 18. And the team needs it. Yeah, it does. Faraz is a good stroke player. We've seen him last year as well. He did show slight weakness against the short ball, but in this short little innings, what I've noticed is that he's leaving the ball very nicely. He is ducking underneath it, keeping the eye on the ball. Something that he really looks like he'd worked on it. And that last stroke through the offside really typifies the kind of talent he has in terms of his stroke play. Just need to be more tight and compact. There you go once again. Excellent short pitch delivery. Equally well played as well. Good aggression. Good aggression by Mohammad Ali. No fast bowler likes to hit through the line. That has offended him. He's not happy. Are you any good at lip reading, Ali? I am, but not that good in telling. He did react, Muhammad Ali. And he did let Faraz know. And how dare you hit me through the covers for a 4. There you go, that's what I meant. Faraz is lining those short pitch deliveries. He's picking which one he needs to play, which one needs to be ducked under and sway out of the way. Yeah, that's where somebody like Neil Johnson, he can be very helpful for these young batters. Just as you said, you just need to be right in the shot selection. You've got to decide which balls to leave. All these psychological things. And I'm pretty much sure that after this season, working with Neil Johnson, Paul Nixon, Ghulam Ali, they will improve. Finding the middle of the bat quite regularly. Big stare from the big fast bowler brings out the smile from Faraz. Good contest, 65 for 2. Openers gone back. Fahim Ashraf has contributed in both wickets, caught and bowl, and one catch, a wonderful catch and slips to get rid of Saim Ayub. Scored 5, and it's up to these two young left-handers, Saad Khan and Faraz Ali. Two very good batters still to come. Fawad Alam, Sir Faraz Ahmed, Mohammad Umar can bat also, and they trail by 52 runs. It's a good contest here. Cricket has been very intense.
Some good, high-class skills on display. It's just a matter of who is more disciplined will come on top. Trailing by 52 runs, what happens? If they can get to that, 200-run lead, get 250 more by day end today, which they have the potential of getting there, that will set up tomorrow's day very nicely. Quaid-e-Azam, Sarfaraz Ahmed still to come, so we can think of that lead of 250. That will really make things very interesting for tomorrow's day. A lot will depend on this partnership. 34 at the moment. They look very solid, very compact, in with the purpose. Good heat from Ahmed Daniel. He's really, like we just mentioned before, nothing much from his run-up, but huge shoulders. Look at that. Very short run-up anyway. In first part of the run-up is very slow, but look at that top half of his body. He's very strongly built. Shoulders and upper body area, that's where he gets his strength. Not much of a follow-through as well. Not your typical fast bowler, but the strength and the quick arm action really allows him to get that ball through. Once again making Saad hop. He dealt with it nicely though. Another wild throw. Qasim Akram was scrambling. Probably saved another boundary. It had to be him. The strongest man in the team. Muhammad Ali. Look at that. That's a strong throw. Keeper had no chance. Good backing up by Qasim Akram. Was he aiming at the wicketkeeper or at Faraz? At Qasim Akram. He's just checking if he's woken up or he's still sleeping. More chin music for Faraz. More test of his technique and temperament. Wow, that is just superb. I'm pretty sure the footwork will suggest that Faraz was expecting a short pitch delivery. Yeah, the area was excellent by Daniel. And we know that Faraz doesn't really use his feet. So it's almost going to happen similar way. The way his left foot just opened up and squared him up, it meant that he was waiting for that short pitch delivery, hanging back. And that length really deceived him. Clever from Daniel. Once again, that front foot, that weight is not coming into the shot. Still thinking about that delivery. Another excellent over. 67 for 2. Enjoying his work, as always, Richard Stonier. Even he's got his support staff to train properly because he trains himself all the time. He runs all the time. I don't know, what, 10 laps a day? Probably 10 laps during the lunch, and there's more before the start of play and some after the close of play. He's a running machine. And now we see Qasim Akram. Just the one fifer in his very young career. That kept low. That really kept low. Saad watched it well. Just a little bit of a surprise move before lunch, and not a bad move at all. Now this one was slower. Saad reaching out for it. Good captaincy from Muhammad Saad. Yeah, he's lucky to have an off spinner in the team because we know that there are like 5 left-hand batters in Sindh side.
This might go in their favor. But he's not a regular spinner. He's an all-round cricketer. Do you think Central Punjab would be missing a regular spinner? Or they're fine with an off-spin option of Qasim Akram? Neatly played. Ali covers the ground very, very quickly. That's good outfielding. Danial, beg your pardon. Yeah, it's a good question you posed, but if you look at the squad of Central Punjab, they've got Osama Mir, who played here earlier in the tournament. This wicket is not really conducive to spin. And because Qasim Akram gives that depth in batting, he just gives you that option of change of pace. Generally, they're looking for their wickets from their fast bowlers. And just a little spell to rest them before lunch. Well done. Good over, Qasim. Good over. 68 for 2. In the air, short of that fielder at mid-on. They just cannot resist that drive. Again, pushing hard at it. That has been the downfall of quite a few batters of Sindh. And again, yeah, that's the disappointment, rightly so, because it was so close to him. Saad Khan, 27 at the moment. Looking good. Just make use of it. That's all I request. Nicely played. A very, very solid punch down the ground. Will it have enough legs? Just about. That is one hell of a stroke from Saad Khan. Very confident push. He's gaining confidence with every delivery he's facing. Have a look at that. Full face of the bat. Not quite in control, but he'll take it. The reason I say it's a good shot, because Danial is mixing it up with some very good short pitch deliveries. He was setting him up for that full delivery, but look at how nicely the weight came into the stroke. His head was right over the ball. Just a little push down the ground. That is good cricket. Saad Khan looking increasingly confident. See, there you go. He's once again lined it up very nicely, picked up the length early, and in good position to see it all the way into the keeper's hands. Yeah, the strong wrist, the way he hits that turf. Danial, and as you said, the shoulders, the wrist very strong. He can be very deceptive with those shorter ones because it just hurries onto you. That's the type of bowler he is. To add to the fact, he's not very tall. Those bouncers are really hurrying the batters. Always the greats of the game, when you listen to them, they said Malcolm Marshall, he used to have a mean bouncer. Similarly, he wasn't very tall, but the bowlers who are skiddier, they have the most toughest bouncers because it's very hard to first pick up the length and then how much bounce they're going to get.
skids and hurries on to the batters. And then there were bowlers like Curtly Ambrose. What about their short deliveries? Well, because they had such a good yorker, you're always worried about your head and your toe. Great, great names. Change of angle, slight indecision from Saad. That is his area of weakness, but he survives. 72 for 2. Sindh trailing by 45 runs. Extra bounce. Went past that slip fielder looking for the second run. We'll get it. Little bit of turn, but more disconcerting was the bounce. Faraz failed to ride it. Lucky just went away from the slip. Good areas. He didn't push it, floated it, Qasim Akram, but after pitching he just kicked on. Similar that what Saim Ayub got. In the first delivery that he bowled to Saad Khan, from a similar length, it just shooted along. So there are signs of some invariable bounce. Well done, well done, well done. Yeah, Qasim Murasi. Yeah, that's what you said in your pitch report. You've been brilliant, Shah Faisal. Well done. सही है कासिम, सही है. Everything, whatever you say, it works. It's just like that. Where have you learned that from? The art of reading the pitch. Once again kept low. Aliyu being very humble. You know, when we go out there in the middle, I do ask you a lot. You feed me quite a lot and what you think. There you go, kept low but well watched by Faraz. Yeah, there were those few cracks opening up on that length. But I have to say this, overall this has been a fantastic cricket pitch. Well, all throughout the season here. And it's kept everyone interested. In the air, once again that bounce, but away from the fielder, not entirely in control. That was a risky shot from Saeed Faraz Ali. It was in the air for a little while. He's very lucky that it didn't go straight to the fielder. Have a look at that. The balance not quite there again. On the back foot the weight was. The placement probably saved him. See, he was very low when he was shaping up for that cut shot because that previous ball had kept low on him. And this one just kicked up a little bit and he couldn't control that bounce, just couldn't keep it along the ground. But like he said, away from the fielder, really saved his blushes. 78 for 2. The problem Central Punjab might face is that they don't have that X factor that Sindh has in form of Abrar Ahmed, somebody who can rush through as a spinner. Although Qasim Akram is there, but he's not a regular one. You need some X factor as a spinner on a pitch like this. And an X factor, you talk about him, he's the X factor of our commentary box. He's called Kunumal. I love this name, Kunumal Asif. He's just checking his watch. I think he's searching for some food now. Nicely played. Beautifully played once again. Not looking to hit the ball hard. And that chase will be in vain from Tayyab Tahir. Another handsome boundary from Saad Khan. Yeah, he was in chase for a long time, Tayyab Tahir, and that's not the first time. It was nicely driven, firmly driven by Saad Khan. We'll look at that. Again, not quite in control. The bat just twisted in his hand.
but still he will take it. There is no fielder at mid-off. He's rather in between mid-off and extra cover. But he placed it perfectly to get 4 runs. Busy cricketer Saad. It's very hard to keep him tied down. Once again chancing the arm of Muhammad Ali. This is good little period for Sindh with these two batters. Moving the score along nicely. Just 33 behind now. Yeah, that's what I was going to ask you, because you've been on the pitch. After this one, we have a look at this nice use of the wrist. Again, the bat twisting in his hand. Might have to look at this. So they trail by 33, and you said there is invariable bounce that we have witnessed already, and you saw that in pitch report too. Sindh, if they can get to 150 lead, 170 lead with Abrar and Zahid Mahmood, things can really get interesting for tomorrow. Very, very interesting. This game is far from over. That partnership of 53 now. Still with the likes of Quaid-e-Azam, Sarfraz Ahmed, the street fighters. That drop chance, it's going to hurt Central Punjab. Abdullah Shafiq in second slip. They didn't listen to you. They removed the third slip. How dare they? Yeah, a lot of teams have paid the price of not having the third slip. And the thing is, take Fahim Ashraf out from this Central Punjab slip cordon. They've struggled all season long. And that was the undoing of Abdullah Shafiq as well. Wasted effort. Yeah, that brings me to the point where I just really want to admire Fahim Ashraf, because those 3 catches in the first innings, the one today, any of them, you drop them, these players, the likes of Saim Ayub, Saad Khan, they have all the ability to make you pay because they score so quickly. This man has made a difference, Fahim Ashraf. Yeah, and all those catches, they were tough ones. He made it look easy, especially the first one, Saim Ayub, this morning. It was always traveling. It's never easy, but he did it some ease. It's 84 for 2. Last over before lunch. The field is up. Just the fine leg is deep. Well ball, Qasim. 6 fielders on the offside. Just a slip. This ring of fielders. They have placed that short point fielder for that uppish cut shot, and then there is the regulation point in front of square. Well ball, Qasim. For us, I don't think he's going to fall for the trap. So close to the lunch break. Qasim, shabash. Did I say it too soon? Faraz went for the booming drive. Was just about to say that. This one was nicely bowled. Just gave it enough there, and that length was spot on. That area, making him drive, making him play that false shot. That's a better one. Good leave. And looking at Qasim Akram as well, we've seen him since he started his career. His development and progress is also very, very heartening. We saw him play a crucial knock yesterday, but with the ball as well, you can see he's getting more confident. He's using those variations in his trajectory. The release points on the crease. Another catcher in. Just 2 deliveries to go before lunch. He's got that old school traditional off spinners action. Qasim Akram is definitely one for the future.
He's got a good action as well. That last one just came in with the arm. He's hitting that, targeting that front pad. Faraz survives. And it's time for lunch, gentlemen. This is what Imran Javed calls on a very, very intriguing session. This has been first-class cricket of the highest order this morning. Both the teams fighting really hard, scrapping for the advantage. And game on here on day 3 at lunch. Yeah, both teams will be relatively happy. Central Punjab with the start and Sindh with the finish of this session. 83 runs, they lost 2 wickets. Over it, your favorite part is better this time, 13.5. Run rate also very good. So yes, we can safely say that this session has been shared between these two sides. Central Punjab, they got those 2 early wickets, Umair bin Yusuf and Saim Ayub, but could not quite capitalize on it. And since then, it's been Saad Khan and Faraz Ali's very solid partnership of 53 that we can say that brought back Sindh into this game. Well-deserved applause for the Central Punjab and also the Sindh batters. Batting hasn't been easy here, and that is the applause these two deserve. Saad Khan has looked very good. He had that slice of luck when he was dropped by Abdullah Shafiq, but he's carried on. He's making sure he makes it count. 37 unbeaten for Saad and 25 for Faraz Ali has also looked good. 84 for 2, just 33 runs behind. A wicket apiece for Amir Yamin, the unstoppable Amir Yamin, and Fahim Ashraf. Fahim was the one who had the misfortune of having Saad dropped off his bowling by Abdullah Shafiq. Good disciplined effort there from the Central Punjab bowlers. Sindh openers, it was going to be difficult for them. That catch of Saim Ayub, Fahim Ashraf made it look easy. This one, Saad Khan still in there, and Abdullah will be thinking about it, even going into lunch. Saad's stroke play was attractive and eye-catching, but Umair made the similar mistake in the second innings, which he did in the first innings. When Saad saw width, he went after it. Good heat with those short pitch stuff from Ahmad Danial. This was probably the shot of the session. Faraz playing a beautiful stroke, and then Saad Khan in control, hitting down the ground. Bit of luck here and there. More runs down the ground for the little left-hander, and these two saw the session through for their side. And this game is very, very interestingly poised. 188 plays 305, and now Sindh 84 for 2 second time around. They trail by 33 runs with 8 wickets in hand, and we expect to see some more wonderful action in the afternoon session. Everyone will take a breather, and it's time for lunch. We'll be right back with the afternoon session in just about 35 minutes. Just
खुशामदीद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से। क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी छठे राउंड का मैच, सिंध बमुकाबला सेंट्रल पंजाब। तीसरे दिन का दूसरा सेशन और ये मैच बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मरहले में इस वक्त दाखिल हो चुका है। सिंध ने अच्छी फाइट की। खाने के वक्फे से पहले 2 विकेटें जरूर मिली सेंट्रल पंजाब को। एक अपॉर्चुनिटी जाया भी हुई, लेकिन साद खान और फराज ने एक बहुत ही शानदार पार्टनरशिप की और अपनी टीम को ये उम्मीद दिलाई है कि अगर इस सेशन को वो अपने नाम करते हैं तो मैच में उनकी वापसी हो जाएगी, क्योंकि विकेट पे कुछ ना कुछ बॉल ऊपर नीचे रहना शुरू हुआ है। थोड़ी ड्राई है, कुछ क्रैक्स भी हैं। प्ले की कॉल है और 2 स्लिप और गली के साथ मोहम्मद अली। ग्लव्स पे लगा बॉल और कमेंट्री बॉक्स में खुशामदीद कहेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर ओपनिंग बैट्समैन, टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन यासिर हमीद। शुक्रिया फैसल, होप यू आर फाइन। और बल्कि माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं आप, फ्रेश लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया यासिर। और जैसे मैं कह रहा था कि आप ये रिप्ले देखिए फिर बात करते हैं। जी हाँ, पहला बॉल था पीछे किया और थोड़ा सा ज़ाहिर बात है अब लंच के बाद थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। सिंध की टीम को थोड़े से रन्सों की तरफ भी देखना चाहिए और एक अच्छा शॉट मिडल किया, मिडल ऑफ द बैट, 3 रन्स बन जाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सीधे बैट से खेले ये शॉट। जो बात आप कह रहे थे कि रन्सों के लिए जाना चाहिए, साद की इंटेंट काफी पॉजिटिव रही है। ऑन ड्राइव पसंद करते हैं, इस मरतबा बॉल ज्यादा अंदरूनी किनारे की जानिब लगा, उस तरह मिडल नहीं हुआ, लेकिन वेट अच्छा था, शॉट में आया वेट इनका और वहीं से उनको ये टाइमिंग मिली, 3 रन का इजाफा। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये कि गैप में जाएगा ये बॉल, उन्होंने सीधा खेला था, लेकिन वो ऐसा टाइम हुआ, ऐसा एंगल से लगा बल्ले को कि वो गैप में गया है शॉट। अच्छा बॉल। यासिर, जो मैं कह रहा था कि अगर सिंध की टीम ये सेशन अपने नाम करती है और 34 रन का खसारा है अभी, तो क्या आप ये समझते हैं कि अगर सिंध की टीम अच्छा खेलती है और 150-200 की लीड ले जाती है तो चौथी इनिंग्स में कोई ये एक शानदार मैच हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल फैसल, क्योंकि इनके पास एक फैक्टर है जो कि मैं समझता हूँ इस ट्रॉफी में इनके लिए एक्स फैक्टर है, वो है अबरार अहमद। ये मसला जरूर रहा है इस एंड पर, साइड स्क्रीन के सामने मूवमेंट। ये शायद स्कोरर हैं, खाने के वक्फे के बाद चहलकदमी करते हुए। यकीनन डायरेक्टर से उन्हें थोड़ी सी डांट तो जरूर पिटेगी।
वैसे हमारे डायरेक्टर डांट वाले हैं नहीं, बड़े अच्छे इंसान हैं। आपका तो सभी ख्याल रखते हैं यासिर, इसलिए आपको फिर ये वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी बाहर की मूवमेंट है। बैक ऑफ लेंथ स्ट्रेंथ है मोहम्मद अली की। ओवर का इख्तिताम 88 पे 2। आमिर यामीन के लिए बहुत ही शानदार मैच रहा ये। पहली इनिंग में 5 विकेटें और निस सेंचुरी, दूसरी इनिंग में भी 1 विकेट हासिल की है। राउंड द विकेट आ रहे हैं 2 स्लिप और गली के साथ। अच्छा खेले, साथ खूबसूरती से टाइम किया बॉल को, ज्यादा कुव्वत सर्फ नहीं की। कासिम अकरम से तीसरा रन लेना मुश्किल है। जी अच्छी पॉजिटिव बैटिंग कर रहे हैं साथ, और दैट्स द वे, इसी तरह खेलना चाहिए। जो बॉल लूज डिलीवरी उसको ज़रूर, और इंटेंट जो है ना इस तरह की रखेंगे तो रन्स बनेंगे। बेहतर है वैसे। साथ को हमने देखा पिछले सीजन में, ये बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं और अच्छे रन्स किए थे पिछले सीजन में। इस सीजन में हमने देखा है कि इनको स्टार्ट्स जरूर मिले हैं। अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं। यहाँ की डिमांड पिंडी स्टेडियम की पिच की थोड़ी सी मुख्तलिफ रही है, सेट होकर आउट होते रहे हैं। आज इनके पास मौका है क्योंकि सऊद शकील नहीं है, जाहिर है तजर्बेकार खिलाड़ी हैं, टीम के कप्तान। जिम्मेदारी इन पे आई है, इनको नंबर 3 पर भेजा गया है। ये इनकी खासियत है, बिजी प्लेयर हैं, स्कोरबोर्ड चलाते हैं और यहां पे डायरेक्ट हिट पे शायद उन्हें मुश्किल पड़ सकती थी, लेकिन थ्रो ऑफ बैलेंस थी, विकेटों से दूर। ये यकीनी तौर पे आउट होते अगर विकेटों को हिट हो जाता बॉल। इसीलिए कहते हैं मिस फील्ड पे कभी रन नहीं लेना चाहिए, और कासिम अकरम जैसे फील्डर अगर हों तो आउट थे, लेकिन थ्रो में बैलेंस नहीं था और ज़्यादा करीबी नहीं थी, मामला करीबी नहीं था। इस तरह की गलती की गुंजाइश है नहीं सिंध की टीम के पास। शायद अब एक ऐसी स्टेज आ गई है जब ये बैटर्स इतने सेट हैं और गेंद भी 30 ओवर पुरानी है, यहाँ पे अब ड्राइव लग सकते हैं ऑन दी अप। हमने देखा है सेट बैट्समैनों को ये करते हुए, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन होनी चाहिए फुटवर्क में और शॉट सिलेक्शन में। जैसा कहा सिंध की टीम ये अफोर्ड कर नहीं सकती, उनकी बैटिंग इतनी ज्यादा लंबी उस तरह है नहीं इस मैच में। सरफराज और फवाद आलम है, 5वें पर फवाद, 6ठे पर सरफराज और उसके बाद बॉलर्स और ऑलराउंडर्स। या अगर ये पार्टनरशिप आगे बढ़ती है तो फिर सिंध की टीम इस मैच में मौजूद रह सकती है।
अदरवाइज एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस है अभी भी सेंट्रल पंजाब के लिए, अगर वो विकेट्स लें तो मैच को इजीली अपने नाम कर सकते हैं। पहले अली से बात हो रही थी यासिर, जो पिछले 2 राउंड्स हुए जो सिंध की टीम ने जीते, तो पहली इनिंग्स पे सिंध की टीम को लगभग इतनी ही लीड मिली दोनों मैचों में, और एक मैच में 4 रन का टारगेट मिला और एक में 70 रन का। दोनों मैच 10 विकेटों से जीते सिंध ने। यहाँ पे यही मौका अब सेंट्रल पंजाब के पास है कि अगर 170-180 के अंदर ये सिंध को आउट कर लें तो एक आसान टारगेट उन्हें मिल सकता है, लेकिन अभी मज़ाहमत जारी है 89 पे। रिजर्व प्लेयर्स के लिए यही मौका है कि कुछ वो अपनी ट्रेनिंग कर लें। लंच में हमने देखा कि ये बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे उमैद और हुनैन, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, शायद कूल डाउन कर रहे हैं। ज्यादा शॉट नहीं था, ऊंचा लगा बॉल, पहली नजर में तो यही देखने में आया। अच्छा फैसला है आसिफ याकूब का, कुछ तकलीफ में है साद खान। देखना होगा कि लेंथ थी इस शॉट के लिए। जी नहीं, ये इस शॉट की तो लेंथ नहीं थी। एक्सपेक्ट करे तो ऊपर आएगा बॉल, अगर ऊपर भी आता तो ये शॉट ऑन नहीं थी। बहुत जल्दी कमिट कर गए, पुल शॉट ऊपर जा रहा था काफ़ी, बट ये थोड़ा हर्टिंग एरिया में लगा। कप्तान साद के पास वो लग्जरी नहीं है जो सिंध के पास है अबरार की सूरत में, जहां से वो एक एंड से स्पिन अटैक करते हैं और दूसरे एंड से अपने सीमर्स को रोटेट करते हैं। सीमर्स ज़्यादा फ्रेश रहते हैं। हालांकि इनके पास 4 फास्ट बॉलर्स हैं और खुद साद भी थोड़ी सी मीडियम पेस कर लेते हैं, लेकिन स्पिन की शक्ल में सिर्फ कासिम अकरम ही हैं। खाने के वक्फे से पहले एक स्पेल कासिम अकरम ने किया और परेशान भी किया दोनों लेफ्ट हैंडर्स को। मेरे ख्याल से जिस तरह बॉल हो रहा है तो फास्ट बॉलर्स के लिए तो पिच ऐसी है कि बहुत ही अच्छी पिच है, तो शायद कप्तान उनके यही सोच रहे हैं कि इट्स मैटर ऑफ 1 विकेट जो कि वो हासिल कर लें, तो उसके बाद जो है एक ही रन बन पाएगा। कप्तान के लिए हमेशा मुश्किल होता है जब आपके पास 4 फास्ट बॉलर हों, इसमें आपको ये बैलेंस रखना कि बॉलर्स को इवन शेयर मिले और ज़्यादा ओवरलोड ना हो। लेकिन फिर यहाँ आता है कि ज़रूर आप देखते हैं कि कौन सा बॉलर आपका ज़्यादा पोटेंट लग रहा है, ज़्यादा पेनिट्रेटिव लग रहा है एक पर्टिकुलर सेशन में या एक पर्टिकुलर दिन में। और बिलाशुबा आमिर यामीन इस बॉलिंग लाइनअप में ऐसे लगे कि जब भी उन्होंने बॉल किया ऐसा लगता है कि वो विकेट हासिल करने के करीब हैं। अच्छा कैरी और बाउंस है इस तीसरे दिन की पिच में यासिर। जी हाँ बिल्कुल, और ये जो कैरी और बाउंस है ये थ्रू आउट मैच में रहेगा, क्योंकि आज तीसरा दिन है, आफ्टर लंच पोस्ट लंच सेशन है, और अभी तक ये बाउंस और जो कैरी है वो जारी है। मेरे ख्याल से ये चलता रहेगा लास्ट डे तक। तो कोई भी एक अच्छा स्पेल किसी भी फास्ट बॉलर का हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा।
जो टाइम बनता है बैट्समैन का उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें इस पिच पे। 90 पर 2। सिर्फ खाने का वक्फा खत्म हुए 15 मिनट हुए हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूट आ गए हैं और फिर खेल में गैर जरूरी वक्फा हो गया है। पहले अंपायर इस चीज की इजाजत नहीं दिया करते थे, लेकिन अब इसी तरह के जो वक्फे होते हैं तो खेल के आखिर में आप देखते हैं कि काफी ज्यादा ओवर्स कम होते हैं दिन में, काफी खेल जाया होता है इस तरह के गैर जरूरी वक्फों से। और कप्तान से बात करते हुए, और अभी भी ऐसा लगता है कोई लंबी बातचीत चल रही है। साइड स्क्रीन का भी कोई मसला हो रहा है। अब ये मसला हल किया खुद प्लेयर्स नहीं जाकर। लगता है कि ग्राउंड स्टाफ को उस एंड पे जाना पड़ेगा अगर इस साइड स्क्रीन को मूव करना है बार बार। ऐसा आपको क्लब क्रिकेट में देखने को मिलता है, खासतौर पर इंग्लैंड में जब आप लीग क्रिकेट खेलते हैं तो प्लेयर्स खुद ही ये ड्यूटीज देते हैं। ये एक टेस्ट सेंटर है यहाँ ग्राउंड पे। स्टाफ कहाँ है? ग्राउंड स्टाफ जी बिल्कुल, देखा है कि ग्राउंड स्टाफ जो है वो जो मीडिया सेंटर एंड है यहाँ पे मौजूद रहते हैं ज्यादातर। उस एंड पर कोई भी मेंबर नहीं था और आबिद अली को जो है क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने ये ड्यूटी भी सरअंजाम दी। और गैर जरूरी वक्फे के बाद खेल अब दोबारा शुरू हुआ चाहता है। यासिर, आप ये ना पूछ लीजिएगा कि जरूरी वक्फा क्या होता है। आपको नहीं पता जरूरी वक्फा कौन सा होता है? शाह फैसल। लंच, टी, विकेट, ड्रिंक्स, बाउंड्री। इसका मतलब है कि आज जो है आप फुली एक्टिव हैं। क्या मतलब? थोड़ा सा टेम्पो जो है वो स्लो हो रहा है। जो बैट्समैन है दोनों टाइम ले रहे हैं लंच के बाद। थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ रही है सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स के लिए। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोनों, थका रहे हैं बॉलर्स को। खाने के वक्फे के बाद के सेशन में कल भी हमने देखा था कि जो बैटर्स हैं उन्होंने डोमिनेट किया। तो मौसम ठंडा हुआ है तो जो मॉर्निंग सेशन था कल भी उमर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, अच्छा खासा बॉल सीम हो रहा था।
ताकि जो ओवरनाइट जो मॉइस्चर जमा होता है वो ठंडे मौसम की वजह से वो पहले सेशन में ज़रूर हेल्प करता है, क्योंकि विकेट पे घास तो मौजूद है, अंडरनीथ तो सरफेस ड्राई होता है। और आफ्टरनून सेशन में लगता है कि बैटिंग कदरे आसान हो जाती है। स्कोरबोर्ड का अपना ही एक प्रेशर होता है और सिंध की टीम पे अभी है ये प्रेशर। अच्छा, काफ़ी वाइटल लीड ली सेंट्रल पंजाब की टीम ने कल लंच के बाद आके आमिर यामीन ने और कासिम अकरम ने इस तरह की बैटिंग की, तो सारा प्रेशर जो है वो कन्वर्ट कर दिया उन्होंने सिंध पे। अब उससे निकलने के लिए, वो डैमेज से निकलने के लिए अभी तक वो डैमेज कंट्रोल सिचुएशन में है सिंध की टीम। 27 रन्स अभी भी ट्रेल में है। अच्छी बॉलिंग आमिर यामीन की। चार बॉलर्स की हमने बात की सेंट्रल पंजाब के, निस्बतन पुरानी बॉल से यासिर आपके ख्याल में ज़्यादा इफेक्टिव कौन से बॉलर साबित हो सकते हैं इन चार में से? देखिए, जो मैन इन पिक्चर हैं मोहम्मद अली, इनको हमने देखा है पुराने बॉल से बड़े अच्छे बॉल करते हैं और इन्होंने यहाँ पे जो लास्ट मैच था उसमें बड़ी अच्छे स्पेल्स भी किए थे। और अहमद दानियाल, उनके पास पेस है, तो एक प्लान जो है वो बनाना पड़ेगा सेंट्रल पंजाब को बाउंसर्स का, क्योंकि बॉल जो है पुराना होना शुरू हो गया है। जो स्विंग है वो अभी उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह नया बॉल हो रहा था। रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया फराज ने। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 90 पे 2। अच्छा ग्राफ्ट कर रहे हैं साद खान, 43 रन बनाए हैं। फराज भी अच्छा साथ दे रहे हैं। दोनों स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, इनके लिए अपने शॉट रोकने मुश्किल हैं, लेकिन रन्स की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यासिर पिछले ओवर में बात कर रहे थे, जो मूवमेंट है वो कम हुई है निस्बतन, लेकिन अब जो बैट्समैनों के लिए मसाइल दरपेश हैं वो ये बाउंस में जो वेरिएशन है। ये बॉल भी नीचे रहा, बिल्कुल टू एंड पे लगा बल्ले के। जी हाँ, बिल्कुल ये नज़र आएगी हमें, ये चीज़ बढ़ती नज़र आएगी, क्योंकि अभी तीसरा दिन चल रहा है, इसके बाद चौथा दिन है, तो जो पिच में जो बाउंस की वेरिएशन है ये बढ़ती रहेगी। थोड़े से अच्छे स्ट्रोक्स खेलने चाहिए इनको, ताकि जो प्रेशर है वो इसको बरकरार रखें और अपने लिए टाइम को इजी करें। बॉल हवा में और ड्रॉप, गली में बॉल गई और मोहम्मद अली फुलर लेंथ पर फिर उन्होंने चैलेंज किया। अजहर अली थे, डाइव लगाई, गेंद दोनों हाथों से टकराई लेकिन कैच नहीं थाम सके। बहुत अच्छी ट्राई है अजहर अली की, राइट साइड पे काफ़ी अवे था उनसे, लेकिन होल्ड नहीं कर पाए बॉल को। ट्राई अच्छी थी, एंटिसिपेट अच्छा था, टाइमिंग ठीक थी, लेकिन बॉल को ग्रिप नहीं कर पाए। एक हाथ से लेने की कोशिश की, अगर दोनों हाथ जाते तो फिर शायद बॉल स्टक हो जाता हाथों में, लेकिन ट्राई अच्छी थी। पहले नजर में लगा कि शायद दोनों हाथों से गए, लेकिन यासिर ने सही कहा, एक हाथ। दोनों बैट्समैन जो क्रीज पर मौजूद हैं अब खुशकिस्मती का फायदा उठाते हुए क्रीज पर मौजूद हैं। चांस 7 को पहले मिला था। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं सेंट्रल पंजाब ने। ये वो लेंथ थी आगे जहां पर थोड़ा सा बॉडी से आगे खेले, पुश किया गेंद को हार्ड हैंड्स के साथ।
और अजहर अली कैच नहीं थाम सके, सीधे हाथ पे उनके लगा बॉल। मुश्किल कैच जरूर था, लेकिन मैच जीतने के लिए फिर ऐसे कैचेस आपको करने पड़ते हैं। सेंट्रल पंजाब ने इस टूर्नामेंट में सफर किया है यहाँ रावलपिंडी में, जब भी वो खेले अपनी फील्डिंग की बदौलत। तो याद होगा कि दूसरे राउंड में उनको टीम को बोल्ड आउट करना था, तो 7 खिलाड़ियों को वो आउट कर पाए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 3 या 4 कैचेस छोड़े और वो विक्ट्री को क्लोज नहीं कर सके। और पूरे सीजन में अभी तक कोई विक्ट्री नहीं है सेंट्रल पंजाब की। या ये एक मेन रीज़न है आपने जिसकी बात की, कैचेस ही वो कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस। तो इसी वजह से कहते हैं जब कैचेस आप पकड़ते हो तो मैचेस जीतते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नॉट विनिंग। लूज शॉट फराज का, बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, बॉल आया नहीं ऊपर। लेकिन देखें ये शॉट जब भी खेलता है बैट्समैन तो उसका जो बैक फुट है वो बॉल की लाइन में आना चाहिए। फुट मूवमेंट जो थी शॉट में नहीं थी, इसी वजह से शॉट कनेक्ट नहीं कर पाए। और स्लिप कैचिंग की आपने बात की, तो फहीम अशरफ ने 5 कैचेस पकड़े हैं इस मैच में। इसका मतलब ये है कि उनके अलावा जो सेंट्रल पंजाब की जो कैचिंग का प्रॉब्लम था वो पहले मैच से लेके अभी तक हल हुआ नहीं। ये अच्छा छोड़ा, इस दफा बॉल ज्यादा ऊपर भी आया, अच्छा जज किया इसको फराज ने। 90 पर 2। अच्छा प्रेशर बिल्ड कर लिया है सेंट्रल पंजाब ने इस आखिरी 10-15 मिनट में। रन्स नहीं दे रहे, अभी भी 27 रन पीछे हैं। और ये 27 रन जितनी जल्दी सिंध बनाए बगैर किसी नुकसान के, उसके बाद एकदम से आप देखेंगे कि प्रेशर थोड़ा सा शिफ्ट होना शुरू होगा सेंट्रल पंजाब पर भी। अबरार की शक्ल में जरूर एक्स फैक्टर है सिंध के पास। अगर वो एक अच्छा टोटल बनाने में कामयाब हो गए तो ये चौथी इनिंग्स में बहुत दिलचस्प मैच हो सकता है। जी आज पूरा दिन खेलना सिंध के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके बाद ही एक टारगेट सेट कर सकती है सिंध, अच्छा टारगेट। उसके लिए ये वाला सेशन और फिर उसके बाद आखिरी सेशन, क्योंकि ये टेस्ट जो है वो जारी रहेगा बॉलर्स की तरफ से। लेकिन एक जो इनके पास स्पिनर नहीं है, अजहर अली, जो कि आखिरी कैच इनसे ड्रॉप हुआ है, दूर था लेकिन अच्छी ट्राई होना चाहिए था। अच्छा शॉट, 7 का इस बार गैप हासिल करने में कामयाब हुए और 2 रन हासिल किए। 7 का ये बहुत ही फेवरेट शॉट है, ऑन ड्राइव और फ्लिक। और ये भी देखिए, अगर बॉल की लाइन देखेंगे दूसरे एंगल से तो ऑफ स्टंप पे थी, अलबत्ता यहाँ फील्डिंग अच्छी हो सकती थी, ये रन बचाए जा सकते थे। तैयब ताहिर थे फील्डर। साथ ने अपने शौक की खातिर अपनी विकेट भी गंवाई है। ये फ्लिक मारते हैं विकेटों के बीच में से। पिछले सेशन में 1-2 ड्राइव्स उन्होंने खेले सीधे बल्ले के साथ, जो कि ज्यादा बेहतर है। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा स्क्वायर खेलने चले जाते हैं तो उनको मुश्किल हो सकती है। ये देखिए, अगर इसकी लाइन आप चेक करें बॉल की, तो मिडल लेग थी, ये तो एंगल उनके फेवर में जा रहा था। हमने इनको ऑफ स्टंप से भी फ्लिक खेलते देखा है। अच्छा बैलेंस था इस मौके पर उनका। स्कोरबोर्ड चलाने वाले बैट्समैन हैं साद।
छकलाइयों का इस्तेमाल अली, बुलेट आर्म है इनका, इस पर चांस नहीं लेंगे। 1 रन का इजाफा। फ्लैशी स्ट्रोक था, खुशकिस्मत रहे। एक और लूज शॉट, 93 पे 2। Saad Khan has played really well for his 47 runs now. He's shown that he can bat on situations like these. They were not easy conditions when he came to bat. They lost both openers, Umar bin Yusuf and Saim Ayub, and since then these two youngsters, these two left-handers, they've done an excellent job for Sindh side. We can say that they're just making a comeback in this game. They were way behind when the day started, but now they will be much comfortable. They just trailed by 23 runs. They've got 8 wickets in hands. They both look very comfortable. I've got Kunamal Asif alongside me. Kunamal, a very good afternoon. Yes, good afternoon, ladies and gentlemen. It's a very good batting effort from Faraz and Saad. Both they're playing nicely, especially if you talk about Saad. He came up with a plan, and we were discussing that he is a very good batter, but already got a couple of hundreds as well. The average is really good, 40 in domestic cricket. I'm talking about Saad especially. So it's a really good effort from both of the sides. Yeah, they've left well. This is the change that I'm seeing in this partnership, both Faraz and Saad. I think early on in the last 4 games that we've seen, they've been flashy outside the off stump, but they've changed. They've managed these conditions well. They've come in with a purpose. They look determined to score runs. They look determined to make a comeback in this game. They've done that, half of them. Well, he's still recovering from this excellent spell of bowling, batting. It's never easy at this age. Solid. This partnership is looking really good. Well, if you talk about the point of view of Sindh, 31 for 2. They've dropped a couple of catches. You talk about Abdullah Shafiq, and Faraz got a chance there. And then Azhar Ali dropped a catch, and I must tell you that if these 2 catches could have taken from Azhar and Abdullah, situation could have different round. Yeah, whoever said
catches win matches wasn't wrong at all, because it's so important. This one was the first one. That was Abdullah Shafiq in second slip. Then Faraz facing Muhammad Ali. Both difficult ones. This one was a little tougher one for Azhar Ali, diving towards his right. I'll give the margin, but not to somebody like Azhar Ali, so experienced. But Abdullah Shafiq, that was a simpler one. He should have taken it. And as you said, the situation would have been different by now had those two catches been taken. It's all part of the game. We move on. We'll live on. Outside the off stump again. That's what he tries to do every now and then. He tries to slice that one. It's 93 for 2. Well, if you talk about bowling efforts, 6 bowlers have been used now, and only Amir Yameen and Fahim Ashraf, they were successful. Couple of drop catches there, and whenever you talk about fielding, I'm pretty much strict in that field here. My point of view that if you are not taking good catches, that you can't win matches, of course. And the catches, if you talk about that, the Azhar Ali were saying that it was quite difficult. But you'd have to take difficult catches in that scenario to break the partnerships. And whenever you drop catches whatsoever, pressure, of course, it would be back on the bowler and the fielding side. Yeah, absolutely. You make a good point. You got to take your chances at this level. They don't come easy, especially on a pitch like this. It's tough work for the bowlers. You need to take your chances, every bit of it. And you would have to convert half chances into full chances, dear. It's all about your fitness. It's all about your confidence. It's all about your, enthusiasm. And that's why I talk about the legendary fielders in the slip. I was talking yesterday as well, Ricky Ponting, even in Zawamulak. Even Imran Butt, nowadays, he's a very good fielder in the slips. So I'm not happy with this effort from Azhar Ali and Abdullah Shafiq. I'm sure Mohammad Saad also will not be happy. Other than you. It's so important to take those chances, definitely. That's a no ball there by Amir Yameen. It's been a trouble for central bowlers. And for Sindh also, we saw Ghulam Mudassir ball a few no balls in this match. Nice and easy. Not much of a jump. Tight one, not the first one. Well, what can we do? Yeah, talking about the slip fielders. Remember this one South African, Brian McMillan, the all-round cricketer? He was a fantastic slip man. Fantastic. Big hands. Yes, it was. And I do remember some flying catches in the slip from Ricky Ponting. Honestly, stunning efforts. And being youngster, I'm talking about myself. And all the youngsters, they should learn from the legends like him. You're calling yourself a youngster. Wonderful. You're just 1 year younger than me. Younger from me. Remember that? And I never call myself a youngster. Never. Oh, that's nicely sliced away. That is beautiful. That is a fantastic 50 by this fantastic young player. Saad has played a wonderful inning at a time when the team needed it. He has delivered. And I really hope and wish that he continues this way and carries on to get 100, because he has played that well. Stunning knock from Saad.
nicely cuts and cuts. And it was a very good effort from Saad. And we were talking about earlier that Saad would have to concentrate on the batting. And if Saad plays a good inning and a long inning for the Sindh, it won't be only helpful for the Sindh, but the Saad as well. So this is the time for the youngster to show up their talent. A timely 50. Nice and solid. We've seen this, we've witnessed this, Kunamal, in this ground, that the second session, the session after lunch, it's the most easiest for the batters because the ball relatively gets old, the ball is coming nicely onto the bat, it's good for the short play also. So this is a good time for these two, Saad and Faraz. If they don't play a wrong shot, if they don't get excited, if they play every ball on merit, there are runs available. Yes, now they're just 19 runs behind. So good effort from both of these batters. The way they are playing, got a couple of chances, but now they're in good position. Superb inning by this superb youngster, Saad Khan. 50 of 102. It's not about the runs, it's the time that he got runs at. At the time when Sindh needed a partnership, he has delivered some quality shots. These length deliveries is dealt with them with some authority. This one driven square. Again a shorter one, some luck also going his way. And those punches off the back foot, I think he looks very elegant playing those shots. And whenever the ball is pitched up, he's driven them through. It's been a fantastic inning. Wonderful. Good boy. Yes, this is his 9th first-class 50. Excellent. Lovely to watch. And now they're in good position after losing a couple of early wickets. Saad Khan. And now there's a good chance for them because they're out of danger. They could make a good total. Faim Ashraf down the track. Nicely driven. This time it's Faraz. Will he get... Oh no, that's well done. Well done by the captain himself, Mohammad Saad. It's a good effort. Well, it's an over-pitch delivery and nicely timed by Faraz. There was a long chase for Saad. A good sprint from him, and in the end, saved at least one run. Squared him up a little. That's where he needs to be very careful, Saad. Well, good length this time. Kept low. So we have talked earlier as well, whenever it is pitching towards on the right area, which is called the good length area, we have observed some cracks there. Could be really helpful for the fast bowlers, Ali. Oh, good call by Faraz. Good call by Faraz. Probably realized it pretty quickly that there was run available. It's a leg by though, but he's done well. It ran well. Sindh is in good position now. It was a call, yes. A slight distraction, but in the end, both of the batters, they were comfortable. Yeah, one thing that these two batters have done right today is that they're not looking to play towards onside. They're not playing those flick shots or cross-batted shots. They're looking to play it through the lines with straight bat. That's been the difference in this inning, and that's why they're scoring runs, both Faraz and Saad. Yeah, look at that. Straight bat. That's where he's looking to hit. That is the right way of playing. He's playing it late. Now they've got that confidence that they can score runs.
Earlier we saw that anything that is pitched on leg side or even the middle, they would look to play towards onside. That is probably not the wisest thing to do on a pitch like this. But this inning, this partnership, they've learned and they've done well. The trail is just 15 runs. Amazing. Nicely driven, firmly driven straight to the fielder though. Well, it was almost a Yorker. He tried this time, and when you were talking about when a batter is concentrating to play in V, especially in a longer format, a 4-day, 5-day match, I think then the temperament is the key. And I appreciate that both of the batters, they're showing this. Don't fetch it. Don't fetch it from outside the off stump. Let it go. That's where you need to learn. Yep, that's what it happened after pitching. It's 102 for 2. We did saw Yasir Hamid speak to Faraz in the break yesterday and the game before. I think this is what he was referring him. Just try to play with the straight bat. And it has worked for Faraz. So well done, Yasir Hamid. Oh, don't do that. That is sloppy again. That is really sloppy by the wicketkeeper. He's been struggling. This is not the first time that we are seeing this. He's been struggling big time behind the stumps. Another bye is given. Easy runs given. Central Punjab is losing the grip. Yes, he didn't keep his eyes till the last time on the ball. And but sometimes he was very good collecting the ball behind the stumps. It's been a struggle for the wicket-keepers this season. Really, we've been talking about it. We've been talking about the makeshift openers. I'm really never a big fan of this because wicket-keeping as a specialist job should be given to a specialist. All these makeshift wicket-keepers who can bat, the batters who can wicket-keep rather. It's the other way around. It's not that the wicket-keepers can bat, it's the batters who can wicket-keep. We saw Ikhlaq did it in National T20 for Central Punjab. Umar Sadiq is doing for Southern Punjab. KB has got Rehan Afridi. He's really good behind the stumps. It really makes a difference, a real difference to have a good wicketkeeper behind the stumps, because as a bowler you feel confident that you've got a best man behind the stumps. Central Punjab has got a big issue finding a wicketkeeper. I'm just amazed. It's such a huge region. There are so many cities under Central Punjab. And they cannot find one proper wicketkeeper. Nothing taking away from the abilities of Ali Shan. I'm not being critical on him. But he still is still not a regular wicketkeeper. He doesn't seem to have that technique of a regular wicketkeeper. You need to have a specialist. Somebody like Adnan Akmal, who's in Central's camp, is not there. They're using a makeshift opener. That surprises me, Kunamal. Well, this time I'm with you, dear. Rightly said that, a specialist person for the specialist job. And when we talk about that, I heard this from the former Test captain Rashid Latif as well, that he came up with the same theory that if you're a wicketkeeper, you must be a specialist wicketkeeper. To talk about Kumara Sangakkara, talk about Adam Gilchrist, yes, both of them were the good batters. But they were the special keepers as well. It makes a huge difference. Huge difference. Some aggression from Amir, but this is showing his desperation as well.
They're all right at the moment. No need to be desperate at the moment. But a bit of banter is fine. Here we're talking about the wicketkeepers. The latest example of having a specialist wicketkeeper behind the stumps is, remember, in the game against Zimbabwe that Pakistan was playing, that stumping of Shan Masood. That was a fantastic work. That was such quick hands, some nice glove work. Imagine if they had a irregular or a non-regular wicketkeeper behind the stumps. That would have changed the course of the game. That one decision, that one stumping of Shan Masood changed the game. Ah, fantastic shot. Down the ground, full face of the bat, magnificent. I'm absolutely loving this inning from Saad. Yes, glorious straight drive. Again, over pitching and nicely timed. Right out of the center of the bat. Really good batting. $110 for 2. We'll have that debate again about the wicketkeepers, by the way, because it hurts me. It really does. Central Punjab, almost no, I would say they lost their place in National T20 because they didn't have a regular wicketkeeper. Ikhlaq, nothing taking away from his abilities, from his passion about the game. And also, what this extra pressure does is it affects their batting also. Remember what happened to Omar Akmal? I think that was the prime example of not to make a batter a wicketkeeper, because it hurts both the team and the individual himself. Because you're not 100% fit for that. Your muscles, there are different muscles used for wicketkeeping, and then you have to bat also. And if you drop a if you drop a catch, it just shatters your confidence also. Again, wonderful. That is excellent batting. This time it's Faraz. Down the ground again. That is where the change is. They're just looking to play straight. Superb. It's a stunning straight drive. Again, over pitching. Nicely timed. Good balance from Faraz and lovely to watch. Good batting. It's just amazing, this partnership. While we talk about wicketkeepers, the trail is just 3 runs. It's just amazing. At one point, we were thinking that Sindh might bundle out today. But they're not. They're in with a purpose. And let me tell you, Konumal, if they can get to that 150 or 200 runs lead with the Brar and Zahid Namood and a 4th day pitch, anything can happen. Bouncer. That's a typical fast bowler's reply. So if Central Punjab goes on to lose this game, or even if a draw is a lose for them, they'll be so disappointed. They're just searching a victory in this season so far. And smiles again in the dressing room of Sindh. Bit of sigh of relief now. No smile on Sarfaraz's face. It's been months. I haven't seen him smile. I hate it. Another one. Well negotiated by Faraz. Because he's such a lovely character, Sarfaraz Ahmed. We've been talking about him. Look, he's serious. I don't like it. We like him talking. We like him chirping. We like him all full of life. He's a good man. I really like him as a character, as a team man, as a captain. He's always been there with the team. He's built up. He's a proper team man. When we talk about him, that's what we think of, talking about Sarfaraz Ahmed. Okay, let's talk about fast bowlers of Central Punjab and the difference between the Sindh and Punjab. Central Punjab. Umar was so typical with his line or length.
didn't take any pressure whatsoever happening and got wickets, breakthrough as well. But here, something is missing here in Central Punjab's bowling. After the delivery, yeah. So I was talking about that they're not just concentrating on the line or length, especially if you see after a couple of, boundaries, Quaid-e-Azam just back on defensive mode, came up with the bounces. So I think you'd have to concentrate on your line or length. This is the key. 1-1-4 for 2. Yeah, you make a good point. I think this is what happens when batters counter-attack you. You got to give the credit to Saad and Faraz. They've handled these seamers very well. They've held on to their onside shots. They've left well. Here's another challenge. Qasim Akram. Let's see how they negotiate him. They're looking to get positive. And that's what Saad does normally. He's always searching for runs. He's that sort of a player. Qasim Akram, another very talented young player. We've got so many talented players coming up. 3 overs for 7 runs. Firmly driven. Lucky that there was Tayyib Tahir available. So these youngsters, Kunamal, Qasim Akram one, Saad alongside Saim Ayub. There's Sharoon for Southern Punjab. There's Mubassir for Northern. These are some exciting youngsters who we really need to look at, who really need to take care of. They're full of talent, skill. Ali Shan, he needs to work on his wicket-keeping skills a little. That's what the learning is. He's not quite a youngster though, but still needs to firmly. Fantastic. Fantastic. That's all I can say. Wonderful. Yes, down the track, couple of steps and found a gap towards extra cover area. Very good shot. Yes, 1, 2, and then driven nicely. It was a flighted delivery and good shot towards extra cover boundary. No, says umpire. No, says umpire. Qasim Akram thought that he's in business. That was going down, maybe. With the angle. Look at that. Give it a bit air. Pitching in middle. It was forward. It was on front foot. You can give the benefit of doubt to the batter that this might go on to miss leg stump. But they got to be very watchful. He doesn't spin the ball much. Most of his deliveries will come into the left-handers. It's 118 for 2. You were asking me about the difference. The man on the rightmost, the one who's sitting, Mohammad Umar, I think he was the difference. Yeah, we're not talking about spinners because Abrar was definitely the difference. But as far as the seamers is concerned, I think Mohammad Umar and his consistency of bowling at one channel over and over and over and over again, that's where the success comes. And as you said, rightly said, the Central Punjab have just pulled up their length a little. Yeah, shorter one. Shorter one, they appealed. Asif Yaqub was not interested at all. Not interested. Yes, it was good shout, but in the end, yeah, it was fine. Look at this again. Yeah, huge difference there's between ball and bat. Yeah, big gap. Good decision. He's a good umpire. Asif Yaqub hardly gets them wrong. Of course, he's a human. He's bound to make errors, but mostly he gets them right.
There are 2 slips available, a fielder at gully. Couple of chances gone down through those. And they've been persisting with those short deliveries. That's the difference. That's the difference between the 2 bowling sides. If you look at Mohammad Umar, Ghulam Mudassir, Mir Hamza, they're the most experienced ones. They played cricket here at Rawalpindi this season. This is their 4th game, so they know which channels to bowl. It's not about knowing where to bowl. It's about bowling consistently. Look at that. This was the real time, that appeal. But nobody actually shouted. Look at Abid Ali. I thought he was calling somebody from outside. But no, he was appealing. Look at his appeal. That's a good one, Ali. I don't know. I don't think so. This is the right idea. They're just persisting with those shorter ones. Because now maybe the pressure is on them. Because they've got the lead now, Sindh side. And they're definitely putting pressure on Central Punjab, realizing that on a 4th day pitch, Zahid Mahmood, Abrar, Mohammad Umar, they'll be difficult to play. Won't be easy. Solid. Very solid. Well, the intent shown from the fast bowlers of Central Punjab, especially Fahim Ashraf, they've already used 6 bowlers. Let me ask you, Ali, why they're not bringing any extra bowler like Mohammad Saad? Why is not coming back to just, try to take a wicket, try to take a breakthrough? Can be a good idea. Just a couple of overs from the medium pacer himself. Ahmed Danial is another option. He's a quicker one, but listen, you got to be consistent. You find the line in it. Amir Yamin also has bowled a longer spell today. That's the big man. That's the main man, I would say. Muhammad Ali, Central Punjab's best bowler, no doubt. And again, look at that. Did you see that straight bat? That is the change in this inning. It's 118 for 2.
58 रन साद खान और फराज अली उनका साथ दे रहे हैं 31 पे 118 पे जा पहुंची है इस वक्त सिंध की टीम। 2 खिलाड़ी आउट। साद ने अब तक अच्छी इनिंग खेली, बिल्टअप किया, प्रेशर सिचुएशन थी, लेकिन जिस वक्त वो आए काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके थे, लेकिन अच्छी स्ट्रोक मेकिंग ग्राउंड के दोनों अतराफ में। पहले ऑन द आप दूसरी तरह कवर्स की जाने, फिर ऑन साइड पे थोड़ा लेट भी अच्छा खेले। तमाम तर कोशिशें बॉलर्स की कि उनको डराएं भी, लेकिन वो जमे रहे और ऑल अलोंग द कारपेट, स्ट्रेट ड्राइव्स, कट, पुल, हर तरह का जब उन्हें आस्क किया गया क्वेश्चन उन्होंने उसका अच्छा रिप्लाई किया। यूँ तमाम तर स्ट्रोक्स हैं जो कि अब तक उन्होंने खेले। वेल प्लेड, अच्छी 50। इससे पहले 29 रन थे इनके पहली इनिंग में और अब तक 188 के जवाब में 305 रन सेंट्रल पंजाब ने बनाए। उसके बाद सिंध इस वक्त 118 पे है, 1 रन की लीड हासिल कर चुकी है सिंध। यकीनी तौर पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है उससे निकल चुके हैं। मेरे साथ कॉम बॉक्स में यासिर हमीद, टेस्ट क्रिकेटर, वेलकम। थैंक यू जास। पीछे हटकर खेलने गए थे और गैप निकालने में कामयाब हुए। खतरनाक थोड़ा सा था लेकिन प्रोडक्टिव रहा। अच्छा शॉट, अच्छी बॉल पे अच्छा शॉट खेले और गैप निकालने में कामयाब हुए। अच्छा टाइम किया, बॉल मैनेज किया। आखिर में बॉल अंदर आया, ऊपर भी आया, लेकिन बहुत अच्छा मैनेज किया उसे। वेल साद का मैक्सिमम हाईएस्ट स्कोर इस सीजन में 44 इसी वेन्यू पे वर्सेस इनफैक्ट सदर्न पंजाब। और अभी भी उनकी एबिलिटीज शो हो रही हैं, झलक रही हैं इस 62 रन में जो कि उन्होंने 119 बॉलों में खेल रखे हैं। इससे पहले 72 रन की इनिंग है इनकी नॉर्दर्न के खिलाफ इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में। तो ओवरऑल सीजन बेहतर है, दूसरा 50 इनफैक्ट इस सीजन का। अच्छा मैनेज कर रहे हैं, अच्छा मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त कासिम है उनकी भी जो सोच है उसको दाद देनी होगी। अच्छी बॉलिंग कासिम की। एरिया ऑफ जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी होता है वहां पे बॉल कर, तेज कर रहे हैं, ट्रैजेक्टरी लो है। इस बार फ्लाइट किया, अच्छा बॉल और इनसाइड एज हुआ और बाउंड्री की तरफ जा रहा है बॉल। 2 रन्स हासिल किए साद ने। इफेक्टिव प्लेयर हैं साद मिडिल ऑर्डर में। रन्स अब आ रहे हैं इनके। ये ओवर थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। कासिम अकरम का क्वेश्चंस पूछ रहे हैं थोड़े। इनवाइट किया, फ्लाइटेड डिलीवरी और 4 रन्स। बहुत ही अच्छा शॉट, अपने हैंड्स को थ्रो किया इस बॉल पे साद ने और पूरे फुल पावर के साथ ये शॉट खेली मिडिल की। ये देखिए आगे गिरा हुआ बॉल और पूरी फोर्स से ये शॉट खेली। बहुत ही अच्छा शॉट, तगड़ा शॉट खेला। साद अच्छी निक में 50 रन के बाद कॉन्फिडेंस मजीद बिल्टअप हुआ। उसकी झलक आप देख रहे हैं उनकी बैटिंग में। काफी फ्रीली आजादाना अपने स्ट्रोक्स खेलते हुए। अच्छी फील्डिंग अहमद की। इसके साथ देखिए निकला जरूर था, अहमद दानियाल ने हाथ रखकर इसको रोका, रोल हुए। अच्छी टेक्निक। ओवर का हुआ इख्तिताम 43 ओवर के बाद 128 पे 2।
गुलाम अली कोच इस वक्त यकीनी तौर पर जिस तरीके से एडवाइसेस दे रहे हैं मीर को, वो तमाम तजुर्बात जो उन्होंने अपने कैरियर में हासिल किए। फराज 31 पे हैं और साथ यकीनी तौर पर अपने बॉलर्स की जो कारकर्दगी है गो के लीड उतर चुकी है। जो अर्लियर ऑन का सेशन था उनकी ये सोच थी कि माइट भी कहीं 3-4 विकेट ले लें, लेकिन फिलहाल अच्छी बैटिंग साथ की और फराज भी उनका अच्छा साथ दे रहे हैं। क्रेडिट देना होगा इन दोनों को, बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई और अपने टीम को एक मुश्किल सिचुएशन से निकाला। रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया फराज ने। कासिम अकरम पॉइंट पे। फराज का इनफैक्ट ये दूसरा मैच है इस क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी सीजन का। पहले में उन्होंने कोई रन नहीं किए यहीं पे बलूचिस्तान के खिलाफ इसी रावलपिंडी के वेन्यू पे, लेकिन इस दफा अच्छा साथ दे रहे हैं साथ का। जी हाँ, गलतियां इस बार नहीं की इस इनिंग्स में सो फार, और अपनी अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं अपने लिमिटेशंस में। यार मेहरबानी। जिस्म से दूर इसको अच्छा निकाला कवर्स की जानिब। पॉइंट के फील्डर से भागते हुए आए, लेकिन अब देखना है, लगता है यही है कि रोक लिया उन्होंने। जैसा कि एयरबॉर्न हुए, बॉल बाउंड्री के बिल्कुल करीब था। अंपायर आसिफ याकूब वर्डिक्ट लेते हुए। जी फर्स्ट इंप्रेशन से यही लगा कि बॉल 4 रन हो गए, लेकिन जब दोबारा उठे हैं वो तो उन्होंने सोचा शायद नहीं लगा, तो ये अब देखना होगा। देखें कासिम अकरम फुल एंड डाइव और नहीं, अच्छी 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 सेव की है, अच्छा सेव कासिम अकरम का, ब्रिलियंट। बहुत ही अच्छे फील्डर हैं, स्प्रिंट बहुत अच्छा है इनका, थ्रो भी बहुत अच्छी है और बड़े क्विक हैं फील्ड में। ओह एक्सीलेंट बॉलिंग, कैसे मिस हो गया ये। फ़हीम अशरफ शायद यकीन ना कर पाए, बहुत ही आला बॉल, एक्सीलेंट डिलीवरी। थोड़ा सा बाहर निकला, क्रीज यूज कर रहे हैं फ़हीम अशरफ, राउंड द स्टंप क्रीज यूज कर रहे हैं, तो एंगल से भी थोड़ा सा बाहर निकला, पढ़ के भी बाहर निकला, अच्छी बॉलिंग। बिल्कुल अच्छी अंदाज में उन्होंने से यासिर बात करते क्रीज यूज करें फ़हीम अशरफ, और राउंड द विकेट बॉल थोड़ा सा सीधा रह रहा है। फ़हीम ये पहला गेम खेल रहे हैं पिंडी में इस क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी सीजन का। ये अच्छा बॉल, एक बार फिर एंगल से बॉल अंदर आ रहा है और पढ़ के सीधा रह रहा है, तो थोड़ा सा इनको मूवमेंट मिल रही है हल्की सी। फ़हीम अशरफ 9 ओवर कर रहे हैं, 21 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया है। अच्छी बैटिंग फराज की, सॉफ्ट हैंड से एक बार फिर 133 पे 2।
वेल कासिम इस कोशिश में है कि थोड़ा ड्राइव खिलवाएं यहाँ पर साथ को। साथ काफ़ी देर से क्रीज पे हैं, वक्त गुजार चुके, उन्हें आइडिया भी हल्का फुल्का हो चुका कि स्पिन और पेस में जो वेरिएशंस हैं उनको किस तरीके से सक कोप करना है। देखिए दूसरी दफ़ा उन्होंने बॉल को थोड़ा सा एयर दिया, कोशिश कर रहे हैं कि ड्राइव करवाएं। जी कासिम अकरम को बॉलिंग में लाना एक अच्छा फैसला है, क्योंकि इन पे ट्राई कर रहे हैं, साथ थोड़ा से उनके जो प्रेशर था वो रिलीज़ हुआ है, साय ऑफ रिलीफ है उनके लिए, और इसमें चांस भी है कि कोई ओवर एम्बिशन शॉट्स खेलें। इस बार ये देखिए बीट हुए इस बॉल पे, और ये मिड विकेट खेलना चाहते थे, बाद में रेक्टिफाई किया कि इसको यूं खेलना चाहिए ऑफ स्टंप पे। जी हाँ, बेहतर लाइन प्रेशर में पहला और दूसरा गेम भी कासिम यहाँ पर खेले, जो कि बलूचिस्तान और सिंध के खिलाफ था। उसमें उन्होंने 3 विकेटें समेटी 2 गेम्स में जो पिंडी में खेले गए। उसके बाद मोमेंटम फैसलाबाद शिफ्ट हुआ इनका, और अभी फिर रावलपिंडी की पिच को अच्छा यूटिलाइज करें। अच्छी एफर्ट साथ की, यकीनी तौर पर रन्स रोके। जी बिल्कुल, कासिम ने अच्छी बॉलिंग की इस बार, अच्छी फील्डिंग साथ की कवर्स में, अच्छा शॉट साथ का ही, और साथ की अच्छी फील्डिंग, साथ स्क्वायर। और ये एक अच्छा चांस है सिंध के लिए, यहाँ पे अगर ये लंबी पार्टनरशिप करते हैं तो अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन में लेके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी मेहनत कर चुके हैं दोनों बैट्समैन, और यकीनी तौर पे ये यहाँ से इनिंग को लंबा लेके जाएंगे। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। फराज 87 रन हाईएस्ट है इनका मुल्तान के वेन्यू पे, सदर्न पंजाब। लेकिन दूसरी जानिब साथ भी ऐसा का अच्छा इनफैक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमने बात की कि जो टफ टाइम था जब ऊपर नीचे 1-2 विकेट गिरे तो उस वक्त संभाला देना टीम को। इस वक्त काफ़ी सहल है, आसानी के साथ बैटिंग कर रहे हैं। और हमने पहले भी बात की जिस वक्त साइम बैट कर रहे थे कि आज वो अच्छे बैटर हैं, अच्छा खेलेंगे, और साथ ही उनका एक अच्छा बॉल पड़ा सरप्राइजिंग और स्लिप में कैच दे बैठे। तो बाज़ औक़ात जो कर्स होता है कमेंटेटर्स वो पड़ जाता है, लेकिन साथ भी खुद भी आ सकते हैं बॉलिंग के लिए, यासर अच्छा ऑप्शन होगा। चार फास्ट बॉलर्स खिला रहे हैं ये। ओ अच्छा बॉल, अंदर से बीट हुए, और कीपर भी बीट हो गए पीछे। अब देखना ही होगा कि ये बायस है या इनसाइड एज है। बायस के 4 रन, अंदर से निकला बॉल, काफी शार्प अंदर आया, लकीर है कि स्टंप्स की तरफ नहीं था, स्टंप्स के ऊपर से निकला ये बॉल, और सरप्राइज किया विकेट कीपर अली शान को। एग्जैक्टली एक कर्व बनाता हुआ बॉल बैट और विकेट कीपर दोनों को
बीट कर गया। एक दफा फिर टारगेट उनका वही है कि शायद बॉल पड़कर अंदर आए, और अच्छे ऑप्शंस हैं कि जिस वक्त आपको जो चीज़ सपोर्टिव लग रही है उसी को अप्लाई करें। लेकिन फराज किस्मत भी मेहरबान, और आहिस्ता आहिस्ता जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है वो यही बता रही है कि लंबी इनिंग की इनकी बारी है या लंबी इनिंग का प्लान करके आए हैं। 22 रन की लीड हो चुकी है और इसको मजीद कैपिटलाइज, क्योंकि आज तीसरा दिन है इस मैच का, कल लास्ट और चौथा मैच, चौथा दिन होगा। यहाँ पे दाद देनी होगी फराज को और साद को, स्पेशली इस पेयर ने क्राइसिस से निकाला सिंध को, और अब 22 रन की लीड पे है। यहाँ से थोड़े से अपने गेयर चेंज करें, फराज की 50 हों, उसके बाद थोड़े रनों के पीछे जाना चाहिए आई गेस, और थोड़ा मोमेंटम बनाएं, थोड़ा ओवर रेट, क्योंकि कल आखिरी दिन है मैच का, और अगर रिजल्ट आना है तो फिर इन दोनों को थोड़ा सा पॉजिटिव खेलना है। बॉडी से दूर, मिडिल नहीं हुआ पूरी तरह, ओवर भी पूरा हुआ फहीम का, 139 पे 2। थोड़ा कर ले। कासिम अकरम कंटिन्यू करें स्पिन पे, इस वक्त सात का जो है वो ज्यादा ट्रस्ट है एक एंड से, और अच्छा ओवर करवाया था उन्होंने पिछला, इसमें काफी ज्यादा बैटर को डिस्टर्ब किया, जहां जहां फ्लाइट दिया वहां पे थोड़ा सा चेस भी किया था साद ने। चार्ज किया इस दफा, कदम निकाले ऑल द वे, 6 रन्स। जी हाँ, बड़ा शॉट, खूबसूरत शॉट सात का। इस इंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव इंटेंट। थोड़े से गेयर चेंज करने पड़ेंगे इनको लीड को बढ़ाने के लिए। अच्छी कोशिश जिसमें कामयाब हुए साद। डाउन द विकेट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बेस्ट एरिया होता है ये किसी भी फॉर्मेट में स्पिनर्स पे। साथ जो कि 134 बॉलों पे 77 रन पे खेल रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से खेले सिंध के लिए आज। इफेक्टिव बैट्समैन। जी हाँ, इस सीजन का हाईएस्ट स्कोर भी कर चुके हैं 77, इससे पहले 72 इनका हाईएस्ट था नॉर्दर्न के खिलाफ फैसलाबाद में उन्होंने किया। इस दफा कवर्स की जानिब निकाले में कामयाब हुए, लेकिन इस वक्त जो पार्टनरशिप है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बहुत मायने रखते हैं, लेकिन जब आप टीम के लिए खेल रहे हो, क्योंकि इससे कल आखिरी दिन है, इससे पहले भी सिंध पिछले दोनों मैचेस 10-10 विकेटों से जीत चुकी है, तो यकीनी तौर पर जो प्लान है इनके वो यही है कि आहिस्ता आहिस्ता से स्कोर करते चले जाएं, लगभग 200-250 की लीड लेकर उसके बाद सेंट्रल टीम को उतारें मैदान में। और माइट बी नो वन नोज कि कल भी एक फाइनल जो है वो डिसीजन मेकिंग डे हो सिंध के लिए। लेग साइड पे इसका इम्पैक्ट था, हाफ शॉट। सिंगल के साथ ओवर का इख्तिताम 147 पे 2।
लंच के बाद लंबी पार्टनरशिप, लंच से पहले से खेल रहे हैं दोनों बैट्समैन और फिर लंच के बाद इन्होंने अपनी रन्सों की रफ्तार को बढ़ाया। ये सेंट्रल पंजाब का बॉलिंग कार्ड, आमिर यामीन ने 1 विकेट ली और 1 विकेट फ़हीम अशरफ ने। 2 खिलाड़ी आउट हैं सिंध के 147 पे। साथ इस वक्त सोच रहे होंगे कि ये पार्टनरशिप जो है ये लंबी चलती जा रही है। 34 रन पे गो के 69 बॉलों में, लेकिन थोड़ा सा वरीड साइन होता है कि जब आप ऊपर नीचे जल्दी जल्दी विकेटें हासिल करें। अहमद दानियाल को लेकर आए, बेहतर ऑप्शन है यासिर इस वक्त। जी हाँ बिल्कुल, शॉर्ट स्पेल्स करवाएं, जगह पे करवाएं, किसी एक बॉलर का स्पेल लग सकता है। यही होता है फॉर डे क्रिकेट में, पार्टनरशिप्स लगती हैं। फिर इसके बाद जो टीम के जो फील्डर्स हैं उनका रोल होता है टीममेट्स का, एक बॉलर को उठाने का और थोड़ा सा लाइवली माहौल रखने का। 28 रन दिए हैं इन्होंने, 7वां ओवर कर रहे हैं अपना। इकानमी थोड़ी सी हाई है क्योंकि ये अटैक करते हैं, स्ट्राइक बॉलर हैं, इसलिए रन्स जो हैं इनको पड़ते हैं। साइड स्क्रीन के साथ कोई इशू है, माइट बी कोई दरवाजे जो है यहाँ पे शीशे के, उसके पीछे शेड है, जो साया है उसका इशू है या सर? ये शेड जो है बिल्कुल बीच में आ रहा है मेरे ख्याल से शायद, लेकिन ये तो फिर भी आएगा, ये सूरज से ताल्लुक है इसका। सीधा खेले, अहमद दानियाल विकेट लेस हैं अपने 7वें ओवर में। और सकता है साथ भी इस, जैसे आपने बात की कि छोटे छोटे स्पेल्स जो हैं वो बेहतर होते हैं बॉलर्स के लिए, तो माइट भी वो इसी ऑप्शंस को देख रहे हो क्या बरसात को थोड़ा सा मीडियम पेस के साथ टेस्ट किया जाए। ऑफ टारगेट जो बलूचिस्तान के खिलाफ साथ में पहला मैच यहाँ पर खेला फर्स्ट क्लास क्रिकेट का इस सीज़न का, उसमें पहली इनिंग में 3 और दूसरी में भी 3 विकेटें हासिल की, लेकिन उसके बाद जो फैसलाबाद में खेला वहाँ पर कोई कामयाबी नहीं ले पाए। तो माइट भी साथ के दिमाग में ये भी हो कि यहाँ पर जो सरफेस है उसका अच्छा यूटिलाइज करते हैं अहमद दानियाल। जो सेकंड इनिंग में इन्हें, क्योंकि ये हार्ड लेंथ पिच करते हैं, और बॉल कर दिया। और एक हार्ड वर्किंग इनिंग्स जो कि इख्तिताम पजीर हुई फराज की। इनसाइड एज, जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था, हार्ड लेंथ हिट करते हैं अहमद दानियाल। हार्ड लेंथ पे बॉल किया, बॉल थोड़ा सा नीचे रहा और अपनी ग्रिप लूज की फराज ने इस शॉट पे। चौंतीस रन स्कोर किए 108 बॉलों पे, 147 पे 3। लगे रहो लगे रहो।
14,139 runs. That is some career. The best of 296. Wonderful. 4,267 50s. That is a wonderful conversion rate also. And that average is ever impressive. 55.46. But he's in because Daniel Ahmed has undone Said Faraz's defense. Dragged it on. The wicket they were searching for. And we all thought that it's going to be Daniel to get a wicket because of his raw pace and aggression. So let's see if things change now for Central. Pace. Off the mark straight away for Quaid-e-Azam. With a couple. Hurry. Makes it easy in the end. The last one to go was Faraz. Played well. It was a crucial inning, but just dragged it on. He just wanted to push again. Not much feet movement, just went on the back foot. Rather, he just kept standing on the same place. Just wanted to play through his hands. Didn't happen. The pace beating him. Sindh lead by 32 runs. So Sindh is in good position and the dugout is calm now. Ghulam Ali, the head coach, captain is sitting with him having word. Neil Johnson there. Saad played really nicely. He's still 78 not out. They may look calm, but deep down they know that they're 32 for 3. Yes, but if you see that the way they have lost their early wickets, they were in trouble. So they came back nicely. Yeah, you can say that. They've recovered well. After the early 2 wickets, the partnership between Saad and Faraz, I think that have really brought them back in this game. So is Muhammad Ali. 11 overs for 25 runs. How well Saad has played. You got to give it to him. He's looked determined. He's looked to score a big one. He's looking good. 78 at the moment. Looking to get 100, the first one of this season. At the time when team needs it. That's the most important part. Yes, and I was looking forward to watch him in the same position with the same confidence. You know, when you are playing for your team, playing your role, you're understanding your role and coming up with the good intentions nicely so far. It's a good leave. Good leave. Just went in out with an angle. Well judged. Just watched it very carefully. Now the question is that how Central Punjab gonna come back in this game. It's a good time to take some good early wickets now. But this man is very solid. It's always a good time to take a wicket. Kunal, when is it a bad time to get a wicket? Yes, I mean that when the other hand, the player like Quaid-e-Azam is still there, and then the Sarfraz. So if you take good wickets early on, you'll be back in the position to win this match. This is what I was talking about. Important inning. He's got 100 this season. But the player of his stature, I think this situation
is tailor-made for him. He's been in these situations many times for Pakistan side also. It's a good one. It's a really good one. Well done by Saad also. Yes, good position. This man is in very good touch. Not out on 78. And Ali Shan is enjoying there. Yeah, he's got this line, the voice he makes while fielding. And he just keeps everyone up, motivated. Oh, nicely done there. That was Qasim Akram. The energy. The young man, Qasim Akram, throwing himself around. Look at that. Great effort. That is a top-class effort. That is what youngsters bring to your side, that energy. It's different. Saad Khan does the same work as Qasim Akram does for Central Punjab. He's a very good fielder also. Again off the back foot. Into the ground. Qasim Akram does well again. Wonderful. He's such a live wire in this field. 3 runs taken. Good running also. Good cricket all round. It's exciting. Yes, good delivery, and they're having word. Is that 149 for 3. Well, 188 was the call, and the response was really nice. 305. Early on, Sindh struggled, but now they got 35 lead. Courtesy, really good innings from Saad Khan. It will be an interesting battle between Quaid-e-Azam and Daniel. We know what is never comfortable against extra pace. Daniel has that. It will be a good battle between the youth and the experience of Quaid-e-Azam. And the situation, the pressure of the situation will definitely be on Quaid-e-Azam because the lead is just 35 runs. Ideally, they would want it to prolong it to 200 at least, to just give themselves a chance tomorrow. Nice and solid. He's played really well. Saad Khan, we've been talking about him all through National T20, of his talent, of his capabilities, his potential. And finally he's delivering. You see this man right in front, Shah Faisal, he's there, right in front of us. He's always poking at us, always saying something, full of words. Just don't like it. Uh-oh, what happened? That's good work by Ali also. So whenever you're talking about a youngster, a fascinating youngster like Saad, the way he's playing, we were talking about his average as well, 40 runs average. And lovely to watch. I've been observing him since morning. He's really calm, collected. Nice.
Good pace, but nicely done by Saad Khan also. One, and he's run equally well. Yes, he makes it easy in the end. Wonderful running. Superb cricket all round. Yes, good running between the wickets. He's on 83 now. Nicely pulled. Really good. Aggressive running and good mutual calls as well. You own them, don't you? Leg side again. Not quite the right line by Daniel. It's just a wasted effort, but well done again by Ali Shan behind the stumps. We've been talking about him, but he adds this value. He's a handy wicketkeeper. I'm not sure, so he's 100%, but he's a handy wicketkeeper, and he just keeps everyone around him active. A motivator, a wicketkeeper. Always looks like Moin Khan. But the problem is, only motivation doesn't work. You have to be a top-class wicketkeeper too. It's 154 for 3. The Sindh flag is in high position. There are 37 runs ahead now. And Ali, as you were talking about that if they're getting a lead of 200, 220, won't be easy for Central Punjab. You know, they got a really good bowling lineup. Omar, Mir Hamza, then they got Abrar, Zahid, and of course Ghulam Mudassir. So I think it won't be easy for Central Punjab to chase down 220 or 230. Oh yes, definitely. If they can get to 200 lead, they've done a good job. They'll be very happy after conceding a 100-run lead. Oh, nice strike. That is fantastic. That is authority. That is superb by Quaid-e-Azam. He's showing the intentions that he's not going to bow down. He's going to go after you. Fantastic. It's an elegant pull shot. Wow. Very nice shots. And there wasn't a fielder there. A very good shot from Quaid-e-Azam. Plenty of experience there. Averaging more than 50 runs in domestic career. He looks good. I tell you, although he's just faced 4 deliveries, but you can just sense, you can just tell his body language. He's in with the purpose, and he needs to see this. He needs to take this Sindh side out of the trouble they are in. 41-run lead. Look at this. He's moving well, and that pull shot or hook shot, it was somewhere in between. That will give him a lot of confidence, because once you hit that shot early on, that definitely gives you a lot of confidence. Not the prettiest, but the effective one. And again, towards third area. This will run down to a boundary. That is an excellent start by an excellent player. Quaid-e-Azam is on a roll. Yes, sir. Consecutive boundaries for Quaid-e-Azam. First a pull or hook shot, and then there's a nice cut shot, a late cut shot. Played into the ground and got the boundary. A bit of width offered and got the punishment. Yeah, that was a sensible thing to do. Never look to play it in the air. Always look to play it down towards the earth, into the ground.
We can just sense it. We can just sense it. If he doesn't play a rash, really rash shot, I think we can be in for a party from Quaid-e-Azam. The team needs it. He himself needs it. With England team touring Pakistan for test matches next month, this can be a very vital inning for his selection. And again, that's through the covers this time, off the back foot. Should look to get at least 3. They do it with some ease. Well, the intent were missing in last couple of matches from Quaid-e-Azam, but the way he started this innings has been stunning so far. It's fun. It's going to be fun, I tell you. As long as Quaid-e-Azam stays, because he's looking to get runs. Remember something what Amir Yamin did when he came to bat for Central Punjab? They were in a trouble. They lost few wickets. And then came Amir Yamin and just started hitting. Can Quaid-e-Azam do the same? Nice. Nice. It's the same sort of situation, and I expect Quaid-e-Azam to deliver. But you know that Quaid-e-Azam doesn't accelerate. He just go with the straight bat. And on the other side, you're talking about Amir Yamin. He's a stroke player. He's a very good in white ball cricket. The way he played yesterday, it was almost he played within the strike rate of 120 or 30. So I think Quaid-e-Azam should play with a straight bat. Two is the call again. Amir Yamin. That's a fantastic running. The completed 2 runs with some ease. The lead is now 48 runs and Saad is on 83. It's 165 for 3. Boys. साथ आ जा 12 मिनट जाओ आ जाओ थैंक यू सर This is the dugout where the coaches staff is sitting with Sindh. Bit relaxing now, smiling. Yes, of course, Ghulam Ali. Danial. One thing must be missing, and I would ask you that right after this delivery. It was there. Just line touch outside the off stump. Quaid-e-Azam, I thought he just might have attempted it, thought of attempting it. If you see the bowling lineup of Central Punjab, Amir Yamin, then Ali, Fahim Ashraf, Saad, Danial Akram. But one thing is that they're missing one specialist spinner, isn't it? Yeah, definitely. Again, pulled towards fine leg, one more run. Yeah, that you make a good point. There is no real threat as a spinner in the Central Punjab side. Usama Mir is there, is sitting outside. But you know, when you come here at Rawalpindi and you are a team, you're a visitor team, you have to decide what to do. You look at the pitch, it's top, green top. And straight away you think there is no point of playing a spinner.
And if you have the luxury of an all-round cricketer like Qasim Akram who can bat and ball also, you persist with that. Unless you have somebody like Abrar Ahmed, a really mystery spinner who needs some assistance from the pitch. And these are ideal situations for him. And he has shown that. 28 wickets already. And this is just the 4th game that he is playing. He's in some form of his life. So that X factor, they do have Osama Mir. But we saw him last, he struggled here on a pitch like this. Although he's tall, he spins the ball also. Bilal Shafat working with Umayyad Asif. They've been a very hard working camp. This new management for Central Punjab, we see them work all day. They really mean business. They really want to do something different for Central Punjab. And that's where it is. That's nicely driven through the gap. Wonderful shot. Saad Khan is playing an inning of his lifetime. Wonderful inning. Well, again, a very good shot from Saad. And again, it was an over-pitch delivery. A stylish square drive from Saad. There was a huge gap, and Azhari was not happy with that. Yes, Azhari wasn't happy there. He's not out on 89 now. And again, superb batting. That is batting of the highest order. Wonderful shot again. Just loving his intent and the way he's delivering for the side. We've been waiting for this inning. And what a time to get it. What a time. This is the best shot of his innings. Over pitch delivery and driven towards extra cover. Look at his balance. Wow. Beautifully driven. Quick hands and nice timing. Ahmed Danial is in trouble. Everyone is. Who's not? Because the way he's dealing with them is just amazing. Just top-class batting. 93 now was just 153 deliveries. We thought that Amir Yamin was the difference, but no. Saad Khan has made the real difference in this inning. They now lead by 59 runs. It's 176 for 3. .59 runs, the lead. That is a good lead at the moment. We got one session to go. And if they can get 100 by the day and by 120, 130, they can finish off the day. Then look to bat till lunch tomorrow. Then give themselves an outside chance to bowling the opponents out. Oh, be careful. Doesn't turn the ball much. Got to be careful. If Qasim Akram is coming up with the same flight. Again, a cut shot. And fielded well. Amir Yamin was there. If Qasim Akram is coming up with the same flight, why he's not taking silly mid on there? Well, you see the intentions? They're looking for runs. They're not looking to block. And when you're looking to score runs, there's no point having it. Every delivery, any delivery they've given air, they've dealt with it. Why I'm saying this? Why you're not thinking out of the box? You're just going straight? This was my question, actually. There has to be logic.
behind, thinking out of the box. Bowling Qasim, bowling Qasim. Well, Quaid-e-Azam is new there. This is the point there. Yeah, but he's scoring at a good rate. He's not looking to block one. Look at that. They're all pushing towards Manoj bhai. long on, mid on, and their intention is to score runs. Ya Qasim. Quaid-e-Azam. And on the other hand, Qasim Akram is not a regular spinner that you can really rely on. That he'll bowl 6 deliveries in one area. He's bound to bowl short deliveries. He's bound to bowl those bad deliveries. And when the team is looking for runs, you need fielders at the right areas. You need to find the balance between attacking and defense. There has to be something in between. It's 178 for 3. Well, if you talk about football, if you talk about helmet, but the static balls, it used. All right. So when you talk about these balls, I've asked to Yasir Hamid as well. Either you use these for fielding training or so, but he said no. We used to go for the batting training. Sharp one. Yeah, I've seen people use golf balls. You know, the little ones, the white ones. I've seen batters practice with that also, because they travel quickly. They've got extra bounce in it. Playing in countries like Australia, where there's extra bounce, it's always helpful. I know they all use those marbles right in front to get that extra bounce and get the ball to skid. I've seen people practice with those golf balls. Very tough. But it makes you a better batsman after if you practice with those golf balls, because they're tiny. You have to keep an eye on it. It bounces more. It comes to you quickly. So there are a lot of things involved while batting against it. It's a good learning. So yes, all these coaches, new coaches is one of them. The trainer, he runs all the time himself. So this is why they're here. They're bringing new things to Pakistan domestic circuit. We never saw that happen before. So credit has to be given to PCB, to Central Punjab, to Sindh, who brought these foreign coaches at this level. It's just amazing. I've said that before. It's just not for the cricketers' sake. Even the coaches attached. Somebody like Humayun Farhat was there assisting these foreign coaches. It would be so helpful for him. So well done, PCB, Central Punjab, Sindh, for bringing these foreign coaches at this level. There's another one, Neil Johnson. When was the last time I saw a local team of plays domestic cricket had a foreign coach like him, a good international player? So changes are coming. It's happening for Pakistan cricket. Good bouncer again. Yes, when you talk about the foreign coaches on the domestic level, it's really good for these youngsters that they'll be getting experience from these coaches like Neil Johnson, plenty of experience in international cricket. And then, you know, you're getting vision as well from these guys. Especially, I do remember when I was almost a school kid, he scored 400s when he was playing for Zimbabwe in 40 matches. Off the back foot, handsome. Very good shot. That is a shot and a half. Saad Khan moves on to 98 now. Superb. Look at that. Shorter in length, on top of it. And that use of his wrist right in the end. Look at that wrist movement. Superb. Marvelous batting from Saad Khan.
He is not out on 98, just 2 runs behind from another ton. Your last delivery most likely before tea. Can he do it on this delivery? That's the question. Uh-oh, it's gone over everyone's head. Even wicketkeeper can't take it. It's gone all the way for 4. So some sloppy runs being given by Central Punjab bowlers and the wicketkeeper. It's a wide also, so 9 runs coming off the last 2 deliveries. The lead is now 70 runs. The pressure is definitely on Central Punjab. Yes, actually it's a poor stuff from Ahmed Daniel. There is no need to go and show, you know, an extra aggression. And wicketkeeper tried well, Ali Shan, but he was not able to collect that delivery. So runs, some extra runs for Sindh. Right, he's got one more opportunity to do it before the tea interval. Can he do it? Saad Khan. Oh, it was there to be hit. It was there to be hit towards on the leg side. Yes, he's disappointed because he knew that he could hit it. It was right there in that zone. And this ball it means that it's tea time here in Rawalpindi. They'll be a disappointed side. Central Punjab just took 1 wicket in this whole session. Ahmed Daniel looks disappointed. 104 runs given. That run rate amazing, 4.16 in this session, and courtesy to the man on your left, Saad Khan, who's played a blinder of an inning, a fantastic one. Still not done yet, is not out on 98 runs alongside Quaid-e-Azam, the very experienced one. It's just been a session that belongs to Sindh. Yes, and they're not happy faces, of course. Everyone is struggling. Yes, their captain giving him some confidence, boosting them. But this is the man of the moment, of course. Played so nicely. And happy, chappy face. Yeah, why not? He deserves a standing ovation, and he's getting one from the side because they all know that it was an important inning at an important time for the team. The team was under pressure when he came on to bat, and he has delivered it. Still there on 98 runs. Faraz Ali did hang on with him for 34 runs. It took 108 deliveries for that. And Quaid-e-Azam, he looks in a dangerous mood, I tell you. 15 of 11. It's 187 for 3. Well, Ahmed Daniel took a wicket after Fahim Ashraf and Amir Yamin was still struggling. 187 for 3. The session clearly belonging to the 2 left-handers of Sindh. They started off with some luck, a catch going down, but after that they played some authoritative shots. Saad Khan completed his 50 runs and then he was just magnificent down the track. Square of the wicket. Faraz Khan also learning from him. That use of the wrist, that was a beautiful shot to Qasim Akram, and again, not just once, but he did it twice to him, using the feet and just made him change the length, make him ball to his strength, and that again through the gap. He's really played Qasim Akram with some authority. Ahmed Daniel, that was an unlucky decision, played it away from the body for us. Quaid-e-Azam joined in with some dangerous intentions. He was looking to get runs, played a couple of good shots. This one again going to a square. This one was a shot of the game through cover region by young Saad Khan, again playing it off the back foot. He's been equally good on the front foot and back foot. Wonderful inning. And that's how the match stands. 188 plays, 305 Central Punjab. Abrar Ahmed got 4 wickets, and Sindh in their second inning are 187. They've lost 3 wickets. Saad Khan, the magnificent Saad Khan, is still there on 98. Fahim Ashraf taking 1 wicket, and the most important one is that Sindh lead by 70 runs now. At Rawalpindi Cricket Stadium, it's time for tea. So we'll see you on the other side.
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। ये तीसरा दिन है सिंध का मुकाबला सेंट्रल पंजाब, छठे राउंड का गेम। सिंध अपनी सेकंड इनिंग जारी रखेगा। 98 रन्स पर खेल रहे हैं साद खान। फवाद आलम अच्छा लग रहे हैं, 15 रन्स पर 11 बॉलें उन्होंने खेली हैं। इंटेंट बहुत पॉजिटिव नजर आई है हमें इनकी तरफ से। 187 रन्स बना चुके हैं 3 विकेट्स गवा के। इस सेशन में आउट होने वाले वाहिद खिलाड़ी फराज अनलकी होंगे। दूर से खेलने चले गए, जोर से खेलने चले गए और इनसाइड एज हो गए और अपनी विकेट गवा बैठे। अच्छी फाइटिंग इनिंग थी, ज्यादा रन्स नहीं कर सके लेकिन टाइम काफी बिताया क्रीज के ऊपर। एक विकेट हासिल किया आमिर यामीन ने, एक फ़हीम अशरफ ने और एक विकेट हासिल किया अहमद दानियाल ने। अनलकी रहे फ़हीम अशरफ, मोहम्मद अली भी, कैच ड्रॉप हुआ स्लिप में। सिंध ने स्कोर किए थे 188 रन अपनी पहली इनिंग में। 5 विकेट हासिल की थी आमिर यामीन ने। बहुत ही शानदार मैच रहा है आमिर यामीन के लिए। जवाब में 305 रन स्कोर किए सेंट्रल पंजाब ने। आमिर यामीन का नाम एक बार फिर आएगा कि जिन्होंने 63 रन बनाए। और सिंध अपनी दूसरी इनिंग में 187 रन, 3 विकेट्स गवाकर 98 रन पर मौजूद हैं। साद खान एक शानदार इनिंग और लीड जो है वो 70 रन की है। माइलस्टोन के करीब है अपने साद खान, 98 रन पर मौजूद हैं। और मेरे बाएं जानिब भी एक बहुत ही शानदार बैटर मौजूद है। बहुत खुश होंगे एक यंगस्टर की ऐसी परफॉर्मेंस से। यासिर हमीद क्या कहेंगे? जी हाँ, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स। मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पे सिंध को इस इनिंग की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो इस मैच में रहने के लिए इस इनिंग्स ने बड़ी वैल्यू रखती है मेरे ख्याल से। 98 पे खड़े हैं, होपफुली ये 100 रन करेंगे। और साथ में इनके मोस्ट सीनियर पार्टनर, इनकी मैं बात भी कर रहा था कि फवाद आलम वाई इज़ डिफरेंट, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में उन्होंने सेंचुरीज़ की हैं सिंध के लिए या कराची के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए। तो इस वजह से इनकी 45 सेंचुरी है। आमिर यामीन ने 29 रन दे के एक खिलाड़ी आउट किया। यार यासिर, काफ़ी एक्सपीरियंस होगा फवाद आलम का। ऐसी जैसे आपने कहा कि ऐसी सिचुएशंस में बहुत बार बैटिंग किया आपने, तो यहाँ पे साद के लिए और कोई बेहतर पार्टनर हो नहीं सकता था, क्योंकि फवाद आलम 14,000 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास रन्स हैं। और आज जो उनकी हमें इंटेंशंस नज़र आई, वो रन्स के लिए जा रहे हैं। अटैकिंग स्टार्ट किया है अपना। जी आप पॉजिटिव खेल रहे हैं और रिक्वायरमेंट जो इस वक्त टीम की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से खेल रहे हैं। इसी तरह खेलना चाहिए। सीनियर प्रो हैं और सिंध को रन भी चाहिए। रन्स इतने होने चाहिए कि आखिरी दिन अगर उनकी बारी आती है तो 220 230 तो एटलीस्ट हों। अगर 250 तक होते हैं तो फिर भी बहुत ही अच्छी बात है। बट उसके लिए इनको थोड़ा सा एक्सेलरेट करना पड़ेगा। जिस तरह अभी फवाद आलम का देख रहे हैं हम, 13 वालों पे 15 हैं, तो 23-50 ज़रूरी है। या इंटेंशंस तो अच्छी लगी हैं यासिर, इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसे आपने कहा 70 रन हैं अभी, पूरा सेशन है ये वाला। अच्छा खेलते हैं, एटलीस्ट 70 रन और करते हैं। अगर 140 पे डे एंड करते हैं, कल अगर लंच तक खेल के फिर 150 ऊपर करते हैं, तो क्या इनफ टाइम होगा लंच के बाद? क्या आप आउट कर सके सेंट्रल जैसी बैटिंग को? आई थिंक इनफ तो नहीं है टाइम, लेकिन इनके पास जो स्पिनर है अब्रार, वो एक्स फैक्टर है उसका, और मेरे ख्याल से वो एक साइन है। दैट्स अ पॉजिटिव साइन। 2 स्लिप्स और एक गली के साथ बॉलिंग करेंगे। अच्छा शॉट है, मारते ही भाग पड़े थे। 2 रन तो कम से कम बनने चाहिए। आराम से कंप्लीट कर लेंगे। आज डिफरेंट कर रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हुक शॉट मार रहे हैं, कट शॉट मार रहे हैं, अपने शॉट्स नहीं रोक रहे हैं। यही क्वालिटी है आज इनकी बैटिंग की अभी तक। आई थिंक ये बेस्ट वे होता है खेलने का। आप अपने स्ट्रोक्स भी खेलें, आप प्रेशर रखें, बॉलर्स को सेटल ना होने दें, क्योंकि 4 डे मैचेस में बॉलर को जब आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं तो उसकी वो लाइन बन जाती है, फिर वो अच्छे बॉल भी होना शुरू हो जाते हैं। तो आप जो बॉल रिस्पेक्ट है वो दें, और जो नहीं है उस पर आप ज़रूर रन्स लें। इस बार अच्छा बॉल और अच्छा खेले आखिर में फवाद। या सर क्या लगता है आपको? हमने अक्सर देखा है फवाद आलम गिर से जाते हैं, फॉल ओवर हो जाते हैं, बैलेंस सही नहीं रख पाते हैं। क्या वजह है इस चीज़ की? अभी भी जैसे आप देखें, जब बॉल खेला तो गिरने, ऐसी जगह जैसे गिरने लगे हैं।
मुझे लगता है ये बॉल ढूंढ रहे थे, कोई बॉल ढूंढ रहे हैं जो वो हमें समझ नहीं आ सकती है कौन सा बॉल ढूंढते हैं। मतलब इनका जो स्टांस है वो बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल सा है, अनयूजुअल सा है, तो उसमें समझ नहीं आती कौन सा बॉल ढूंढ रहे हैं। शायद यही वाला बॉल ढूंढ रहे हैं बीच में, जिसे ये पुश कर सके। इससे पहले भी हमने ये शॉट देखा और इस बार अच्छी फील्डिंग अली की, मोहम्मद अली। यार उतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी, 3 रन्स मुकम्मल किए हैं। बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट है ये फवाद आलम की जानिब से, रन्स की तलाश में अच्छा पुश किया है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि ऑल अलोंग द ग्राउंड खेले हैं ये शॉट। इससे पहले हमने देखा उमैर बिन यूसुफ ने भी सीधा पुश मारा था लेकिन सीधा हाथ में दे बैठे थे, बट ये ऑल अराउंड द ग्राउंड गया बॉल। ये 192 पर 3। जो फवाद थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं इस इनिंग्स में, जितनी हमने प्रीवियसली देखी है इनकी इनिंग्स, थोड़े से टेंटेटिव थे उसमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, अपने शॉट्स खेल रहे हैं। जी ऐसा लग रहा है जैसे एक आज़ादाना इनिंग खेल रहे हैं, फ्री माइंडसेट से खेल रहे हैं, और यही रिक्वायर्ड है एक इतने एक्सपीरियंस प्लेयर से, जिसके 14,000 से ज़्यादा रन्स हों। इस लेवल पे आके तो उनको मलाई की तरह खेलना चाहिए। जब मलाई जब बन जाए तो तब मलाई अगर दूध कच्चे दूध की मलाई होती नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा वो सेटल होना भी ज़रूरी है। इस वक्त जो स्कोर कार्ड है वो सूट करता है इस तरह की बैटिंग के लिए। इनकी एग्रेशन यहाँ पे शो करे, और इस बार फिर गैप हासिल करने में कामयाब हुए, 4 रन्स। ये कमाल की बैटिंग है, कमाल की पॉजिटिविटी है। ये बॉल ज्यादा आगे पिच नहीं हुआ था, बैकफुट पे गए, लेंथ को जल्दी परखा, अच्छे अपनी लेंथ फाइंड की, और प्लेसमेंट भी कमाल की रही। दोनों फील्डर्स के दरमियान से खेल के 4 रन हासिल किए। देखिए जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो जब भी शॉट खेलते हैं गैप में खेलते हैं, और ये इनकी क्वालिटी है, जब भी शॉट खेलते हैं गैप में खेलते हैं, अदरवाइज नहीं खेलते शॉट। बहुत जल्दी से 24 रन बना लिए, ऐसी ही इनिंग की रिक्वायरमेंट थी। ऐसा ही रोल यासिर पहली इनिंग में आमिर यामीन ने निभाया था, जब टीम मुश्किलात में थी आके उन्होंने फ्री शॉट्स खेलना शुरू कर दिए थे, और ऐसे ही कुछ फवाद कर रहे हैं। या फिर थोड़ा सा बॉल ढूंढ रहे हैं, कोई ऑफ बैलेंस हुए। हम दुआ गो हैं जल्दी से वो बॉल मिल जाए, जिसकी वजह से बार बार गिरना पड़ रहा है। इस इनिंग्स में ये एवरी नाउ एंड देन ये चीज़ देखने को मिलेगी। पहली बॉल उनको मिली, फिर गए और फिर गए, लेकिन इस बार 1 रन सिर्फ। अब जो है, जो नजरें हैं वो एक ही शख्स पे हैं, वो है साद खान, जिन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन इनिंग खेली। एटलीस्ट मेरे सामने जितनी कमेंट्री मैंने की है इनके मैचेस में, दूसरा सीज़न है, ये सबसे शानदार इनिंग है। ऐसे मौके पे जब टीम को इतनी ज़रूरत थी, और बहुत जल्दी वक्त में ये पार्टनरशिप भी मुकम्मल की है। 50 सिर्फ 47 बॉलों पे, ज़्यादा क्रेडिट उसमें आप फवाद आलम को देंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 रन दूर हैं अपने 100 रन के लिए। फ़हीम अशरफ बॉल करेंगे साद खान को, और ये बॉल चला जाएगा थर्ड मैन की जानिब। क्या ये 100 रन मुकम्मल कर लेंगे इस शॉट के साथ? जी हाँ, किस्मत भी साथ देते हुए एक शानदार प्लेयर का एक शानदार सेंचुरी मुकम्मल की है। ज़्यादा अथॉरिटेटिव शॉट नहीं था, लेकिन ये एक कमाल की इनिंग रही, कॉन्फिडेंस से भरपूर, स्किल से भरपूर, एक कमाल की इनिंग साद खान की जानिब से। जी हाँ, और एक और ऐड करूंगा, परसिस्ट किया इन्होंने इस इनिंग में, परसिस्टेंस थी, और एक्सेप्शनल रिजल्ट इनके लिए। 100 रन लिए साद ने। अच्छी इनिंग्स, रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था कि
रिस्पॉन्सिबिलिटी ली साद खान ने। टीम की जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि यहाँ पे एक बड़ी इनिंग्स मिडिल ऑर्डर में बहुत ज़रूरी थी। सिंध की टीम को रेस्क्यू करते हुए फिलहाल साद खान। नीचे जा रहा था ये बॉल। क्या आपको लगता है कि आज थोड़ी बॉलिंग भी लेंथ शायद खराब थी? हम बात करेंगे इसके बारे में यासर, लेकिन इससे पहले ये मोमेंट देखते हैं। ये मोमेंट इन्हें नहीं बोलेगा, जिस तरीके से अपने 100 रन मुकम्मल किए हैं एक बड़ी साइड के अगेंस्ट टेस्टिंग कंडीशंस में। जब भी एक यंगस्टर ऐसी टेस्टिंग कंडीशंस में रन्स करता है, एक प्राउड मोमेंट होता है। एज अ बैटर आप समझ सकते हैं, आपने भी कई दफ़ा ऐसे इनिंग खेली होगी, 2 सेंचुरीज अपने डेब्यू पे भी की थी। मोमेंट याद है आपको? ऐसा ही कुछ मोमेंट होगा, ऐसी ही फीलिंग होगी यासर? अमेजिंग मोमेंट्स। पॉइंट पे अच्छी फील्डिंग कासिम की। आपने यासर सोचा था डेब्यू पे 200 करेंगे? एक तो चलो इंसान ड्रीम करता है, बट 200 करना डेब्यू पे? नेवर। 201 पे 3। हम यासिर हमीद से बात जारी रखेंगे इस बारे में, उनके क्या इमोशंस थे जब उन्होंने 2 सेंचुरीज की थी। परेशान होंगे पॉल फ्रैंक, डेफिनेटली परेशान होंगे। सब मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन डीप डाउन शायद उनको पता है कि जो लीड है 84 रन की हो गई है, तो वो जो मैच जो आसानी से जीत सकते थे अब थोड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। या सर? जी हाँ, यही क्रिकेट की खूबसूरती है कि इसमें सिचुएशंस चेंज होती हैं, फिर आपको उसके हिसाब से प्लान भी चेंज करने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से पॉल फ्रैंक जो हैं वो काफ़ी सीनियर कोच हैं। और ये मुतमईन डग आउट। कल गुलाम अली से बात भी हो रही थी काफ़ी उस वक्त जब लंच के बाद। उस वक्त तो खैर बॉलर्स की ठीक ठाक दुर्गत हो रही थी उस वक्त, धुलाई। लेकिन अब थोड़े से मुतमईन लग रहे हैं। ये कभी मुतमईन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनको कभी खाना ही नहीं पसंद आता है। ये जीते हैं खाने के लिए तीनों, इनकी पसंद का खाना हो तो ये मुतमईन नहीं होते हैं। ये अच्छा चेंज है, विकेट कीपर को ऊपर बुला लिया गया है आमिर यामीन, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि फवाद आलम चल के खेल रहे थे, कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे। जी अच्छी हिकमत अमली सेंट्रल पंजाब की। और आमिर यामीन भी थोड़ा सा आगे ही रखेंगे बॉल, क्योंकि पीछे किया तो अली शान मुश्किल हो सकती है अली शान के लिए पिछला बॉल। लेकिन बल्ले से खेलने की कोशिश किया आज फवाद ने, मैक्सिमम डिलीवरीज। एक बहुत ही कमिटेड इनिंग लग रही है, और ऐसी इनिंग की जरूरत थी। 84 रन की लीड हो गई है। सांस देखें, बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं। ऐसे मौके पे विकेट कीपर के लिए भी कंफ्यूजन हो जाती है, जब आप बैटर उस तरफ देख रहा हो अचानक सीधा हो जाए, मुश्किल तो होता होगा। टेस्टिंग कंडीशंस हैं इनके लिए, टेस्टिंग सिचुएशन है क्योंकि एज जो है वो बड़ा तेज लगेगा। हम इससे पहले यासिर बात कर रहे थे विकेट कीपर एज ए स्पेशलिस्ट होने का, और जिस तरीके से आपको याद हो पर्थ में शान मसूद को स्टंप किया गया, जिस चालाकी से और जिस अच्छे हुनर के साथ विकेट हासिल की गई थी, तो इससे वो शो करता है कि विकेट कीपर स्पेशलिस्ट होना कितना ज़रूरी है। जी हाँ, वो तो आई थिंक मैच विनिंग स्टंपिंग थी। वो ऐसी स्टंपिंग थी कि उनकी हिस्ट्री में सबसे अच्छी स्टंपिंग थी जिम्बाब्वे की क्रिकेट हिस्ट्री में। उस विकेट की वजह से जिम्बाब्वे मैच जीते, और शादाब खान की जो विकेट थी इस बार 2 रन हासिल किए। शान मसूद तो स्टंप हुए ना, लेकिन शादाब खान दूसरा छक्का मारने जा रहे थे और अनफॉर्चुनेटली कैच आउट हुए बाउंड्री पे। विकेट कीपर्स का आपने इनाम लिया, तो जिम्बाब्वे के टटेंडा टाइबू अच्छे विकेट कीपर थे वो भी, एंडी फ्लावर, और उनका तो
अपनी बैटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा शोहरत थी उनकी। तो वो अच्छे विकेट कीपर थे। अगर मुझे कोई विकेट कीपर पसंद था तो वो इंग्लैंड के थे जैक रसल। बड़े ट्रेडिशनल विकेट कीपर थे, उनका बहुत शानदार ग्लव वर्क था, मूवमेंट बहुत शानदार थी उनकी, बहुत तेज थे। हाँ जी, और बड़ा कैरेक्टर थे वो, ग्लासेस पहन के रखते, मूंछें, कॉलर खड़े, छोटा हैट, रिमेंबर, और हर वक्त एंजॉय करते रहते थे और ऊपर खड़े होते थे, फास्ट बॉलर्स पे ऊपर खड़े होते थे इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में। वो एंजॉय कर सकते थे क्योंकि उनका जो काम था वो सबसे पहले वो उसको फोकस रख सकते थे। अपना काम सही कीजिए, 100% दीजिए, उसके बाद एंजॉय डेफिनेटली करना आपका हक है। यहाँ पे हमें थोड़े ढीले नजर आए हैं और ये पहली बार नहीं है। अली शान थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, रन्स किए हैं, बट विकेट कीपर की अगर बात करें 203 पे 3। एक 102 रन पर मौजूद हैं साद खान। बहुत ही कमाल की इनिंग रही है ये। सबसे शानदार बात रही है कि बॉल को सीधा खेलने की कोशिश की है और स्पिनर्स को कदमों का इस्तेमाल किया है। अगर ये दोनों आप चीज़ें अपना लेते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे हर कंडीशंस में। अपना फुटवर्क का कमाल का इस्तेमाल किया है, लेंथ को बहुत जल्दी परखा है। जी, और एक और अच्छी चीज़ इन्होंने की है, जो ये गलती कर रहे थे उसको इन्होंने रेक्टिफाई करके उसको इरेज किया है। जो ये ऑन खेल रहे थे बीच में से, हमने 2 इनिंग्स में देखा इन्हें आउट होते हुए। ये शॉट्स इनकी आप देख सकते हैं, और ये 100 शॉट अच्छा नहीं था लेकिन इनकी इंटेंट अच्छी थी, बॉल छोड़ रहे थे, तो गुड रिजल्ट इन द एंड। अच्छा, एक पॉइंट और जो आपने बहुत अच्छा रेस किया, यासर, हम पहले भी बात कर रहे थे कि इससे पहले हमने देखा है कि जो भी मिडल एंड लेग पे बॉल पड़ता था उसे ऑन मारने चले जाते थे, क्रॉस खेलने चले जाते थे, जिसकी वजह से आउट हुए काफ़ी दफ़ा। लेकिन आज उन्होंने बल्ले का भरपूर इस्तेमाल किया है, सीधे बल्ले का। एज, ओ ये विकेट कीपर को शायद कोशिश करनी चाहिए थी। ये बॉल चला जाएगा 4 रन के लिए, किस्मत साथ देते हुए बहादुर का। जी हाँ, लेकिन बॉल डिप हो रहा था नीचे, और शान के लिए, अली शान के लिए भी मेरे ख्याल से कोई टाइम नहीं था। देखना होगा रिप्ले में, मुझे यूं लगा नहीं, ये इनका बिल्कुल ट्राई बनती थी, डेफिनेटली बनती थी, और सिर्फ देख रहे थे वो। हाँ, ये कैच था इनका, बिल्कुल कैच था इनका। या इसी वजह से हम तब से बात कर रहे हैं विकेट कीपर का स्पेशलिस्ट होना कितना ज़रूरी है, एक बार फिर इस चीज़ का एहसास दिलाते हुए, क्योंकि ये दूसरा मौका है कि साद खान का कैच स्लिप कॉर्डन से गया है। इससे पहले अब्दुल्ला शफीक ने छोड़ा और अब ये अटेम्प्ट बनती थी। अच्छा रन है ये, बहुत ही शानदार रनिंग है। अगर आप इस तरीके से चांसेस नहीं लेंगे, हाफ चांसेस को कन्वर्ट नहीं करेंगे फुल चांसेस में और कैचेस ड्रॉप करते रहेंगे, तो आपकी टीम पीछे रह जाएगी, रन्स में भी, हौसले में भी। एक बार फिर देखते हैं यासिर। जी हाँ, उनकी मूवमेंट ही उन्होंने नहीं की, बिल्कुल देखते रहे। अगर वो पहले से मूव होते, जब कट लग रहा है तो इट मींस कि वो बाहर की तरफ ही जाएगा वो बॉल, तो आपने मूव तो करना है। नहीं, दैट वाज हिज कैच। अली शान चांस मिस किया है। जब मुझे याद है जब राशिद भाई या मोइन भाई विकेट कीपिंग किया करते थे, हम जब बड़े हो रहे थे, तो फर्स्ट स्लिप का फील्डर बहुत बाहर खड़ा होता था क्योंकि उनकी रीच इतनी ज़्यादा होती थी, इतनी रेंज होती थी उनकी। ऐसे कैचेस तो वो हंसते हंसते पकड़ लिया करते थे। एग्जैक्टली। और इस बार थके हुए हैं या शायद वैसे तो पूरी टीम को जगा के रखते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को जरूरत है इनको जगाने की, क्योंकि ये बहुत महंगा साबित हो सकता है। इससे पहले हमने देखा जब अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़ा, उसके बाद से लेके साद ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की है।
और अब तो वो 100 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो कॉन्फिडेंस स्काई हाई होगा। मोहम्मद साद कैप्टन डिसअपॉइंटेड होंगे, 3 कैचेस ड्रॉप हुए हैं आज, और जो मैच आसानी से शायद ये जीत सकते थे, अब मैच बराबर का होता चला जा रहा है। सिंध डेफिनेटली कमांडिंग पोजीशन में आती जा रही है, अभी तो नहीं कहेंगे क्योंकि फवाद आलम जितनी देर खड़े रहेंगे उनके साथ साद खान है, ये रन्स बढ़ते चले जाएंगे। जी हाँ, ये डायलेमा रहा है इनकी टीम का सेंट्रल पंजाब की इस ट्रॉफी में, जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं। 208 पे 3। सरफराज अहमद अगले आने वाले बैटर हैं, उमैर बिन यूसुफ भी वहाँ पे हैं, काफ़ी अफसरदा होंगे जिस तरीके से एक ही तरीके से आउट हुए हैं। बहुत कम हम देखते हैं कि बैटर 2 इनिंग्स में लगातार एक ही तरीके से आउट हो जाए, तो डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली उमैर बिन यूसुफ के ऊपर होगी। मौसम अच्छा होता जा रहा है इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे रहना और वक्त बिताना इस्लामाबाद में। ऐसे आप भी पेशावर से रावलपिंडी शिफ्ट हो गए, इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, अच्छा लगता है आपको भी? जी अच्छी, बहुत अच्छा कैपिटल है हम लोगों का पाकिस्तान का, और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीसफुल सिटी। वैसे तो पेशावर में भी घर है, वहाँ पे भी जाके हम रहते हैं, और वहाँ पे हमारा भाई घर है, रहते हैं, लेकिन किड्स जो हैं वो दे आर स्टडिंग हियर, तो डेफिनेटली ज़्यादा टाइम इधर ही गुजरता है। बट ये है कि इस्लामाबाद इज़ कूलेस्ट सिटी, वन ऑफ द कूलेस्ट सिटी। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल आपने सही इस्तेमाल किया, बड़ा कूल पीसफुल काम शहर है, ड्राइव करने का भी बहुत मज़ा आता है शाम के टाइम। लगता है कि आप ड्राइव काफ़ी आजकल कर रहे हैं अली। बट जो मैं आपके लिए प्लान बना लिया ना, अब आपने उसमें स्टिक रहना है। जी बेहतर है, जी बेहतर है यासर, जैसा आप कहें, आप बड़े भाइयों जैसे हैं। ये आपका और मेरा अपना आपस का प्लान है, ठीक है ना? अभी किसी को, डायरेक्टर साहब को भी नहीं पता। सिंध की जो लीड है वो 91 रन की हो गई है, 107 रन पे 7 खेल रहे हैं, फवाद 27 रन पर मौजूद हैं। आमिर यामीन को एक उम्मीद की तरह लेके आए कि शायद इस पार्टनरशिप को तोड़ सकें और मैच में वापस आया जा सके। मैं चाहता हूँ आप इसी तरह खुश रहें अली। थैंक यू यासिर, मैं खुश हूँ, लेकिन ये खुश नहीं होंगे क्योंकि कैच पकड़ना चाहिए था। जी हाँ अली शान, कल जब मैं वॉक कर रहा था तो इन्होंने पैड किए हुए थे, तो मैंने इनसे बात की थी हल्की सी, मैंने कहा आपके थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रगल कर रहे हैं आप कीपिंग में, तो इस पर थोड़ा सा आप वर्कआउट करें। लेकिन आके फिर 50 इन्होंने किया, तो फिर आई थॉट कि ओवरऑल अगर देखा जाए इस इनिंग्स में, तो एक तो ये कैच का था, एक वो बाउंसर था जो उसे इनके सर के ऊपर से गया, 2 चीज़ें इन्होंने मोस्टली इनका एरर हुआ है, इसके अलावा बेहतर थे। अंपायर ने इस बॉल को नो बॉल दिया, थोड़ा सा ओवर स्टेप किया। इमरान जावेद इज़ अ वेरी गुड अंपायर। साद खान को आउट करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि जब चांस क्रिएट किया वो पकड़ा नहीं गया है। उसके अलावा तो बॉल जो भी इनकी लाइन अच्छी कवर कर रहे हैं, डिफेंस अच्छा है, मौका मिलने पे बाउंड्री भी लगा रहे हैं, एक अच्छी इनिंग रही है। और ये वो मोमेंट था जिसकी हम बात कर रहे थे आगे, जो कैच हो सकता था, अटेम्प्ट बनती थी एटलीस्ट। आपने बात की कि अच्छा दिन भी रहा है, लेकिन अच्छा करना तो एक नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए विकेट कीपर के लिए।
बुरा नहीं करना चाहिए. कोशिश ज़रूरी है, कोशिश करेंगे तो उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा, कोशिश के बगैर कुछ नहीं है. 4 रन इस बार, खूबसूरत शॉट 7 की, और सेंचुरी करने के बाद वो अपनी बैटिंग को सेलिब्रेट कर सकते हैं आप इस तरह के शॉट्स खेल के. जहां प्लेसमेंट कमाल की रही है, कलाइयों का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा रहा, गैप तलाश किया. देखिए बैलेंस भी बहुत कमाल का रहा. मिडल ऑफ द बैट से खेले हैं, मिड विकेट के दरमियान से खेलते हुए पसंद करते हैं ये शॉट खेलना ऑन साइड पे. और ये बॉल तो उनके एरिया में भी था, उनके जोन में भी था. 4 रन हासिल कर लिए. शानदार बैटिंग. आहिस्ता आहिस्ता जो प्रेशर है वो अब कन्वर्ट हो रहा है सिंध से सेंट्रल की जानिब. और जो चांस हमें नजर आए हैं इस ग्राउंड में, इस पिच पे, वो नए बॉल से हैं. और नया बॉल अभी काफी दूर है, तब तक काफी रन्स दे देंगे ये अली अभी 1.5 घंटे का खेल बाकी है और मेरे ख्याल से यहाँ से 100 रन्स करने चाहिए सिंध की टीम को. 213 पे 3. ये बहुत बेहतरीन टैग लाइन है, बहुत सूट करती है हमारी नेशन को, क्योंकि एक ही नेशन है और एक ही पैशन है हमारा, वो है क्रिकेट. बहुत आइडियल लाइन है ये, सूट करती है हमारे पे पैशन. वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस से खुश है यासिर? होना तो नहीं चाहिए. कहाँ लगता है गलती हो रही है हमारे से एज अ टीम? देखिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे लिए इजी होगा, बट हमारे लिए इजी नहीं है ऑस्ट्रेलिया. ये हम पहले से ही कहते आ रहे हैं. टाइम चाहिए हमारे बैट्समैनों को वहाँ पे सेटल होने के लिए, तो टाइम इतना नहीं है. बाउंस जो है वो थोड़ा हार्ड लेंथ बॉलिंग हो रही है. अब मैं व्हाट कैन आई से कि कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है. इस तरह की जो मैच हम हारे हैं, लेकिन क्रिकेट है एट द एंड. आप ये भी नहीं कह सकते आप इफ़ यू आर प्लेइंग समवन, ऐसी नेशन जो काफ़ी अरसे से टेस्ट क्रिकेट खेल रही है और वो रिसेंटली दे वर डूइंग वेरी वेल, मतलब अच्छी क्रिकेट खेले हैं वो सिकंदर रज़ा की सूरत में. और उनकी तो आप उनको राइट ऑफ तो नहीं कर सकते थे डेफिनेटली, बट जिम्बाब्वे से हारना थोड़ा सा वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट एज ए नेशन, बट एज ए क्रिकेटर क्रिकेट में आप किसी से भी हार सकते हैं. इट्स अ गेम ऑफ अ डे. आप उस दिन जो अच्छा करेगा वही जीतेगा. चलो यहाँ से हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान आने वाले अपने मैचेस जीते और हम किसी ना किसी तरीके से सेमीफाइनल में अपनी जगह बना सकें, क्योंकि टैलेंट स्किल तो सब कुछ मौजूद है. जैसे आपने कहा दिन दिन की बात है, अच्छा दिन नहीं था दोनों दिन. वापस इस मैच पे आ जाते हैं. लीड 96 रन की. आपने कहा अगर कल 1 घंटा भी बैटिंग करते हैं तो 250 रन. क्या इतने बहादुर होंगे कि चांस लेंगे 250 रन 2.5 सेशन अगर सिंध को सेंट्रल पंजाब को बैटिंग के लिए देते हैं, क्योंकि क्वालिटी बैटिंग है सेंट्रल पंजाब की भी. आई थिंक यही क्रिकेट है. अगर आप इस तरह चांस नहीं लेंगे, डरेंगे, तो फिर मज़ा नहीं आता. लाइक आपके पास एक विकेट टेकर बॉलर है, ऐसा बॉलर जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर है, ठीक है, और वो पाकिस्तान का सब कह रहे हैं यार फ्यूचर है. जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं तो आई थिंक ही कैन इजीली वॉक इनटू टेस्ट साइड. अबरार अहमद. और अगर आप उसको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे तो दैट वुड नॉट बी अ गुड थिंग टू डू. आपको उस पर कॉन्फिडेंस करना पड़ेगा. 250 रन देने पड़ेंगे 60 ओवर्स में, और थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग करें. इसमें 4 डे क्रिकेट है, फील्ड खोल के दें. और उसके बाद जो है यू कैन यू नेवर नो. क्रिकेट है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना पड़ेगा. उनके पास अजहर अली जैसे बैट्समैन हैं जो कि वर्ल्ड क्लास हैं, मतलब इतनी सेंचुरीज हैं उनकी. 95 टेस्ट मैचेस हैं. 95 टेस्ट मैचेस वाले कितने प्लेयर्स हैं इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में? 10 भी नहीं होंगे. और आई मीन क्रिकेट को अगर इस तरह खेलेंगे तो बहुत अच्छी बात है. फिर इम्प्रूवमेंट आएगी कि कोई यंगस्टर ही कैन स्टैंड अप.
वो जिता सकते हैं आपको मैच, वो एक बड़ा 100 करके आपका उस प्लेयर का एक लेवल ही चेंज हो जाता है जब इस तरह की सिचुएशन में मैच जिताते हैं। कोई और बॉलर कर सकता है, तो पॉजिटिव्स बहुत हैं रिजल्ट आने में। तो मेरे ख्याल से ये जो मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं, इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ डिसीजन अच्छे नहीं थे, क्रिकेट के लिए अच्छे नहीं थे। लाइक जिस तरह सेंट्रल पंजाब ने पहले मैच में 390 करके दिए उनको, वो भी आखिरी दिन लंच पे। तो दैट्स नॉट फेयर। यू हैव टू गिव अ फेयर चांस टू योर ऑपोजिशन एज वेल, कि वो जिसमें मेक और ब्रेक होना चाहिए दोनों टीम्स के लिए। क्या बहुत ही शानदार पॉइंट आपने रेज किया कि क्रिकेट के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारी इंटेंट की बात करते हैं, हम पॉजिटिव क्रिकेट खेलना की बात करते हैं। वो इंटेंट और पॉजिटिविटी आपको डिसीजन मेकिंग में भी नज़र आनी चाहिए कि आप कितने पॉजिटिव हैं, कितना चांस ले सकते हैं, कितना भरोसा करते हैं आप अपनी बॉलिंग लाइनअप पे। आई एम श्योर गुलाम अली के आने के बाद हमें डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि ये बहुत ही मंझे हुए प्लेयर थे अपने ज़माने के। कोचिंग में भी शानदार करियर का आगाज़ है इनका। जी हाँ, गुलाम अली गुल्लू भाई, काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ मैं इनके साथ, ओपन किए मैंने, और बड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग है इनकी गेम की। 215 पे 3। Excellent fight back by Sindh. Third wicket partnership for 116, and now another big partnership. 68 now. Quaid-e-Azam has played his part. 29 of 36 deliveries. It was always going to be important to just go for runs and put runs on the board. And that's what Sindh has done. Look at that run rate of theirs is 3.52 for the innings. And a healthy lead now of 98 with still 7 wickets in hand. Time to say a very good evening to Ejaz Ahmed. Thanks a lot, Faisal. And good evening, everyone. Good line. And what we've been witnessing here is Ali's just having a good line. He's the second highest wicket taker in this Quaid-e-Azam trophy this season. He has put all of his efforts. And if we look onto the wicket column, 214. I think that Saad must be looking some more options here to get some breakthroughs, because the partnership is again looking at 67 in 76 deliveries, which has been good one. Shot. I remember Quaid-e-Azam played 51 runs knock when he was caught on a low full toss towards onside. He was really angry with his effort, but today he has got enough time to convert these two figures into three, play a big knock. And he has got the caliber to play long innings, stay on the wicket. But I think that at this stage, like, every team must be looking to have such kind of bowler, like already been spoken about, Abrar, the spin. That if the partnership is going, you need to get someone who can really come up with some efforts to get breakthrough. Though that Fame Ashraf has bowled, but I think that he was just not been good enough to get breakthroughs. No.
We've seen that invariable bounce, but Sindh batters have really coped well with it. And it does make a difference when you're ahead in the game, as opposed to when you're behind in the morning when they started. That morning session really was important. They only lost 2 wickets. And that really set the tone for the afternoon session, which clearly Sindh won, thanks to that partnership between Faraz and Saad Khan, who's still unbeaten. Produced a wonderful 100 under pressure. No ball is the call. Went for that Yorker. Fawad. Quick, he's looking in good rhythm today, Fawad Alam. They were just overstepping. Long stride. Yes. Good one. No ball. We had seen that Pacers have been struggling like Ghulam Mudassar, who bowled many of the no balls. It's a pacer. So trying to make some more efforts. Channel bowling. 217 for 3. Very polished knock from Saad Khan. Did get a chance early on, but like all good players will do, he capitalized on that. Like I said, under pressure, he's produced a wonderful 100. Because we've seen in the last 2 rounds from similar positions in third innings, KP and Balochistan capitulated, and Sindh wrapped up the victory very easily. Such is the importance of the third innings, and Saad Khan has really come up with the goods. He's short in stature, not very tall. He's a punchy player. Equally good off front and back foot. Did bring out really good strokes. The cut shots were good. It was quick to pounce on any width on offer. Yes, exactly, you're right. Scoring highest runs in the season. Nelson's, what Saad has been pictured there at 179 deliveries. I think that gives you more confidence, and will surely come up with some different plans. We'll surely be looking to pile this up again. Change of pace. Saad was early into the stroke, but just saw it in time and made the adjustment. Not a bad ploy at all from Fahim Ashraf. He's just falling over, but then he realized, checked his stroke at the last minute. Yes, good one. Good presence of mind, anticipation, the concentration, which has been the hallmark of this longer format of cricket. Having some cricket tips. A little bit of uncomfortable on that shot, but some colour kit, and I think should be talking about white ball cricket. Watch very carefully. BT is very good with IT and technology. I've seen him play a little bit. BT is the one on the right in the green shirt. He'll be better advised not to listen to Noman. You just ignore him. And look, BT is not even concentrating. Good one. What a spanking stroke this is. This is a magnificent cut shot. Slightly short and wide. And this man has been prolific in that area. Yeah, what a wonderful shot. Saad is also
not showing any sort of respect here for Fahim Ashraf. Look at that. You're just hitting it, slap it up width, making the room and just comfortable all along the carpet. He made it show that this will go all the way on the ground. Yeah, look at the beautiful time. No way to stop this. 4 runs. There we go. Umpires, they must be looking onto the ball like this. Because in the modern cricket, we did see that umpires are having a check on the ball after hitting on to the iron. But with this, dot delivery over ball, 62 gone, 2-2-1 for 3. Slightly worried faces in Central Punjab dugout. We've seen Central Punjab here at the Pindi Cricket Stadium get into winning positions and not capitalize. They would have been hoping his 3rd time lucky, but that fight back from Sindh means that now they're leading by 104, and the score really get into a broad territory if they get another 50 or 70 runs. Another no ball, another extra. 6 no balls for the innings. And Pacers, they are the culprits. And now he's just checking that where should be exactly the mark. Marking his run up. And that's good. Because when you're not being sure enough, when a stride is there, just landing, overstepping, it's a marginal. And not the huge no ball that we've seen previously, but remember the line belongs to the umpire. Really want to beg one question to the captaincy of Saad. Ali's bowling from the pavilion end. We've seen in all these 6 rounds, majority of the wickets that the fast bowler have taken have been from the media center end. Even Umar, when he was bowling that spell yesterday, that was from media center end. Generally the spinners operate from the pavilion end, and Central Punjab doesn't have a regular spinner. But the cracks that we saw in the morning are more towards that end if the fast bowling was done from the media center end. Neil Johnson's expressions doesn't normally change, but he must be happy inside. And the reason I say this, Ejaz, because Ali is their premium bowler. He is their main striker. But generally he's bowled from the far end. And the kind of length that he bowled, I don't know, would it be worth a question to just ask Saad if he could have bowled him from that media center end. When you got 4 fast bowlers as a captain, it's a difficult art to manage all these 4 fast bowlers. And we witnessed here, it's a 3rd day, that the morning session, like in the first day, it was completely enjoyed by the Pacers. The Tamir Yamin got his swinging deliveries, no answer from the batters, and then the 2nd day, the things are slowly getting better for the batting line. And today, you can clearly see the impact, double Nelsons for 3. So it's slowly but surely getting much better for the batting. Inside edge onto the pad. Otherwise, it was pretty straight. Muhammad Ali aborted the appeal. This has been Fawad Alam's problem if you cast your mind back to that Australian series as well. You've seen him getting dismissed in similar fashion. This time he was lucky. He got a big inside edge to that. Yeah, because of that stance, what he's been hearing cross. I think the Pacers and the bowlers, they've been reading him well. That we need to
ball him slightly bit more fuller with good pace. If there is a swing available, that will be a positive for you, being a pace bowler. But such kind of deliveries, Sabat can play you for the whole day. And he's so good at that, though that the world was talking about his stance, that how he's been planting himself in the box. But he's going good, he's earning runs with that, so no matter that how the things have been looking towards the world, but if you are scoring runs, that's fine. Partnership of 75. Very, very crucial runs. No, 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 no. Dot to finish. 2-2-2 for 3. So in reply of 188 runs, Central Punjab got 305. 4 wickets for Abrar, the spin. The leading wicket taker, and Amir Yamin, 63. 115 for Saad Khan. Still he's operating, is going good. 105 runs. Up front for Sindh. Abrar, 32 wickets in the season so far. Coach Ghulam Ali enjoying a cup of tea. Relaxed now. Yesterday they were behind in the game. Now they've made a stunning comeback. Mohammad Saad, the skipper. Gentle loosener there. And he's now bowling from that media center end, which is more renowned for producing good results for the faster men. Well, Saad reminds me Salim Malik, who used to get some sort of run up and used to bowl. So change of pace might be sometimes working for the skipper, or might be the bowling, you can say like bowling skipper. So let's see if he can change the destiny for himself or his team or not. But the way he's bowling, slight bit of a way. And both of these two batters, they are not looking aggressive at this stage. They are taking their time. So there is no harm or any sort of danger what we've been looking here in the batting of Fawad and Saad. We had this nightmare earlier when I was on the comms. Bowler is Saad and the batter is Saad. Just got to be careful which Saad we're talking about. He's trying to test the patience of Saad Khan. He's floating those deliveries outside the off stump. He's got the field set. It's a 7-2 field. Just wants him to play in that direction. Could be wide. Pretty close. Made in 222 for 3. Three wickets for each of three bowlers. Amir Yamin, Fahim Ashraf and Ahmed Ania scoring on this bowling table. इसको बिठा दे प्लीज सादी प्लीज इसको बिठा दे यार फिर बीच में चलेगा तो फिर रुकना पड़ेगा हटा दे जाने दे Fawad Alam is in the house. Everything has to be precise behind the bowler's arm and some. Muhammad Ali has looked innocuous from that far end.
That ball is also 64.1 overs old. We haven't seen any reverse swing. The only bowler that I can think of was getting some reverse was Sindh's Asif Mahmood, who's obviously not playing in this game. But in the last round, he got the ball to reverse, and that bouncer Yorker ploy that he used to good effect really helped with Abrar at the other end to just secure the victory for Sindh. No such combination for Central Punjab. Yes, and this has been total in contrast in comparison with the first inning, where Fawad was getting 11 runs in this first inning of this game, and also Saad was not among the runs, who got 29 runs. So it's been total in contrast now. They've been settled down. They're keeping their heads cool and calm together, making partnership. Look at that beauty. He just picked up the gap towards onside with a flick of wrist. An earning couple. This is so easy batting from both of these two batters of Sindh. The good thing about Fawad Alam's innings today is he's looked to be busy. A blind turn, not what you would suggest to any youngsters watching. He did run the runs quite hard, so there was no trouble in the end. Once again. Is there some movement, or just Muhammad Ali was hurrying him up? He did send him back. Go back, sir, I'm not ready. That's what Fawad said. The bowler has to oblige. Well, there is some sort of feeling into the glove and hand. That's why Fawad is just shaking his hand there. I think that pretty hardly hit onto the toe of the bat. It does send the jarring through to your arm if you hit it that hard at the bottom of the bat. Nicely timed. Sweeper in place, but Fawad, like I said, he's looking to be busy, and the partnership has really propelled Sindh. Ijaz a lead of 109 or 108 now. Looks like Sindh is getting into a very, very good position. Yeah, that confidence has been reflecting from the batting of these two. They are into the comfort boots. They are walking nice and smoothly. You know, I think that as spoken earlier, this has been total in contrast of the first inning of Sindh. They were really tumbling at this stage when they were batting on the first day. Short ball to finish the over. 65 overs being bowled, 225 for 3. .65 overs bowled. The ball is now old. The bowlers are tired. The batters are set. Doesn't look very good for Central Punjab. A big effort needed because they were so far ahead in the game. They had played such good cricket for 2.5 days. They won't want to let it slip. Nicely played, but that field is well set. Taib Tahir is quite deep, but he hit it so well, there was no chance of a run. Well, to me, like such kind of bowling
I think it's not threatening. They're just going through the time. See that? So easy. This has gone through. Slip and gully. Both are really looking against each other. That's what we have missed here. But I think that Fawad played it well at the last moment. There was width that allowed Fawad to free his arms. Not where we intended, but the desired result was a boundary, and eventually he got that. Azhar Ali is bringing some changes now. They got a wide slip, a fine gully. Azhar at short cover catching. Just exactly for that sort of delivery. They want Fawad to get tempted and hit it in the air. Not to be. Yes. Now there is the first slip is sort of on second slip. And still he's going to offer him. Just go after the ball. But Fawad, what a good temperament. He must be showing here a good temperament like a test cricketer who is having a long career. He's timed it, but very, very nicely picked up. Qasim Akram. Nothing much goes past him. Excellent work in the field from the youngster. Look at that. Fawad wasn't hitting hard, but Qasim Akram anticipation was good and the athleticism even better. He's got a few new cherries. Not the time for it just yet, and probably won't be today, because 14 overs to get to that point, and just approaching the last hour. 3 minutes to 4 is the local time here. Not likely that we'll get that far to be able to use that new ball tonight. Well, that was a good delivery. But as spoken earlier, that both batters, they've been settled down. They're not giving any sort of a temptation here. Though that we did see that Fawad was just a bit of flashy. The ball went through the slip and gully region, but other than that shot, I hadn't seen any sort of bad attempts from these two batters. They're making a good partnership. Slight bit of worried sign here for the bowling skipper and the bowling side. Yes, change of pace, like variations. We did see Saad is not that quick, but Ali is not bit more quicker. So both of these two, they are adjusting well. Again, both paces. Well, it's really a good time to break this partnership if they can, because straight to the fielder, because things are getting more solid for Sindh side, and Sindh has got the habit here at Rawalpindi in the both previous two games, one against Balochistan KP with a 10 wickets margin. So I think they've been setting the things up here for another win. Though that time will tell us the better picture and story tomorrow, but here they are paving their way towards a better future Sindh side. Good use of the wrist. Not your conventional on drive, but it will have enough legs to go over the fence. Quaid-e-Azam picks up yet another boundary. Well, just a slight bit of push. And as Faisal spoke, that ball had enough legs to cross the fence. Bit of shuffle. And look at that. Just a gentle push. And this ball has enough pace in it after that shot being played. Sort of straight drive.
dot delivery. Fawad has he's been looking on 41 runs in 61 deliveries. This has been really a good strike. That's what he's been playing here. Because of those boundaries, what he's been getting with the passage of time. Not much running between the wicket, but that's why he's getting some good strike rate. But on the other hand, Saad, who has got 193 deliveries for his 116 runs. So there you go, the dot one to finish 67th over. 234 for 3. I think so. The umpires will surely go for the drinks. जी, और इस वक्त जो सिंध की लीड है 117 रन्स की, उसमें साद खान की ज़बरदस्त सेंचुरी शामिल है और एक मुश्किल सूरत हाल से साद खान ने निकाला। 305 का मजमुआ बना लिया था सेंट्रल पंजाब ने, लेकिन ज़बरदस्त जवाब दिया सिंध की टीम ने और इस वक्त तक एक अच्छी पोजीशन में है 117 रन्स की लीड के साथ। और ये साद खान की चौथी फर्स्ट क्लास सेंचुरी थी। बेहतरीन बैटिंग की और पुरएतमाद नजर आए। ये उनकी बैटिंग देखिए और इस दफा इसको खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की जानिब 4 रन्स के लिए। बेहतरीन बैटिंग, बेहतरीन आगाज। मेरे साथ कॉम बॉक्स में है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद। शुक्रिया आसिफ। बहुत आगे गिरा हुआ बॉल था, लूजनर कह सकते हैं इसे। 4 रन्स हासिल किए साद ने। यासिर, साद की बैटिंग में एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिली कि सिंगल्स लिए कहीं पे भी ऐसा नज़र नहीं आया कि वो किसी प्रेशर में है। जो भी प्रेशर टाइम था उसको अच्छे तरीके से गुजारा और रन्स रोटेट करते रहे, स्ट्राइक रोटेट करते रहे। जी हाँ, अच्छी इन्होंने बैटिंग की है और रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलें, जिम्मेवारी लेके खेलें
अपनी विकेट की प्राइस रखी हुई थी इन्होंने, वैल्यू की अपने विकेट को और क्रीज को ऑक्यूपाई किया। सबसे इम्पोर्टेंटली जिसमें इन्होंने अपने शॉट्स को होल्ड भी किया, जिन गलतियों को इन्होंने पहले किया था वो दोहराई नहीं, तो इस वजह से लंबी इनिंग्स खेलने में कामयाब हुए। नहीं खड़े रहो। दूसरी जानिब फवाद आलम अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और अब तक 41 रन बना चुके हैं। आगाज़ ही बहुत अच्छा किया था फवाद आलम ने और एक लंबी इनिंग्स इनकी तरफ से भी ड्यू है। अब देखना यह है कि ये इस इनिंग्स को एक लंबे स्कोर में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं। इस वक्त लीड 122 रन की हो गई है, सिंध की पोजीशन मुस्तहकम होते हुए। सिंध 239 पर 3। सेंट्रल पंजाब की टीम ने आज 2 कैचेस गिराए और उनका खमियाजा भुगतना पड़ा। एक अच्छी सेंचुरी स्कोर की साद ने। अली की अच्छी गेंद, ये अच्छी बॉलिंग अली की, अपने एरियाज में बॉल करते हैं, ज़्यादातर स्पॉट ऑन होते हैं। यहाँ पे कोई गलती करानी पड़ेगी इन्हें बैट्समैन से, तभी इनको ब्रेक थ्रू मिलेगी। बाउंसर्स ट्राई कर सकते हैं, सेट बैट्समैन है, अपनी शॉट्स पे जाएंगे। बहुत ही शानदार शॉट इस दफा, इसको खेल दिया एक्स्ट्रा वक्त कवर की जानिब और गेंद फेंस से पार कर गई। 4 रन। साथ जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं बहुत मुश्किल होगा बॉलर्स के लिए। यह बहुत ही अच्छी शॉट ऑन द अप खेले, खूबसूरत शॉट, अच्छी पावर है इनकी शॉट में। डीप कवर का फील्डर भी था लेकिन फिर भी रोकने में कामयाब नहीं हो सका। 4 रन। अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं साथ, यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं अपने 100 को डैडी 100 में। और इस वक्त सिंध की टीम मुतलाशी है इस को ब्रेक थ्रू करने के लिए और विकेट हासिल करने के लिए। और सिंध का जो ड्रेसिंग रूम इस वक्त आप देख सकते हैं अब पुरसकून है यहाँ पर। जी 2 मेजर पार्टनरशिप्स लगी इस इनिंग्स में सिंध की तरफ से। एक और अच्छा शॉट, कट शॉट, फील्डर मौजूद। 1 रन लिया। जो पहली पार्टनरशिप थी वो साद की और फराज की थी और उसके बाद ये पार्टनरशिप है, 97 रन की पार्टनरशिप हो गई है और इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप। यहाँ से एक टारगेट सेट करने की तरफ जा रही है सिंध की टीम। जी हाँ, फवाद आलम के लिए अब आप देख सकते हैं फील्डिंग में तब्दीली की है और डीप पॉइंट पर फील्डर प्लेस किया है। दूसरी जानिब फवाद आलम इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में बैटिंग करते हुए और जो हौसला दिया, साथ को हौसला दिया, साथ के साथ
जमकर खेले हैं अब तक और 41 रन बना लिए हैं। या पहले 25 रन सिर्फ 18 गेंदों पे किए फवाद ने, आते ही बड़ा पॉजिटिव इंटेंट शो की, उसके बाद बॉलिंग अच्छी की। लास्ट हाफ एन आवर हम देखा सेंट्रल पंजाब ने बिल्कुल स्पॉट ऑन रहे, जिस तरह फवाद आलम रूम बना रहे थे और कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे, अब थोड़े से बैकफुट पे और थोड़े डिफेंसिव हो गए हैं। और इस दफा इसको पुल कर दिया फाइन लेग की जानिब और एक और बाउंड्री। यहां पर थोड़ा सा लाइन मिस कर गए अली और इसका भरपूर फायदा उठाया फवाद आलम ने। शानदार बैटिंग और इसके साथ ही पार्टनरशिप जो है वो 100 रन की हो गई है 128 गेंदों पर। बहुत अच्छे एवरेज से बैटिंग की है, स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है दोनों ही बैटर्स ने। बिठा के खेले इस बॉल को। फाइन लेग का फील्डर थोड़ा सा बाहर खड़ा है, काफी जगह थी उनके पास शॉट खेलने के लिए। आ जाए बेटा, आ जाए। और अगर सिंध की बैटिंग की बात की जाए तो एक क्लियर डिफरेंस है। साद खान ने जो 2 पार्टनरशिप्स हुई हैं, साद खान फराज अली और फिर साद खान और फवाद आलम के दरमियान बेहतरीन, और इसके बाद अभी सरफराज अहमद, मोहम्मद उमर, 2 ऑप्शंस हैं और एक अच्छा टोटल बना सकती है सिंध की टीम। कुछ इत्मीनान के लम्हे सिंध की डग आउट में, और इस दफा इसको बड़ा जबरदस्त तरीके से कट किया। कासिम उमर के पास ये गेंद गई, बहुत तेज शॉट था, इसको अच्छा रोका कासिम उमर ने, कासिम अकरम ने। बहुत तेज शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग कासिम की। आज जो पहले सेशन में हम बात कर रहे थे यासिर के ये यंगस्टर्स के पास चांस है, खास तौर पर साद और फराज के, अब उनकी टीम मुश्किल में है, एक अच्छी इनिंग्स खेलें, लंबी इनिंग्स खेलें और अपना लोहा मनवाएं। साद ने इस चीज को साबित किया अब तक। यह बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी थी दोनों के लिए और साद ने उसको कैपिटलाइज किया, अवेल की ये अपॉर्चुनिटी और 126 पे खेल रहे हैं। और 100 के बाद मजीद अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। शुरू में थोड़ा सा काफी फंस के खेले, काफी टाइम लिया इन्होंने। साद के लिए अब यहाँ पर मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। मैं सेंट्रल पंजाब के कप्तान सिंध जी, जो सेंट्रल पंजाब के कप्तान है साद, इनकी बात कर रहा हूँ, और इनके लिए मुश्किलात ज़रूर बढ़ चुकी हैं। बहुत ही हल्के अंदाज में बॉल कर रहे हैं और अब देखना यह है कि किन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं कि यहाँ पर इनको ब्रेक थ्रू मिल जाए और ब्रेक थ्रू के बाद जल्दी विकेट्स लें और मैच में वापस आएं। लीड 131 हो चुकी है। और इसके साथ ही इस ओवर का इख्तिताम हुआ 248 पर 3। आवाज दें किसी ने अंदर आवे, आवाज देना किसी को अंदर आए।
अहमद दानियाल को बॉलिंग के लिए लाए हैं। अब तक 10 ओवर्स किए हैं, 50 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। बोल्ड किया था फराज को इनसाइड एज। और इकॉनमी अगर की बात की जाए तो काफ़ी महंगे हैं साबित हुए हैं। 5 के औसत से इन्होंने रन्स दिए हैं। एक स्लिप, एक गली के साथ ऑपरेट करेंगे दानियाल। फवाद आलम बहुत ही तजर्बेकार बैटर। और इस दफा इसको पुल कर दिया और 4 रन्स मिलेंगे यहां पर। पीछे गिरे हुए इस गेंद को प्रॉपर जगह बनाई, शानदार टाइमिंग। ये बहुत अच्छा शॉट, पहला बॉल थोड़ा सा ढीला किया था और फवाद आलम ने इस मौके को ज़ाया नहीं किया। 4 रन हासिल किए, बहुत जल्दी से अपने पिछले पाँव पे आके शॉट खेला। सिर्फ 1 रन अवे हैं अपनी 50 से। और इस दफा इसको स्क्वायर लेग की जानिब खेलकर दूसरा रन भी तेजी से मुकम्मल किया और अपने 50 रन भी मुकम्मल कर दिए। शानदार बैटिंग फवाद आलम की जानिब से। यह एक इंपॉर्टेंट इनिंग फवाद की तरफ से। 50 रन के 70 बॉलों पे फवाद आलम ने, और इनकी लीड भी अब 137 हो गई है। अगर सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग। फवाद आलम ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। आते ही इंटेंस शो किया था, एग्रेसिव मूड में नजर आए, बहुत अच्छी शॉट्स खेली। पुल, कट, स्ट्रेट ड्राइव, इनकी सब कुछ इनकी बैटिंग में देखने को मिला। और यासिर इस तरह ये देखिए, इनके इस शॉट के साथ इनके 50 रन मुकम्मल हुए थे। यह रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत अच्छी रही। और इस इनिंग को अगर देखें फवाद की, तो इनकी शुरू से बड़ी जारहाना बैटिंग की इन्होंने, एग्रेसिव खेले। लेकिन इनका पिच पे रहना बहुत ही सूदमंद होगा सिंध के लिए एक टारगेट सेट करने में। राउंड द विकेट आने का फैसला किया है फवाद आलम के अगेंस्ट और आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी। फवाद आलम बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे। ऐसा लगता है कि साइड स्क्रीन के सामने कोई आ गया था, या वो मेरा ख्याल है वो जो साहब वहां से गुजर रहे हैं उनसे डिस्टर्ब हुए थे फवाद आलम। देखना है कि अहमद दानियाल, यहां पर ब्रेक थ्रू बहुत जरूरी है सेंट्रल पंजाब के लिए। यह प्लान में कोई चेंजिंग नजर नहीं आ रही, आगे ही कर रहे हैं बॉल। लास्ट गेम में हमने देखा था इन्होंने बाउंसर्स का एक्सपेल किया था, फील्डर्स लेके। बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद आबिद अली। $255 for 3। जी हाँ, फवाद आलम ने जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और आते ही जिस तरह अटैक किया यासिर, ये देखिए पुल शॉट। या पुल शॉट्स अच्छी खेली इन्होंने, बैक फुट पे ड्राइव किए और कट शॉट्स खेली। अच्छा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहा इनका
बैट के साथ, बॉल के साथ, बैट और बॉल का इस इनिंग्स में। अपने करियर की 68वीं निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की है फवाद आलम ने। एवरेज ज़बरदस्त है, शानदार है। और दूसरी जानिब साथ जो हैं वो बॉलिंग जारी रखे हुए हैं। इस वक्त सेंट्रल पंजाब के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं और पुरएतमाद नजर नहीं आ रहे सेंट्रल पंजाब के खिलाड़ी। इसको बैकफुट पे पंच किया, एक रन तेजी से हासिल कर लिया और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई थी, यस नो, बट इन द एंड दोनों ही बैटर्स जो हैं वो इस रन को मुकम्मल करने में कामयाब हुए। या रन आउट का चांस था, अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रो अगर डायरेक्ट हिट हो जाती तो डेफिनेटली क्लोज होना था ये। तैयब ताहिर, ये फवाद आलम ने सॉफ्ट हैंड से इसको पुश किया और तैयब ताहिर वहां पर फील्डर थे। ये डायरेक्ट हिट भी होती तो फवाद आलम कंफर्टेबली पहुंच चुके थे। और दूसरी जानिब साद ने जो आज बैटिंग की है बहुत मुतासिर किया है। इनकी बैटिंग में भी तमाम जलवा देखने को मिला, तमाम शॉट्स थी और सबसे ज़्यादा अच्छी बात इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी साद की। और अगर हम सेंट्रल पंजाब की बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं नजर आ रहे, काफी डाउन लग रहे हैं। डेफिनेटली पार्टनरशिप जो है वो हमेशा वो जो उनकी जो इंटेंट है उसको किल करती है और यही वजह है। ऊपर से बॉलिंग भी एक एंड से तो हो रही है, दूसरा इनके पास कोई स्पिनर नहीं है ऐसा जिससे बॉल करा सके। कासिम अकरम है लेकिन उनसे बॉल नहीं करवा रहे। 256 पे 3। अहमद दानियाल फॉर एंड से अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। और वंस अगेन फवाद आलम जो हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब हुए। देखना होगा कि जी हाँ, ये जो यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार हैं साइड स्क्रीन के बिल्कुल साथ थे और यहाँ से इनको हटाया गया। और यहां पर एक और कैच गिरा दिया, फवाद आलम को भी ये चांस मिल गया। सो यहां पर आज ये तीसरा कैच है जो सेंट्रल पंजाब और फहीम अशरफ थे इस दफा। ये आसान नहीं था, काफी मुश्किल कैच, लेफ्ट साइड पे था, नीचे डिप कर रहा था बॉल। थोड़े से लेट हुए लेकिन ट्राई ठीक थी उनकी। अगर ये कैच करते तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच होता। लेफ्ट साइड पे था। यासिर, जब आपकी टीम स्ट्रगल कर रही होती है तो फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की जरूरत होती है और क्योंकि विकेट्स दरकार हैं, अच्छे कैचेस लेने होंगे। ये कैच अगर हो जाता तो एक अच्छा मौका होता सेंट्रल पंजाब के पास कि वो इस ब्रेक थ्रू के बाद मैच में दोबारा वापस आने की कोशिश करते। और अभी भी एक स्लिप के साथ ऑपरेट कर रहे हैं दानियाल।
अच्छी रनिंग एक बार फिर। बाहर का बॉल था, उसे चेस किया फवाद ने, नेक्स्ट स्लिप का कैच था। अच्छी ट्राई फहीम अशरफ की, अच्छे कैचेस पकड़े इन्होंने इस मैच में, 3 कैचेस पकड़े थे इन्होंने पहले इनिंग में। अच्छा शॉट साथ का, थोड़ा सा एक्सेलरेट करना चाहिए इन्हें। ठीक बैटिंग कर रहे हैं अभी ये, थोड़ी सी और अगर सेंसिबली अगर ये थोड़ा सा अटैक करें तो अच्छा होगा। रन्स अगर जितने भी ऐड ऑन कर सकें। बॉल पुराना है, थोड़ा सी घिरी हुई है सेंट्रल पंजाब इस वक्त, और ये अच्छा टाइम है इन पे अटैक करें अगर। 7-8 ओवर्स के बाद वैसे भी नया बॉल आ जाएगा, और प्रॉबेबली कल जो है नया बॉल फेस करना पड़ेगा इन्हें। आज तो शायद लाइट का प्रॉब्लम हो जाए। लीड अब 145 रन की हो गई है और साद खान अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। फवाद आलम ने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की है, और अगर यहाँ पर थोड़ा सा एग्रेशन शो करते हैं तो ये रन्स बना सकते हैं। सेंट्रल पंजाब की टीम इस वक्त मोराल डाउन है, और इस दफा इसको कट किया फवाद आलम ने। अब और सिंध का अगर ड्रेसिंग रूम की बात की जाए तो मुतमईन इत्मीनान इनके चेहरों पर। अबरार गुलाम अली जो कि इनके कोच हैं, डेफिनेटली इनके कोच भी चाह रहे होंगे कि थोड़ा सा तेज खेलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि रन्स अभी कम है। अच्छा शॉट फवाद का, गैप में खेले ऑन साइड पे, और अच्छी रनिंग, 3 रन हासिल किए फवाद ने। इस दफा फवाद ने इसको मिड विकेट की जानिब खेला, आगे गिरा हुआ गेंद, और मोहम्मद अली इसको चेस करने के लिए गए थे। सो इस तरह मजीद 3 रन ले लिए फवाद आलम ने। 73 ओवर्स के इख्तिताम पर सिंध 265 पर 3। बॉलर रेडी। और इस दफा इसको ज़बरदस्त तरीके से खेले थे फवाद आलम, और यहाँ पर 4 रन हासिल किए। जी अच्छा शॉट, मिडल किया इसे। अच्छी चीज थी कि बल्ले के मिडल में लगाया बॉल और गैप में गया, 4 रन। फवाद आलम ने अब देखना ये कि वो इस 50 को 100 में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं, लेकिन जिस तरह से सेंट्रल पंजाब बॉलिंग कर रही है और कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब क्योंकि उनको मौका मिल गया है, एक नई ज़िंदगी मिली है, ज़रूर सेंचुरी की तरफ जाना चाहिए। क्या ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इस वक्त बॉलिंग भी काफ़ी हल्की हो रही है, और एक बार फिर मिस फील्डिंग हुई, 4 रन्स फवाद को मिले।
और ये इनिंग काफ़ी नॉर्मली जिस तरह खेलते हैं उससे तेज़ खेले हैं. और फवाद काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं. जो सिचुएशन है इस वक्त उसको उन्होंने रीड कर ली है कि बॉलर थके हुए हैं और साद खान को इतनी तेज़ बॉलिंग भी नहीं कर रहे. तो बड़े आराम से मोहम्मद साद को वो बाउंड्रीज ले रहे हैं. पहला 2 बाउंड्रीज ले चुके हैं इस ओवर में. तो ये एक अच्छा ऐड ऑन है ये सिंध के स्कोर कार्ड में. और अब जैसे जैसे रन्स बढ़ते जा रहे हैं, लीड बढ़ती जा रही है, सेंट्रल पंजाब के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं. आबिद अली, कासिम अकरम और इस वक्त तमाम ही प्लेयर्स जो हैं वो अफसरदा भी हैं, डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं. और इस दफ़ा इसको मिड विकेट पर खेल दिया. तो एक और चौका फवाद आलम का. आसानी के साथ रन्स मिलते जा रहे हैं सिंध को. बिल्कुल ये नथिंग बॉलिंग है. एक ओवर में 3 बाउंड्रीज ले रहे हैं. आप अपने रेगुलर बॉलर से बॉल करवाएं. ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 277 पे 3. It's just amazing to see these two left-handers taking the team out of this trouble. Sindh was in earlier. 127 runs scored by the youngster Saad Khan. And how well Fawad Alam has supported him with his 73 of just 87 delivery. The pace that he scored at, it's just wonderful to see. 277 for 3 Sindh. They are definitely in commanding position now. The lead is extended to 160 runs. Who would have thought? The morning when we started things, we all thought that Sindh might be in trouble. But this boy, Saad Khan, he definitely can bat. What a wonderful inning, charming inning. And alongside him, Fawad Alam, 73 of 87. The moment he came in, he meant business. He was looking for runs. He wanted to score big. That is what is required from your most senior member. Ijaz Ahmed alongside me. Yes, exactly. When the luck is also favouring you. And you are getting chances. The things really works like this. Boundary to a third man. As Ali was speaking, the runs are in the flow. Yeah, they're coming easy at the moment. They're playing at their will. Very smart batting also. He realized it, that there was no one at third. All he did was just guide it towards that third area. And the pace took it all the way towards the boundary. The lead is 164 at the moment. 131 for Saad, 73 for Fawad Alam. And if you look at Central Punjab's body language, they've been down and out for a long time now. They're just waiting things for happen itself. They're not going to happen it themselves. Got to make it happen. Catch is going down. Magnificently hit, but straight to the fielder. So yeah, Central Punjab Ijaz cannot blame anyone but themselves. They had their chances. Abdullah Shafiq dropped one. Muhammad Ali, good effort. Him and Qasim Akram, both of them, they were energetic in the field. Fahim Ashraf, when your best catcher drops a catch, that tells you a story of the day. Yes, exactly. You need to have a team effort, but everyone should be chipping in. That's why. But Saad is on 131. Not only his season best, but also the career best. The previous one was 129.
And now he's approaching 231. And look at the balls. He has spent a good time. 214 deliveries, which is showing the longer format cricket, the version he has adopted here. And rightly so. When you are given chances, you need to play big. And I think that tomorrow we are looking towards the result of this game as well. Oh, definitely. Most definitely. It depends how brave Sindh are, because they lead by 164. Add on 100 more from here on. Nicely pulled. So yes, add on 100 more from here on, and then give your bowlers a fair chance. 70 overs maybe. Give it to Abrar, Zahid Mahmood, Mohammad Umar. They're bowling top class. They're in the form of their life. Abrar especially. It's not going to be easy for Central Punjab batters. Yeah, Amir Yamin, I think he was the pick of the bowlers for Central Punjab. Not just the bowlers, but the batting also. The way he played. He really put Central Punjab in a commanding position at one point. Oh, that's supreme timing. That is superb batting. Saad Khan continues to impress us all. Wonderful batting. He has just made himself to earn respect for playing such kind of shots for the whole day since morning. Fuller, and look at the elegance. Balance has been perfect. Full face of the bat. Just a gentle push. Rest of the thing, the timing has done there. It's 285 for 3. Keep your eyes on that bottom line. The lead is 168 runs. That is some lead. That is some recovery by Sindh side. After conceding a lead of over 100, and now they're in a position where they decide where things go from here on. That has been the story of their tournament. They've been the best side. Most of the games, they have decided which way the final day will go. It's a victory in a victory. Yes, exactly. As spoken earlier, it's been a total different scorecard in comparison with the first inning. Fawad just pushing it towards deep mid-wicket. He has picked up the cap. 4 runs. Length again picked up nicely. Early. And there was no one there backing up. Look at that. Half length picked up. Not quite in control, but still there was no one patrolling that boundary line. Easy pickings. The partnership is 142 at the moment. Superb. Match saving, or rather say match winning. Well, ball has been disappeared. But I think replay will surely give you the better picture. That which way it had just gone. So we might be in early position to give you the better verdict. That how it just gone through. Yeah, it was hit hard. Muhammad Ali had no chance, but yeah, probably you can tell from here which way it has gone. Not quite here, but still Muhammad Ali searching for the ball. These new rules. We don't have ball boys here in domestic cricket. Cricketers have to go all the way to do this work. Look at that. Just finding where is he finding? Has it gone that down under the soil? What's happening? You're not going to find it if it's gone under it. He's given it up. Abid Ali has given it up. No, I'm not going to find it. I can't find it. I think groundsman might have to go and do the work. Yes, that's what he's suggesting. It's just funny to see. Yes, Imran Javed should be calling for the replacement of the ball because they are unable. But now the ground staff, who is being better equipped, that how are the positions there? This is the first time in my entire life that I'm witnessing this, that the play has stopped because the ball has gone under some soil in the stadium. Where has it gone? Nobody can see it. There's no one here, no spectators. Where did it go? The other angle,
And maybe we might be able to tell. It was forcefully hit. There it goes. Going. No, it just probably jumped over that soil part. It could just probably might have gone outside the stadium. Because there's a lot of things there. That's exactly wrong place. You are just searching there. You're right. The ball has just popped up and gone over that part of the land. And I think so. That ground staff should be getting another couple of good steps ahead. Might be finding it. But the play has been stopped here. Yeah, it's good to have a breather. Neil Johnson, Muhammad Umar. I'm sure he'll have pretty much things to learn from him. He considers himself a good all-round cricketer, which he actually is. I trust him because we have seen it. We have seen the abilities that he can hit big. So that's a good thing, having a word with Neil Johnson. Yes, I was just looking there. The 3 men of the matches for Neil Johnson in 1999 Cricket World Cup, 3 times. There you go, the free entry, though that is free for crowd as well, but they are in search of food. They come here every day. It's the regular visit, the same time. A couple of them, and this one, the big one, right at the top. As they say, if you want to do nothing, be at top. Yeah, great. This is really wonderful scenes here. You can watch Twin Cities better than what's happening here in the cricket yard as well as around the part, because the winter is just hovering over. Osama Mir has brought up a box of the balls, and we have to see these are all used balls because the ball is 75 old. So just 5 overs to go after this one, 4 overs to go after this one rather, before we get to that new ball for Central Punjab. But for remaining these 4.5 overs, they need a ball. And this has been a magnificent partnership between Fawad and Saad. Full of aggression, full of luck also. Some executive shots, a couple of times, ball going through the slip cordon. And that was a shot and a half, beautifully done. Off the back foot also, that punches. Fawad-e-Azam had some luck also. But the way he has played, he showed that intent that he meant business. And Saad Khan was well supported by Fawad-e-Azam. Central Punjab bowlers really poor bowling, bowled those poor line and length. This one was the catch. Fahim Ashraf couldn't hold on to it. That on drive from Fawad-e-Azam, and when Fawad-e-Azam is in such a mood, you can tell the story that where this match is heading. It's amazing to see. Back live. Yeah, what one thing we have seen in these highlights of the partnership, that both of the batters, they kept going in a better way. Though luck was there, but they capitalized, they held their nerves there. Footwork has been immaculate from Fawad-e-Azam. Early on, he was using his feet even against fast bowlers. He was coming down the track and playing them just to kill the swing. Against Qasim Akram also, some authority. Single is always available. They can push for 2. No, says Saad Khan. That is good cricket from the youngster. It's never easy to say no to your senior member, but he has done that today. Yeah, for the betterment of the team, that we have got the partnership. The day's been dying here. It's ending. So you don't need to show any sort of activity which has been leading or might be giving a bit of damage to your side. I think they are doing good. They need to go in a much easy way here. Yeah, he's done well, Saad Khan. Anything outside the off stump, he's been very careful. He's left them alone. Didn't try to poke at it. That is where the change has come in his batting. Uh-oh, what happened there? Just overbalancing. Just couldn't keep it
maybe just slipping. Are you okay, Qasim? I don't know that he didn't slip there. I think stuck. But he's been okay. I think he forgot his run up. 290 for 3. We have around 14 minutes to go. The official time off. 173 the lead. Just you can add 10 more runs. There'll be a happier side going, because 173 run lead, they're in the commanding position. Come back tomorrow fresh, get some runs, get some 70, 80 odd runs. Give yourself a chance to win the game. Remember, they've won last 2 games, playing with some positive intent. Can Mir Hamza, the standing captain, be brave enough to do it? We saw Saud Shakil did it. He won the game as a captain. Can Mir Hamza do the same? Yeah, that should be a positive sign. And I think that Mir Hamza, the way he was giving interview at the toss time, might be the gestures what we have seen here in this game. I think he should be looking, because an aggressive captain, like he's a bowler, pacer, there should be some aggression in him. And I think that he should be doing such kind of activity. We're just going through. Fawad is on 78 in 92 deliveries. He's keeping a good strike rate for him, though it's not much time left here. Otherwise, I was thinking might be he's going to complete his century here. But it's not much time left here. The shades, they are getting longer. Major part of the ground is under shade now. And no is the call. That's really good. Fahim Ashraf into his 15th over. He's bowled well. He bowled his heart out. A catch also going down on his bowling. The ball is new. Not a brand new one, but a new ball. It's a bit shiny one. Two is the call again. No says for Quaid-e-Azam. Good work again. It's that man. Amir Yamin can do no wrong. Yes, exactly right. The calling has been positive, and it should be at this stage, because when the day is about to close in the next 5 to 8 minutes, there should not be any panic, because you have done a good job. Half of the day, you have batted for 145 runs partnership in 173 deliveries. So I think there should be a good steady night for Sindh batters. But looking on to the lead, 174. I think 180, 182, 185. That should be the close of the day for them. Yeah, they'll be a happier side. They'll sleep well. Sindh side. But all eyes would be on Mir Hamza, the captain for Sindh. What he does tomorrow, because it's the last day, 4th day of the game. That's a wide, by the way. The last day, 4th day. The lead by 174. Let's say if they can get to 250 maybe. Will he be brave enough? Will Ghulam Ali, Mir Hamza, the decision makers, Neil Johnson also, will they be brave enough to declare at a time when they give themselves a chance and the other team a chance too? It shouldn't happen like they declared late. Another shorter one. What Central Punjab did last time they played here, they didn't give them enough time to even go for the runs. So you got to give enough time to the batting side also, so they think that they can chase it down. That's when the wickets come.
So Mir Hamza, all eyes on you and Ghulam Ali. So what do you think? 250, the lead? The position they are in, I won't mind 270 even. They can get quick runs early in the morning tomorrow. First, play for 1 hour, get maximum runs, get to that 275, then declare. Give your bowlers enough overs. Third one in a row. But one thing we have to keep in mind that if you look back onto this day today, the batting was so easy. So what else? 270 and Central Punjab will be having a good day in batting, like it's getting more dry. They've got quality batters. One is right in front of you. Abdullah Shafiq. A lot will depend how he bats. There's Azhar Ali also. Abid Ali also. Fahim Ashraf himself. There's plenty of good batters. Tayyib Tahir also. Oh, that will fly over the slip cordon. Does it have enough legs? Yes, it has. A lucky boundary for Saad Khan. It's all working for him. He's disappointed, rightly so, but he's been lucky. Yes, lucky enough that it has got the distance. If elevation was up into the sky, I think he would have gone at this stage. Would have been a big blow for them. But luck has been favouring them. Being brave here. Yeah, look at that travelling. This is going down to the third man boundary. 4. It's 296 for 3. The lead is 179 runs. That's amazing. Well, Ali, to me, umpires should be looking upon each other as the sun is getting down. Yeah, the best thing Central Punjab can do is use a spinner. But they're not going to do it. I know them. They're going to bring back Muhammad Ali. So probably they want to get over the day also, because the light is decreasing. There's no doubt about it. It's around about same that usually we've seen that day has been called off. And that's how the Sindh scorecard looks like. Very formidable, very solid. Saad Khan with 139. 79 of 94 for Fawad Alam. That is some inning, I tell you. Under some pressure when he came. Sindh was in a bit of bother, but he's just done a great job. Yes, exactly. Played well. Upgrading his strike rate every time when he's there in the centre. Also keeping one end safe. Yeah, he's not happy with the light, I tell you. And as I said, it's Muhammad Ali. That's what he's suggesting, that probably the light is not enough for a fast bowler. And Muhammad Ali is quick, I tell you. So he's probably thinking that what happened to Saad Khan there on the other hand. Maybe that sprain in his neck. Or it's just the shoulder. Just about any time that umpire might call this the day. So maybe those are the tactics. We know that. Players do that. Ghulam Ali, find something funny in it. Saim Ayub also there, disappointed. Didn't get runs. Lot is expected of him. I like Fahim Ashraf, the way he's carrying that young boy. Lovely scenes. Just love it. Absolutely love it. When was the last time we saw two opponents do like that? Well, Amir Yamin and Fahim Ashraf and Ahmed Danial sharing 1 wicket each. 29 extras. This is how this match has been standing. 188 runs in 56 overs. What Sindh applied themselves there. Then Central Punjab replying with Amir Yamin 63, 305 in 95.5, and now it's 296. Good reply by Sindh side. Lead is 179. We're 139. Saad Khan, the massive scorer.
Well, they're going to play. Muhammad Ali, wicketless. Let's see that in these closing moments he can wrap up the things. Motpi can get his wicket column better. Some energy in the field. It's getting dark here, Ijaz. Really dark here. Some people, where are they? Where are they? Probably they're coming from their nets. Seems like they're cricketers, just loving this game. That's the passion. The logo for PCB, one nation, one passion. That's it is. This is exactly what it is. That's through the gap. Through the gap. This will run down for another boundary. Quaid-e-Azam carrying on his merry waves. Wonderful batting. Good reflexes. 6 by 6, I must say. In such kind of light of the day, you're just negotiating with such kind of shot bit delivery. This is all experience, what you call well played. He's on 83, though he'll not be able to cross his 3 figures today, but hopefully tomorrow he will surely be eyeing to get a century here at Rawalpindi. Yeah, this is what he has done the best. He's played those short deliveries with some authority and he's gone for runs. That has been the best part of this inning from Quaid-e-Azam. Again, it's in the air for a while. There is a fielder. He takes it. Oh, they've been searching for it. They've been planning for this wicket. Right at the end of the day, they've got this one. They got the big man, Quaid-e-Azam. 83 runs. Oh, he cannot believe it. So can't we. So can the camp. That is a big wicket right at the end of the day. Oh, what a time for Muhammad Ali. He was wicketless today. 60 runs when he started his over. 4 runs and a wicket. And the big one, the man on screen, he was batting well with a good strike rate. You're just Abid Ali saying, safe pairs. And look at the jubilation. He knows that this is really a big prize wicket. It's been a superb inning. Deserves all the applaud. Although he scored 83 runs, but the way he did them was just amazing. It's 300 for 4 now, Sindh. No night watchman, Sarfraz Ahmed. Coming himself, that's a brave move because it is dark. For a moment we really thought that, is it advisable to still carry on? Because we know Quaid-e-Azam just miscued one. Sarfraz Ahmed now. Well, umpire Asif Yaqub are just showing his intentions there. I think they are looking quite closely. The light meters should be coming out, and I think so. The way they are thinking here, it's a better way. It's getting a bit dark. Light may not be a favourable. We will be looking the verdict here. Yeah, that's a good move, I think. That's about it. It's about time. It was getting dark. We saw how Quaid-e-Azam lost his wicket. I think he's a very unlucky man just to have lost his wicket right at the end. We'll have a look at it again. It was a shorter one. He went for it. That he has done all his inning. And a very, very good catch by Abid Ali. He's not going to miss those because they've been planning for this wicket for a long, long time. They've been waiting for this wicket for a long, long time. And right at the end, Central Punjab has just made this breakthrough and will be a happier side just for this session. Overall, if you look at the situation of the match, Sindh is definitely in driving place.
They lead by 183, and this man deserves all the applaud. Saad Khan has played a wonderful inning. He's not out on 139 runs. Look at the session, 113 runs, a good rate, 4.84. That is because of Quaid-e-Azam mainly. Yes, exactly. They improved the runs here with every session. First one 83, 104 and 113. This is really good going. Well played. Saad. And look at that. He's getting appreciation. Satisfied. Central Punjab, I've just loved their energy. Their coaching staff, they've all been there. How many times you've seen that happen at day end? Because they know that tomorrow is going to be a very, very important day. Because it's going to get very interesting, I tell you. Because this last wicket will definitely give them a lot of hope. Well, a batting card, 139, which is Saad, not out. 221 deliveries and 83 for Fahd, the highlight. He was on 97, unlucky time for him to depart. Exactly 300 runs for 4 in 77.3 overs. Sindh. There you go. That is Ahmed Danial getting 1 wicket. Then Muhammad Ali chipping in at the very last moment of the day, getting for Quaid-e-Azam in 64 runs and 1 wicket for Amir Yamin and Fahim Ashraf. They're all cheering together. The session will definitely go down to Quaid-e-Azam. The way he played, the way Saad Khan supported him in this session, just been brilliant. This fantastic 100 coming from the youngster, definitely one for the future. A huge prospect, an excellent inning under tough conditions against a quality bowling lineup, and that missed chance, I would say it, which Ali didn't even try. This drive through mid-wicket was just wonderful. Off the back foot, off the front foot, everything, you name it, he has played those shots, these two, in the partnership. That on drive was a good one. This one probably was a shot of the day. On the up, through the covers. For Quaid-e-Azam, he played those pull shots with authority. He was in control all the time of this inning. From the ball one, his intent was to go after bowling. He was unlucky in the end, losing his wicket on the probably the last delivery that ended up. He was given some luck, drop chance, but he capitalized on it. He waited for it. He was in with a purpose, with business. Scoring runs, some poor bowling also helped him get to that total. But on the other hand, Saad Khan was just magnificent. Again, length being picked up very nicely. That one just kicked on. There have been few deliveries that have done that. This was, again, a very good shot. This is how Quaid-e-Azam lost his wicket. Right at the end, this was the last delivery of the day as he lost his wicket and gave Central Punjab that momentum and the lead by 183 run. Well, one thing is for sure, that tomorrow's day is going to be a very, very good one, a very exciting one, because Sindh lead by 183 runs because they've scored 300 runs in their second inning. Saad Khan, the main destroyer, scoring 139 runs, still there. Amir Yamin bowled his heart out, just could get one wicket. Central Punjab were quite unlucky because they dropped a few chances. That has definitely put Sindh in a driving seat as they lead by 183 runs. So that's about it for today. We look forward to have you tomorrow, which promises to be a very exciting one. We'll see you tomorrow morning. Until then, take care of yourself. It's goodbye.